the mountain seems so hard to climb, and you feel you're running out of time. When the shadows whisper, turn around, keep your feet up on the surface ground. Gotta rise up to begin the fight. Turn the darkest dark into the light. Don't let them till your wings to dawn, for the very moment you are born. When the world goes cold and gray, hold your breath and lead the way. Hope is loud when fear is strong. Let your heart beat, set the song. Be the savior, because the chains you own the power in your veins. You are the light, defeating day. Hey, start your journey with your hand. You gotta reach up high and touch the sky. Spread your hope so you can watch it fly. Don't care about what the world may see. You're fire, you are born to be. In the silence, can you hear your name? Written deep inside a burning flame. Every loss became your winning guide. Every scar shows you have never lied. Push the limits to break the chain. Let your fire melt the pain. When it's heavy, then take it slow. Just the path you are meant to go. Be the savior, because the chains you own the power in your veins. You are the light, defeating it. Hey, start your journey with your hand. When the mountain seems so hard to climb, and you feel you're running out of time. When the shadows whisper, turn around, keep your feet up on the surface ground. Gotta rise up to begin the fight. Turn the darkest dark into the light. Don't let them till your wings to dawn, for the very moment you are born. When the world goes cold and gray, hold your breath and lead the way. Hope is loud when fear is strong. Let your heart beat, set the song. Be the savior, because the chains you own the power in your veins. You are the light, defeating
Gotta reach up high and touch the sky. Spread your hope so you can watch it fly. Don't care about what the world may see. You're fire, you are born to be. In the silence, can you hear your name? Written deep inside a burning flame. Every loss became your winning guide. Every scar shows you have never lied. Push your limits to break the chain. Let your fire melt the pain. When it's heavy, then take it slow. Just the path you are meant to go. Be the savior, break all the chains. You own the power, then you face. You are the light, you're fading in. Hey, start your journey with no hand. When the mountain seems so hard to climb, and you feel you're running out of time, when the shadows whisper, turn around, keep your feet up on the surface ground. Gotta rise up to begin the fight. Turn the darkest dark into the light. Don't let them kill your wings to dawn, for the very moment you are born. When the world goes cold and gray, hold your breath and lead the way. Hope is loud when fear is strong.
दो अभी। देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का। आज जो मुकाबला होने वाला है वो उससे चैंपियन तो नहीं बनेगा, बट थर्ड प्लेस डिसाइड होने वाला है। थर्ड प्लेस ऐसा प्लेस होता है जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जहां पे तीसरे प्लेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये जो चुनाव है, देखा जाएगा कौन सी टीम यहां से जीत के जाने वाली है। मैं हूं आरवी और मेरे साथी मित्र एसएम। चलते हैं एसएम से, जानते हैं उनके विचार, क्या कहना चाहते हैं आज के इस मुकाबले के बारे में। कहिए एसएम भाई। देखिए, मुकाबले से आगे बढ़े उससे पहले हम देख लेंगे आज के जो मैचेस है, थोड़ी देर पे जाएंगे तो जो टीम इन्फर्नो और टीम नेक्सागोन है उनके बीच के मुकाबले देखेंगे तो मज़ा तो भरपूर आएगा, क्योंकि ये टीम्स आई लड़े अपने आखिरी दम तक। एचएनडी ई स्पोर्ट्स का ये जो इवेंट है उसमें कोशिश अच्छी की, लेकिन चलिए थर्ड प्लेस पे उनको गुजारिश करनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आएंगे तब और ज़्यादा ताकत के साथ आएंगे, लेकिन अभी भी पोजीशन वो है कि फोर्थ और थर्ड। थर्ड पे कौन जाएगा? क्या वो टीम इन्फर्नो होगी, क्या वो टीम नेक्सागोन होगी, क्या उनके सपोर्टर हमारे साथ है? वो भी देखना जरूर बनता है और फॉलो जरूर करना बनता है एचएनटी ई स्पोर्ट्स को इंस्टा पे दोस्तों, क्योंकि ऐसे इवेंट जो है अब आते रहेंगे। ये शुरुआत है दोस्तों, 2026 कह रहे हैं मोबाइल फाइव ई स्पोर्ट्स इंडिया के लिए काफी कमाल का रहने वाला है, और पहला इवेंट जब एचएनटी स्पोर्ट्स की तरफ से देखने को मिले, और वो अंत भी हो रहा है वैसे तो। यार अगला इवेंट ये कितना जबरदस्त लेके आएंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैच की तरफ बढ़ते हैं तो देखेंगे कि क्या टीम इन्फर्नो तैयार है वो थर्ड प्लेस के लिए, क्या टीम नेक्सागोन तैयार है उनको रोकने के लिए। थोड़े टाइम में ड्राफ्ट में बढ़ेंगे तो देखते हैं कि ड्राफ्ट की तरफ, चलिए बिल्कुल ड्राफ्ट की तरफ आ चुके हैं। टीम इन्फर्नो सस्तुकी ब्लू साइड की तरफ, रेड दल में हम देख रहे हैं कि वहां पे आ चुके हैं टीम नेक्सागोन। तो दोनों टीम अब रेडी हो चुकी है दोस्तों। अब ये देखते हैं कि बैन वगैरह जो करते हैं ना, वहां पे देखेंगे कि क्या एज यूजुअल जाते हैं। अभी एक कमाल का जो इवेंट कहते हैं, एमएलबीबी कह लीजिए या फिर मोबा कह लीजिए, M7 वो चल रहा है। हो सकता है कि वहां से कुछ स्ट्रेटेजीज ये लोग देख रहे हो, वहां से कुछ देख रहे हैं, उनकी फॉलो करते हैं। लेकिन ये दोस्त आरवी आपको भी पता है ये इंडिया है, ये मोबा 5v5 का जलवा है, इधर यहाँ पे अलग ही चलता है। तो उसी तरीके भी हो सकता है। चलिए एसटी या जंगलर हाया जो है वो जा चुका है अभी के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने मेरे साथी मित्र, ये इंडिया है और यहाँ पर हम इंटरनेशनल लॉज फॉलो नहीं करते हैं, हम अपने लॉज बनाते हैं और अपना मेटा चलाते हैं। तो इसी मेटा के साथ यहाँ पर जैसे आपने बोला हायाबुसा बैन हो चुका है, और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें क्लॉड आज देखने को मिलने वाला है। थोड़ा बहुत तो शायद ये फॉलो करेंगे। क्लॉड आजकल बहुत बहुत ज्यादा ओपी चल रहा है। जब उसकी ट्रिनिटी बिल्ड बनती है उसके बाद जो उसका डैमेज आता है वो इंसेन हो ओह, जाता है। मैं उम्मीद करूंगा क्या हमें क्लॉड देखने को मिलता है। इसी के साथ कादिता बैन है, क्या बैन है भाई ये जो मेरे को। बिल्कुल करीता आदिता दीदी बहन को भाई, ये लड़की मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है यार। ये और हमेशा फिर घास में छुप कर बैठी रहती है और जब भी आती है तो एक किल लेके जाती है। कारिता प्लस जो हमारा एक डैमेज गियर होता है उसके बाद जो किल्स निकलते हैं ना, सुपर भाई। इसीलिए इसको बैन करना बहुत बहुत अनिवार्य है। अगर इसको गलती से स्टार्टिंग में किल्स मिल जाते हैं तो फिर इसको रोकना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट सॉरी बैन हमें क्या देखने को मिलने वाला है टीम इन्फर्नो की तरफ से। वो यहाँ पर शायद और यूजोंग को बैन करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लैक ड्रैगन, अभी अगर एम7 भाई नोटिस किया होगा तो M7 में ब्लैक ड्रैगन बहुत ज्यादा पिक हो रहा है। बहुत सारी टीम्स हैं जिन्होंने एज ए एक्सपीरियंस ब्लैक ड्रैगन को चूज किया। तो शायद एक अच्छी रणनीति भी है टीम इन्फर्नो की तरफ से कि ब्लैक ड्रैगन को जितना हो सके मैच से दूर रखा जाए। चलिए आप तो ज्यादा आगे चले गए। हम रिसेंटली इवेंट की बात करें तो वहां पे भी एमवीपी लेके गए थे हमारे जो एक है प्लेयर। आ, चलिए ज्यादा बात नहीं करें उनके बारे में। तो वो जो हीरो यहाँ पे आया, और ये एक लाजमी बैन है, एक रिस्पेक्टेड बैन कहा जाएगा, क्योंकि यार जिस तरीके से अभी भी ना, अरे भाई मैं आपको सच बताऊंगा, ये हीरो सो रहा है यार। क्या हो रहा है, बोले यार इसके बहुत हो बारे रहा है। में कि किस तरह का ये हीरो है, किस तरीके से इसके स्किल्स आते हैं। तो यार अभी तक समझने में थोड़े हक्के बक्के हो जाते हैं। फिर वो एक साथ स्टंट करना और फिर यार टिग्रिल के साथ जो कॉम्बो बैठता है वो कमाल का रहता है। हालांकि एक लाजमी बैन, एक रिस्पेक्टेड बैन आवश्यक था वो, और बैन में दिखा भी है। अभी देखते हैं कि टीम इन्फर्नो किसकी तरफ जाता है। अभी तक तो रिस्पेक्टेड देखने को मिल रहा है। कदी तो हमने देखा रफ वेव से दिक्कत दी थी, उस वजह से एक लाजमी है भी। तो उस वजह से वो जो है एक उन्होंने बैन किया है। टीम इन्फर्नो पूरा समय लेते हुए, पर शायद चलिए ज़्यादा समय ले लिया तो वो मिस किया उन्होंने। अगली तरफ चलते हैं तो टीम नेक्स्ट गॉन के पास है। वो भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे विन मेरे को दिख रहे हैं। क्या अगर वही वाले विन है तो आपको पता होगा, आपको खेला करते थे जो जोसेफ के साथ खेलते थे, जब किमी के साथ खेलते थे, जो काइल हुआ करते थे, कमाल की लाइनअप। विन मे बी वो भी हो सकते हैं। इनके बारे में जब गेम पे ले जाएंगे तब पता चलेगा। तो EXP खेला करते थे जहाँ तक मेरे को याद है। अगर वो वाले विन है तो भाई एक्सपीरियंस लेके कमाल का ये भी आते हैं, तो यहाँ तक पहुंचिए तो डिजर्विंग डेफिनेटली टीम्स तो है ही। बट अगर वो है तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर, लेकिन अगर अंडरडॉग प्लेयर भी है तो काफ़ी उभरते हुए प्लेयर्स आगे आ रहे हैं, क्योंकि वो
अंडरडॉग नहीं रहे, क्योंकि वो अब हो चुके हैं अंडरगॉट एक तरीके से कहने जाए तो। तो चलिए, अब पहला पिक आएगा, क्योंकि हिल्डा जा चुकी है, यानी कि पावर ऑफ वाइल्डनेस देखने को नहीं मिलेगी इस मैच के अंदर। बिल्कुल मेरे साथी मित्र, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया, अंडरडॉग टीम्स, तो अगर आपको याद हो तो M7 में भी कुछ अंडरडॉग टीम्स आई हैं जिन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और इसी वजह से जो हमारे अपकमिंग प्लेयर्स होते हैं, न्यू प्लेयर्स होते हैं ना, उनका हौसला बुलंद होता है कि यार अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो हमेशा अंडरडॉग्स टीम की जितनी हो सके उतनी सराहना करनी चाहिए। उसी के साथ रेड स्टोन ने यहाँ पर हमारी लालटेन वाली गर्ल उठा ली, यानी जुक्शी नजर आएगी। अर्ली गेम इनका थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है, इनकी जो लटके झटके होते हैं ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा अब जो हमारी टीम नेक्सॉन है, नेक्सगॉन है, ठीक है, वो कौन सी मेज यहाँ पर उठाना चाहेगी। जहां तक मैंने नोटिस किया है जोक्शिन के अगेंस्ट में लोग ईव उठाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ईव का जो बर्स्ट डैमेज आता है प्लस अच्छा खासा डिस्टेंस रहता है, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। तो देखते हैं कैसा होता है, या फिर कोई हमें नेक्स्ट अदर पिक देखने को मिलती है। हम्म ये समय तो लेंगे थोड़ा। ये एक अच्छी बात है कि थोड़ा सा रेंज चाहिए रहता है, तो ईव की तरफ जाते हैं या फारसा की तरफ भी जाते हैं, वो चयन रखते हैं, क्योंकि वो एक लॉन्ग रेंज इनको चाहिए रहता है। जैसे कोई शॉर्ट रेंज की तरफ चले गए तो दिक्कत हो सकती है वहाँ पे, तो उस वजह से थोड़ा सा सोच विमर्श करेंगे। लेकिन चलिए, अभी के लिए गटो की तरफ गए हैं, एओजी का इस्तेमाल करके वो सीधा जा सकते हैं, कि वो क्रिम्सन बीकन का इस्तेमाल करके निकल रहे हैं तो डाइव इन करें, एओजी आएगा तो वो कनेक्शन वहाँ पे बैठ सकता है। और दूसरी तरफ चलिए, यहाँ पे एक ये भी एस टीयर में ही समावेश कर दीजिए, इनका भी उनका पिक करते हुए दिख रहे हैं। वायसेस आए हैं, जंगल में थोड़ा सा स्पीड जो है कमाल का रहता है इनका, जैसे कि हायाबुसा का भी रहता है, तो वो है कि इनके पास फुर्ती ज़रूर रहती है। तो अच्छा चयन है, पहले दो पिक कमाल के करते हुए ये भी टीम नेक्सगॉन। अब इन्फर्नो, उनके पास बारी है। अब अगले दो पिक जो है इनकी तरफ से देखने को मिलेंगे, पूरा सा समय ज़रूर लेते हुए देखेंगे, लेकिन वो किसकी तरफ जाएंगे, पहली प्रायोरिटी पे क्या मार्क्समैन को रखें, क्या तो फिर आप अपने जंगलर की तरफ जाएं। और सोच विमर्श चलिए पूरा ज़रूर कर रहे हैं, अगर यहाँ पे जाते हैं तो बैक की तरफ जा पाएँ और टारगेट नाइस। कर पाएँ, वो सोच विमर्श ज़रूर कर रहे होंगे। और आगे से वो आते हैं तो एक ग्रॉक के साथ वो वोल का प्रयोग करके रोक ज़रूर सके। उस अर्ली हिसाब से गेम कहीं न में कहीं बिल्कुल, चलिए ये जो है टेक्टोनिक चार्ज आएगा, और जो मिनियन वेव का सपोर्ट रहा तो उसके साथ लैंड्स जो है वो पीछे भी जा सकते हैं। उनका टारगेट जो है ओ बी के लिए तो होना चाहिए ओएसिस की तरफ ही, बट ये जो लापू है वो दोस्त दिक्कतें ज़्यादा करने वाला है। ये सस्टेन भी करता है और मारता भी है। भाई ऐसे ही ये वो पेरेंट्स है ना जो अपने बच्चों को प्यार भी करते हैं और मारते भी हैं, वो वाली सिचुएशन है भाई। इसको मारना बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। आपको एक टैंक किलर चाहिए होगा, और टीम जो हमारी इन्फर्नो उनको तो देखते हैं इस बार वो टैंक किलर किसके साथ है। इन्होंने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, ग्रोक के साथ जाएंगे, लैंसलॉट रहेगा, जुक्शिन, तीनों अर्ली गेम में बहुत अच्छा दमखम रखते हैं। अर्ली इन्वेड करेंगे, जंगल के अंदर जाएंगे, ओपोनेंट को परेशान कर देंगे। बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अर्ली गेम थोड़ा बहुत इन्वेड करने में शायद सक्षम हो पाएं, पर जैसे गेम मिड टू लेट की तरफ जाएगा आपकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लप्पू लप्पू आपके हाथों से निकल जाएगा, और लप्पू लप्पू को पकड़ना बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। साथ के साथ अगर हम वाईएसएस की बात कर ले तो वाईएसएस का जो अर्ली गेम से डैमेज आता है बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ रहता है। वाईएसएस के सामने आप एम्बुश नहीं कर सकते, बिकॉज वो ईजिली आपको पता लगा लेते हैं कि आप कौन से जंगल में कौन सी झाड़ी में छुप कर बैठे हैं। तो ये थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलेंगी। साथ के साथ अगर हम अपकमिंग बैंस की बात कर लें तो हमें थॉमस बैन देखने को मिल रहा है, जो हमारा डेमोनिक वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग हीरो है। किसी के भी अगेंस्ट खड़ा कर दो तो अच्छी खासी सस्टेन डिजर्व करता है, और ये एक बहुत अच्छा काउंटर हो सकता था लप्पू लप्पू के लिए, तो शायद इसलिए उन्होंने इसे बैन करना प्रेफरेबल समझा। साथ के साथ हमारी जो एस्मा दीदी हैं उन्हें भी बैन कर दिया जाएगा। इसी के साथ दो बैन, एक शायद सीसी है और दूसरी ईव है, अगर मैं गलत नहीं ईव, हूं तो। जी बिल्कुल। तो देखिए, एक दोनों तरफ से अपने हीरो के लिए एक रिस्पेक्टेड बैंड जो है वो दिखते हुए आए हैं। पहला तो ये सोच रहे हैं कि अभी गोल्ड की तरफ जो है वो दिक्कत दे सकते हैं, सीसी तो उसकी तरफ पहले गए कि वो नहीं चाहते हैं कि गोल्ड पे सीसी आए, या तो फिर एक्सपी पे सीसी चली जाए और यहाँ पे आ जाए। लेकिन टैंक किलर, अब बात कर रहे थे, डाउट है यहाँ पे जा सकता है, तो पहले ही ले लिया है कि दिया ना जाए, कैरी का चयन जरूर कर लिया है। और दूसरा ये अच्छी चीज इन्होंने की, पहले तो पता है कि ब्रस्ट कर देता है वहां पे थामूस जो है, उसकी वजह से थामूस को पहले बैन कर दिया। उसके बाद एस्मा के पास वो ताकत रहती है, वो जो सील्ड है वो गलाने के लिए अच्छा रहता है, तो लापू के अगेंस्ट में एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता वहां पे। तो उसलिए जो है वो चाहेंगे नहीं कि पहले से उनको दिया जाए, वो भी सस्टेन ज्यादा करते रहें, तो एक रिस्पेक्टेड बैंड जो है उन्होंने भी किया है। तो दोनों तरफ से एक रिस्पेक्टेड बैंड, हम बात कर रहे थे कि अच्छा रहता है, आपने देखा है इंडिया टीम्स में, इंडियन मेटा में कि खेलते हुए जूसिन के सामने, क्योंकि ईव के पास वो डिस्टेंस रहता है, आरडब्ल्यू पॉप्ड अप होता है, तो स्लो डाउन भी होते हैं, पर डाइव इन कर गए पीछे तो फिर दिक्कत हो सकती है। उनके पास है भी कि वो डैश के साथ आगे जा सकते इंजन। हैं। और हार्लोट, ये मज़ा बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि आज भी
अगर आपने मैच देखे हो तो जिस तरीके से वहां पे अ, अगर मेरे को याद है तब तक वो अरोरा पीएच थी, जिस तरीके से वो एडवर्ड ने आज आलोट का गेम प्ले दिखाया था, तो जोन की तरफ से भी उस तरीके का अप्रोच आया तो फिर मजा तो जरूर आएगा। रोलैंड्स के पास ये चलो अच्छा ऑप्शन रहेगा कि वो बैक पे जाके उनके पास 3 ऑप्शन रहता है, और फारसा तो फेदर स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हैं। तो ईव और फारसा हम बात कर रहे थे, ये अच्छे ऑप्शन है, तो ईव गए फारसा आए, पर एक ही वो भी चीज है कि जब वो अपना अल्टीमेट यूज करते हैं उसको एक जगह पे खड़ा रहना पड़ता है। चलिए मैप का लव चयन। इट ब्रो। ये अच्छा है, M7 से इंस्पायर्ड या कह लो, मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी टूर्नामेंट में ये चीज़, क्योंकि अभी तक मैं नोटिस नहीं किया था, मेरी गलती थी। बट ये अच्छा है भाई। ब्रोकन वॉल्स आ रहा है, डेंजरस ग्रास आ रहा है, या फिर एक्सपेंडिंग रिवर आएगा, तो यहाँ पर ब्रोकन वॉल्स आ रही हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी बिल्कुल, ब्रोकन वॉल्स। चलिए मैप का चयन है, एचएनडी स्पोर्ट्स का मैच देख रहे हैं तो बिल्कुल मजा तो आएगा ही, प्रोडक्शन भरपूर तो रहेगा ही, क्योंकि ये टीम है टीम इन्फर्नो और उनके सामने खेल रही है टीम नेक्स्ट गॉन। देवी और सजन हम पधार चुके हैं लैंड ऑफ डॉन की तरफ, और दोनों टीम जा चुकी है फार्मिंग की तरफ। सिक्योर हो भी चुका है पर्पल, और दोनों तरफ से चलिए ऊपर की तरफ से वो भी सिक्योर कर चुके हैं। फास्ट रहते हैं, हम बात करते हैं उनकी तो तेज तरार है। तो देखिए दोनों बफ जो है उन्होंने उठा जरूर लिए हैं अभी के लिए, ओरिज की तरफ ये जरूर गए हैं, पर क्या वो चलिए आसानी के साथ ले जरूर लेंगे। वहां पे दिक्कत देने के लिए ग्रॉक भी जरूर गए हैं कि परेशान थोड़ा सा कीजिए, वहां पे कोशिश चल रही है, लेकिन EXP बंद युद्ध जो है ना चलता रहता है, बैटल EXP का बैटल काफी देर तक चलता रहता है, लेकिन रोटेशन उनकी तरफ जाता हुआ क्या वो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कॉल आया है लॉर्ड दिक्कतें देते हुए पीछे जाना पड़ेगा लापू को। टीम आई है सही समय पे, आलोट भी पीछे जरूर आए हैं, लेकिन जंगल की तरफ इन्वेड करने के लिए आगे जरूर जा रहे हैं। क्या टीम इन्फर्नो तैयार है? वो गए, और क्या वो बफ चुरा के आ गए थे, क्योंकि बफ दिख नहीं रहा है। और चलिए फर्स्ट ब्लड भी सिक्योर हो चुका है, टीम के बीच में घुस के गए हैं ये कमाल का है दोस्त, क्योंकि आलोट की हम बात करें जोन किस तरह का खेलेंगे, जोनिंग करके खेल रहे हैं। जब जोन यहाँ दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। टीम जो हमारी नेक्सॉन है, अर्ली गेम से उन्हें थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले फर्स्ट ब्लड निकाला गया, और दूसरा जो टर्टल था अनकंटेस्टेड रहा, ओपोनेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पर दिक्कत आने नहीं दी। इसी के साथ एक और किल की तलाश अंदर घुसना चाहेंगे, चीज को पकड़ना चाहेंगे, और इसी के साथ जो हमारी चीज थे उनका चीज केक बना के बड़े प्यार से हमारी टीम इन्फर्नो खाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगेन रेड बफ पे इन्वेड किया जा रहा है, जो हमारे बायर्स है थोड़े से चिंतित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बॉल लगाया जाएगा, बॉल को स्किप करने में कामयाब हो जाएंगे, बट उनका जो रेड बफ है उनके हाथों से उनके आंखों के सामने से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे से यहाँ पर सपोर्ट आएगा, लप्पू लप्पू आना चाहते थे, सपोर्ट करना चाहते थे, पर दिक्कतें बढ़ सकती है। यहाँ पर पकड़े जाने की आशंका है, ब्लैकस्टोन को यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है, पीछे हटना चाहेंगे, फारसा को यहाँ पर लपेटा जा सकता है। बड़े प्यार से पंछी बन के उड़ते हुए निकलने में तो कामयाब हो गए, बट उनकी एचपी इतनी ज्यादा लो है कि रिकॉल करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक फाइट में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी के साथ रेस्टोरेंट ने दोबारा उठा के पटक दिया, चीज को यहाँ पर फिर से टारगेट किया जा सकता था, चीज को यहाँ पर पीछे हटने की आवश्यकता है। टॉप लेन की बात करें तो आर्लॉट यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करते हुए नजर आ रहे हैं, लपू लपू को रिकॉल करने पे मजबूर कर दिया है। यहाँ पर अब घेराबंदी बॉट लेन यानी गोल्ड लेन की तरफ देखने को मिल सकती है। कैरी को यहाँ पर थोड़ा सा आभास हो चुका है कि उनके ऊपर यहाँ पर गैंगबैंग की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएंगी, टर्रेट डाइव देखने को मिल सकता है। बॉट लेन की तरफ कैमरा मैं जाऊंगा, कैमरा उधर जाए थोड़ा सा कि वहां पर दिक्कतें बढ़ेंगी। कैरी को पकड़ा जाएगा, ग्रेंजर ने यहाँ पर बहुत डैमेज दिया, डेथ सोनाटा का इस्तेमाल किया, डैमेज अभी इतना सफिशिएंट नहीं है, का इस्तेमाल किया जाएगा, पकड़े जाएंगे, युक्शिन को मृत्यु के घाट उतारा जाएगा। युक्शिन की मृत्यु के साथ ही जो हमारी टीम इन्फर्नो है थोड़ा सा पीछे हटती हुई नजर आएगी। यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, अगर थोड़ा सा पहले चार्ज करते तो शायद कैरी का किल मिल जाता है। एसएम भाई अगेन यहाँ पर टेक्टोनिक चार्ज का इस्तेमाल किया जाएगा, बॉस डैमेज आएगा, पीछे से लैंसलॉट आएंगे, यहाँ पर किल लेने की पूरी कोशिश की जाएगी, और ग्रेंजर का डेथ सोनाटा कनेक्ट होगा, किल यहाँ पर सिक्योर किया जाएगा। चीज की हालत पतली हो चुकी है, चीज को यहाँ पर फिर से रिकॉल करने पे मजबूर कर दिया जाएगा। जो हमारी फारसा दे दी उनको चेंज किया जा रहा है एक बार, और जो हमारी टीम इन्फर्नो है, टीम नेक्सागॉन की जो बफ है लगातार टारगेट की जा रही है, जंगल को अंडर प्रेशर किया जा रहा है। ये गेम प्ले बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, यहाँ से वापसी के जो चांसेस है बढ़ खत्म हो जाएंगे। और दोबारा फिर टर्रेट डाइव किया गया, जो ग्रेंजर थे उन्होंने डेथ सोनाटा कनेक्ट किया, बस डैमेज दिए, एचपी लो की, पीछे से लैंसलॉट है, किल सिक्योर किया, और इसी के साथ जो किल्स है लगातार टीम इन्फर्नो की झोली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा किल्स का आभास नहीं हो रहा है कि किस टीम के कितने किल्स हो चुके हैं, बट दबदबे की बात करें तो सारे का सारा टीम इन्फर्नो के पास है। तो बिल्कुल 6 किल चलिए वो अब तक कर चुके हैं, और सामने सिर्फ 1 किल ले पाए, जो कि गटोट निकालने में कामयाब हुए, और आसानी के साथ ब्लू स्टोन अटल को भी सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। वो 300 गोल का हिसाब आ रहा था, टेक्टोनिक चार्ज का इस्तेमाल, विन दिक्कतों में आएंगे और विन को डाउन करने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। थोड़ा सा उछल कूद करवाने के लिए वहां पे रेड स्टोन भी तैयार जरूर है, आगे जाएंगे, पोक करेंगे, पीछे आएंगे, और इस वक्त जो है जोन पूरा जोनिंग करते हुए और मिनियन वेव को कट आउट जरूर करेंगे।
लापू जरूर आए हैं लेकिन दिक्कतों में वो है क्योंकि वो वहां पे ग्रेंजर में तैनात ग्रो के फैक्ट का इस्तेमाल जरूर किया है लेकिन क्रिम्सन बीकन का इस्तेमाल करके पीछे आएंगे रेडस्टोन। काफी खूबसूरती के साथ वो दोनों टावर के बीच में गए थे, वेव हटाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। देखिए जोनिंग कितनी खूबसूरती के साथ एक कर रहे हैं, यहाँ पे रोटेशन आ रहा है। लापू के ऊपर दिक्कतें पूरी आ सकती है क्योंकि 4 योद्धा उनकी तरफ आ चुके हैं। अब एंटी हिल जरूर यहाँ पे बाय कर लिया है जूसिन ने, लेकिन अभी चलिए वेव जरूर आगे गई है, वॉल्ट से रोका जरूर गया है। 5 मिनट का समय यानी कि शील्ड जा चुकी है, वो डिफेंस है वो कम होगा टावर का भी, और ब्लू स्टोन वो सिक्योर करेंगे। बाहर हटने के लिए मजबूर जरूर किया था लेकिन टीम देखिए इनको पता है यहाँ पे डाइव इन हो चुका है। आप दूसरी तरफ जाइए, ये अच्छा मूव था, पता है लापू जा रहा है तो आपके पास मौका है ग्रेंजर को डाउन करने का। आप डाउन करने के लिए गए, खूबसूरती दिखाई वहां पे टीम नेक्सगॉन ने भी, एक कमाल का आउटप्ले था। पता है ऊपर की तरफ गवार है तो नीचे की तरफ फायदा उठाए लेकिन इंस्टेंटली रोटेशन जो है वो आ चुका है। टीम इन्फर्नो समय का पूरा इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ पता है टावर निकाल लिया है, नीचे दिक्कतों में है टीम, नीचे की तरफ आए हैं, वापस बफ की तरफ गए हैं, वो इन्वेड करेंगे जी हाँ कर भी दिया है। और मिड की तरफ अब देखने को मिल सकता है एक बैटल। तो इसी के साथ यहाँ पर पकड़ने की कोशिश की जाएगी ब्लू बफ के पास। यहाँ पर एओजी आया था बट कनेक्ट नहीं हो पाया, थोड़ा सा मिस हो गई। इसी के साथ यहाँ पर तो वाई सिस्टम उनको दर्शाई किया जाएगा, वाई सिस्टम मृत्यु के साथ चेज की एचपी यहाँ पर थोड़ी सी जोड़ों की पीछे हटने की संभावना है। रेड स्टोन यहाँ पर चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं बट उनको भी मजबूरन पीछे हटना पड़ेगा। रेड स्टोन, ब्लू स्टोन और हमारे ब्लैक स्टोन है बहुत ही ज्यादा आक्रामक रूप से यहाँ पर अंदर घुसते नजर आ रहे हैं। फिर से यहाँ पर कोशिश की जाएगी, एलॉट अंदर जाना चाहते हैं, बहुत डैमेज देना चाहते थे बट बॉटली से बड़े प्यार से ग्रेंजर ने यहाँ पर टर्रेट निकाले। टर्रेट के साथ यहाँ पर कैरी को भी धराशायी कर दिया जाएगा। एक और किल मिल चुके हैं, टर्टल यहाँ पर स्पॉन हो चुका है। पहला टर्टल बिना किसी दिक्कत के टीम इन्फर्नो ने ले लिया था और शायद ये दूसरा टर्टल भी वो बड़े प्यार से लेने में कामयाब हो जाएंगे। कोई भी यहाँ पर अवर ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। यहाँ पर इधर ये स्ट्राइक का इस्तेमाल किया तो कोई डैमेज इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं आएगा, किल लेने में कामयाब हो पाते बट पीछे से वाईएसएस आए, उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा सहयोग दिया, लास्ट पॉइंट पे हिट किया और किल लेने में सक्षम रहे। इसी के साथ ही हमारे जो पास है पास में आके अंदर घुसना चाहते हैं, क्या किल लेने में कामयाब हो पाएंगे, कोशिश पूरी की जा रही है। एओजी का इस्तेमाल किया जाएगा, एओजी कनेक्ट होगा, ब्लू स्टोन लेंस यहाँ पर पकड़े जाएंगे, ब्लैक स्टोन के बहुत ज्यादा लो है, पीछे हटने की संभावना है। आरलॉट अंदर जाएंगे, लप्पू लप्पू को शहीद किया जाएगा, लप्पू लप्पू के पीछे यहाँ पर चीज यहाँ पर कोशिश पूरी करते हुए पकड़ना चाहते थे, स्किल का इस्तेमाल किया, टॉन्ट देना चाहते थे बट डैमेज पीछे से बहुत ज्यादा है। लेंस यहाँ पर टॉन्ट करते हुए नजर आ रहे, कंटिन्यूसली रिकॉल कर रहे हैं, उनको दहाड़ते हुए कहते हैं ना ललकार रहे कि दम है तो बाहर निकल के आओ, हम आपके मैदान में खड़े, हम आपके घेरे में खड़े हैं, अगर दम है तो आओ हमें रोक के दिखाओ। क्योंकि उनका जो दमखम है 11-3 के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 किल्स का इंतराल है, ऑलमोस्ट 5000 गोल्ड हो चुका है एसएम भाई 7 मिनट के अंदर, जो बहुत बड़ी यहाँ पर चेतावनी है टीम हमारी नेक्सागॉन के लिए। जी बिल्कुल, नेक्सगॉन जो है दिक्कतों में बिल्कुल फंसते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आप देखें ऑब्जेक्टिव के पास आपका कुछ दबदबा चल नहीं रहा है, वो आ रहे हैं जंगल की तरफ, वहां से इन्वेड कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके थोड़ा सा क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन क्या कर पा रहे हैं आप, सिर्फ मिनियन वेव क्रिएट जो आ रही है उसको रोकने में कामयाब हो पा रहे हैं। और लेकिन चलिए आपका मैं ध्यान देना चाहूंगा लेंस, वो देखिए खूबसूरती के साथ वो प्राइम स्किन जो दिख रही है ना दोस्तों, कमाल किया है, उसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो जो 75 या 85 लेवल एग्जैक्टली याद नहीं है बट वो पहुंचना 35 पड़ता है दोस्त, तो दिक्कत रहता है वो। लेकिन देखिए ये ऐसा इवेंट है मोवा 5v5 ई स्पोर्ट्स, जब आप वो खेलते हैं तो आपको वो मौका मिलता है वो लॉबी के जरिए, तो वो खूबसूरती है, ये कमाल का दिखता हुआ। और चलिए ये पॉसिबल कराया है आज नेक्स्ट पल्स और HND स्पोर्ट्स ने, और तो ये थर्ड प्लेस के लिए ज़रूर आगे बढ़ रहे हैं। पर अभी के लिए टीम नेक्सगॉन जो है वो दिक्कतों में और टीम इन्फर्नो खूबसूरती के साथ पहला मैच में आगे बढ़ रही है। क्या वो चमत्कार को नमस्कार, क्या वो समय का कांटा जो है वो पलटेगा? संभावना बहुत बहुत ज्यादा कम है। अगर हम बात करें 7000 गोल्ड का यहाँ पर डिफरेंस हो चुका है, यहाँ पर शायद लॉर्ड के पास घेराबंदी करने की कोशिश की जाएगी, एक टेबल टर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है बट उसकी संभावनाएं सिर्फ और सिर्फ 10% है, बिल्कुल ना के बराबर। कोशिश की जाएगी टीम नेक्सागन की तरफ से कि वो बाहर आए, थोड़ा चेज करें, 1-2 किल्स निकालें और उसके बाद लॉर्ड के लिए जाए बट ऐसा होगा नहीं। इसी के साथ यहाँ पर अंदर जाना चाहिए, फाइज यहाँ पर अंदर के चीज यहाँ पर चेज करते हुए नजर आएंगे, ब्लू स्टोन को टारगेट किया जाएगा बट इसी के बीच में टॉप लेन से बड़े प्यार से लेंथ ने एक और टर्रेट निकाल लिया, चीज को यहाँ पर पकड़ा जाएगा जा सकता है और चीज को गोदी में उठाया जाएगा, बाहर पटका जाएगा, चीज की एचपी लो है, पीछे से यहाँ पर आरलॉट आएंगे, चमटा मारेंगे और 2 किल निकालेंगे, किलिंग स्ट्रीक मिलेगा, ग्रुप को यहाँ पर किलिंग स्ट्रीक मिल रहा है, पीछे से रेंजर आएंगे, डेथ सोनाटा कनेक्ट करेंगे, डबल किल लेके जाएंगे, ट्रिपल किल की यहाँ पर चेष्टा की जा सकती थी बट नेक्सागॉन के जो 2 प्रतिद्वंदी वो पीछे रहने के लिए ही रहेंगे। बट
क्या क्या कर क्या रही थी फारसा दीदी? आवश्यकता नहीं थी आपको यहाँ पर स्ट्राइक वेस्ट नहीं करना चाहिए था, थोड़ा-सा संभाल के रखते तो शायद जो नेक्स्ट टीम फाइट थी उसमें कामयाब हो जाते। बट इसी के साथ अब लॉर्ड लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो टीम नेक्सगन है इनके पास इतना गोल्ड नहीं बचा, इनके पास इतने महारथी नहीं बचे कि लॉर्ड कंटेस्ट करने के लिए थोड़ा-सा भी आ गए। इसीलिए बड़े प्यार से जो आरलॉर्ड तो नहीं, सूक्ष्म और हमारे लैंसलॉट बड़े प्यार से लॉर्ड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आरलॉर्ड उनकी सहायता के लिए गए और ग्रो के बाद अकेले वहाँ पर खड़े हुए एम्बुश करके वेट करें, कोई भी आएगा दीवार में चिपका के मारूँगा और आने की आवश्यकता तो पड़ी नहीं, उससे पहले ही लॉर्ड ले लिया। ऐसे में भाई मेरे को लगता है ये आखिरी लॉर्ड है और इस लॉर्ड के साथ मैच ना यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। होली शील्ड बची है, आई एग्री, बट होली शील्ड के साथ-साथ ये मैच खत्म हो जाएगा। मिड लेन से लॉर्ड जाएगा और पहले होली शील्ड तोड़ेगा, उसके बाद बेस तोड़ेगा। ऐसा मेरी प्रेडिक्शन है, आप क्या कहेंगे? चलिए प्रेडिक्शन में पहला दावा तो गलत होता हुआ मैच में भी खत्म हो सकता है, लेकिन मिड लेन से तो नहीं जाएगा दोस्त, क्योंकि मिड लेन में हाँ, 2 सॉरी, टावर 2 टरेट तैनात है, है। टरेट, टॉप। चलिए क्योंकि टॉप की तरफ से जा रहा है, क्योंकि वहां पे जो है वो शील्ड हटाने में भी कामयाब हो चुके हैं, यानी कि होली शील्ड वो जा चुकी है। तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लेवल का अंतराल देखिए, लेवल डिफरेंस जो है वो भी तेजी के साथ बढ़ता हुआ एंड मुझे गजना के लिए ये तैयार है, स्ट्राइक का इस्तेमाल कर देंगे क्योंकि वो चाहते हैं टावर रोकना। क्या ये सही समय था? स्ट्राइक थोड़ा सा इंतजार कर सकते थे, आपको पता है आपके टावर के पास वो शील्ड है तो अगली वेव आएंगे उसको रोक सकते हो, बट काफी खूबसूरती के साथ आगे गए हैं, लेकिन ब्लू स्टोन क्या ये जल्दबाजी थी, काफी तेजी के साथ आगे गए, लेकिन दिक्कतों में ये भी आ सकते हैं। लग रहा था कि समय के लिए वो जो मिनियन है उनका प्रयोग करके गए, रोकने में कामयाब जरूर हो रहे हो, जिसका इस्तेमाल करेंगे। स्ट्राइक वापस आती हुई कमाल का, चलिए उन्होंने कूल डाउन बिल की तरफ गए हैं, ये अच्छी बात है उनके लिए, लेकिन क्या वो रोकने में कामयाब हो जाएगा? डबल सिक्योर हो चुका है और प्रेडिक्शन की तरफ ये आगे जरूर जाते हुए क्रिस्टल ओपन हो चुका है और टीम नेक्सगॉन क्या पहला अंक गंवाएगी। यहाँ पे वेव आ चुकी है, 41 सेकंड का समय हो चुका है, यानी कि अगली वेव एक ही साथ हो चुकी है। दूसरी लाइन पे वेव जाएगी नहीं, कोशिश यहाँ से कर रहे हैं, एक बार फिर वो स्ट्राइक का इस्तेमाल करके मिनियन को हटाएंगे, लेकिन मिड से वो मिनियन वेव आ रही है, वो दिक्कत दे सकती है आरवे भाई। बिल्कुल दिक्कतें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। अभी इनके जो प्रतिद्वंदी है 4-5 सेकंड दोनों यहाँ पर जीवित तो हो जाएंगे, बट उनकी कोशिश यहाँ पर शायद सफल नहीं हो पाएगी। अंदर घुसना चाहते हैं, जो वेन थे उनकी एचपी बहुत ज्यादा लो होगी। मिनियन को फटाफट क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, मिनियन लगातार आ रहे हैं और शायद यहाँ पर अब मजबूरन पीछे हटना पड़ेगा टीम इन्फर्नो को। अगर यहाँ पर ब्लू स्टेन अर्ली में इन्वेड करके वहां पर मृत्यु के घाट नहीं उतरते तो शायद मैच यहाँ पर समाप्त हो जाता है। वो फटाफट अंदर गए, शायद फारसा को टारगेट करना चाहते थे, फारसा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, बट ऐसा हुआ नहीं, उनको पकड़ा गया और पीटा गया और उनकी मृत्यु के बाद ही जो उनकी टीम थी, जो मैच खत्म करने की संभावनाएं थी, वो यहाँ पर खत्म होगी, क्योंकि जब तक फारसा जीवित है तब तक वो मिनियंस को ज़्यादा अंदर आने नहीं देगी। और यही यहाँ पर सबसे बड़ी होने वाली है, आपको जितना जल्दी हो सके सबसे पहले फारसा को नॉकआउट करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, उसके बाद आप बड़े प्यार से मैच यहाँ पर समाप्त कर लेंगे। और मेरे को लगता नहीं अब यहाँ पर फारसा उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी रखेगी, क्योंकि इनिबिटर सारे खत्म हो चुके हैं, एक और मिनियन वेव और पूरा मैच खत्म। बस यहाँ पर गलती नहीं करनी है एसएम भाई, क्योंकि कहते हैं ना, एक गलती और मैच पलटी, आपकी ये सबसे प्यारी लाइन और यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर फिर से पकड़े होने जा रहे हैं चीज को, यहाँ पर दर्शाई गॉड लाइक मिल चुका है 13 मिनट के समय में। और यहाँ पर अब आएंगे 2 लेन से मिनियंस। आपका जो मेन डिफेंडर था यानी टैंक था, वो यहाँ दर्शाई हो चुका है, उसके बिना ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। ग्रोक को देके सीधा अंदर जा रहे हैं, पकड़ना चाहते हैं, टेक्टोनिक चार्ज लगाना चाहते हैं, लेजेंडरी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कैरी को यहाँ पर दर्शाई किया जाएगा, बेस से पहले गिल्स की तरफ जाते हैं। पायस यहाँ पर कंटिन्यूसली पोक करते हुए नजर आ रहे हैं। लप्पू क्या यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। डबल किल मिलेगा, इसे डबल किल के साथ ट्रिपल किल की चेष्टा करेंगे। बेस खत्म करने से पहले गिल्स की तरफ जा रहे हैं, ये दर्शाता है कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है टीम इन्फर्नो। ट्रिपल किल आ चुका है, मेने की संभावना है, यहाँ पर फ्रीज का इस्तेमाल किया, मेने क्या मिलने में कामयाब हो पाएगा? नहीं होगा। मेनियक क्या मिल सकता है? क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मेनियक नहीं मिलेगा। और इसी के साथ बेस समाप्त हो जाएगा। मेनियक तो नहीं मिला, बट पहला जो अंक था बेस्ट ऑफ 3 के मुकाबले का, वो यहाँ पर मिल चुका टीम इन्फर्नो को और एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली हमें उनकी तरफ से। एसएम भाई आ, वो जो खूबसूरती के साथ खेले हैं वो कमाल का था। टीम इन्फर्नो खूबसूरती के साथ वो आगे जब एंड कर रहे थे ना, तो वो जो हम बात करते हैं कि थर्ड प्लेस का मैच है, इनको पता है कि इंजॉय के साथ खेल सकते हैं, इनका जो सफ़र था ये इवेंट तक का, वो नतीजा उनको पता है क्या होगा, या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। जो वो विजेता वाला खिताब है वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो उतना प्रेशर नहीं था, वो दिख भी रहा था कि वो जब उनको पता है पहला अंक आसानी के साथ आ रहा है, तो वो मीनिंग की तरफ जा रहे थे, कि दिखा रहे थे कि उनके पास वो क्षमता है, वो डोमिनेट करना जानते हैं, तो अपना डोमिनेंस जो है वो दिखाने की वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे फारसा हम देख रहे थे, काफ़ी बेहतरीन खूबसूरती के साथ वो रोक रहे थे वेव को, और फटाफट जो है वो कूल डाउन बिल की तरफ गए थे, यानी कि पहले वो बुक की तरफ गए होंगे, उसके बाद बूट्स में भी चलिए वो मैजिक शूज़ लिए होंगे ताकि जो है उनको वो कूल डाउन रहे, तो एक अच्छा खासा ज़रूर। लेकिन
जिस तरीके से टीम ने खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ, तो वो ग्रेंजर का जो आउटप्ले आया, वहां पे हमने देखा कि ग्रॉक जो है वो स्टार्टिंग से डोमिनेट कर रहा है, तो पूरी टीम जो है एकजुट होकर डोमिनेट करती हुई दिखी। वो आरलोड का अग्रेशन देखा शुरुआत में, तो वो खूबसूरत था। और चलिए बात कर रहे थे, तो स्टॉन को वो मिला भी है जो उन्होंने काम करके दिखाया है, 3-0-15। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है इनको। वैसा नाम वैसा काम, ये काला पत्थर लोगों की किस्मत बदलता हुआ नजर आ रहा है, और इसने अभी अपनी टीम का इस मैच में किस्मत पलट के रख दी। अर्ली गेम जो इंगेजेस दिखाए, जो अग्रेशन था, वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ था। ओपोनेंट के जो वाइसेस थे बेचारे, वो कहते हैं ना, जैसे एक मछली तड़पती है पानी के बिना, वो वाली उनकी सिचुएशन थी। बेचारे को बफ मिल ही नहीं रहता, ना उनको ब्लू बफ लेने दिया जा रहा था, ना उनको रेड बफ लेने दिया जा रहा था, वो बस तड़पते हुए नजर आ रहे थे पूरे मुकाबले में। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत थी, और शायद अगर जो हमारी टीम इन्फर्नो है वो जीतना, सॉरी टीम नेक्सागन है, अगर वो जीतना चाहती है, कमबैक करना चाहती है, थर्ड प्लेस के लिए जाना चाहती है, तो उनको नेक्स्ट गेम में वापसी करनी पड़ेगी। और जो छोटी छोटी उन्होंने मिस्टेक्स की अर्ली गेम में, कि प्रॉपर उनका बैकअप नहीं आ रहा था, ठीक है, और अर्ली इंगेजेस कर रहे थे, उनको अवॉइड करना चाहिए था। जब उनको पता था कि वो अर्ली मैच में ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, स्टिल वो इंगेजेस करे जा रहे थे, करे जाते, ये थोड़ी छोटी चीज़ें अगर वो अवॉइड करते हैं, तो शायद हमें सेकंड मैच में कमबैक देखने को मिलेगा, और हम तीसरे मुकाबले की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे सिम भाई। बिल्कुल। आ, अभी तो देखिए दूसरा आएगा, और वहां पे वो कुछ कर पाते हैं तब तीसरी की तरफ जाएंगे। पता है दिक्कत क्या हुई? बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ यार। देखिए जिस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन पार्टनर नेक्स्ट प्लस एग्जीक्यूट कर रहा है ना इस इवेंट को, वो उस तरीके से मैच को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया एग्जीक्यूट दोनों। नहीं कर पाए। है ना? तो बस बिल्कुल उनको, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। उनको थोड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता, मतलब ट्रेनिंग की तो चलिए नहीं, क्योंकि वैसे पड़ेगी भी, कहने को तो पड़ेगी, कह सकते हैं, बट अभी वो आवश्यकता है। देखेंगे कि क्या मैच दो वो पलट पाएंगे, गेम दो। चांसेस कम है। आज की मैच वन का गेम नंबर टू। चांसेस कम है। ऐसा होता क्या है कि पहले मैच में ही आप इतनी बुरी तरह से हार चुके हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आप मनोबल होता है ना, वो आपका टूट जाता है, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा सा शैटर हो जाता है। वहां से फिर कमबैक करना, अगर आप 11-12 या फिर 1-2 किल्स के पीछे से रहते फिर हारते, ठीक है, कांटे की टक्कर होती, तो फिर वापसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट आप इतनी बुरी तरह से जब हारते हैं ना, तो वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती है। बट कहते हैं ना, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हम भी उम्मीद करते हैं जो हमारी टीम नेक्सगॉन है वहां से कमबैक करे, एक अच्छा खासा और टफ कंपटीशन दे टीम इन्फर्नो को, और हमें तीसरा मुकाबला देखने को मिले। मैं तीसरे मुकाबले के एक्साइटेड रहूंगा, क्योंकि वहां पर फिर से जो तराजू है वो बराबर हो जाएगा, दोनों टीमें फिर से सेम कगार पे आगे खड़ी हो जाएंगी। यहाँ पर इस बार टीम नेक्सगॉन हमारी ब्लू साइड की तरफ आएगी, और टीम इन्फर्नो रेड साइड की तरफ जाएगी। देखते हैं, फर्स्ट पिक शायद हमें टीम नेक्सगॉन का इस बार, क्या कहते हो? जी बिल्कुल। कई बार हम बात करते हैं पता है अक्सर की, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो चर्चा हम करते हैं, कई कई सारे इवेंट में हमने किया है। तो क्या ये वाला इवेंट भी हो सकता है कि फर्स्ट पिक के साथ वो जीत आए? मुश्किल है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वो टीम इन्फर्नो डोमिनेट कर रहे थे ना, तो तेज था। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ग्रॉक बैन, मैं आपसे पूछूं, तब तक मेरे को दिख गया कि ग्रॉक जो है वो देखिए बैन हो चुका बैन है। हो चुका है। होता है, क्योंकि आप जिस होता है, हम रैंक मैच भी खेलते हैं ना, तो अगर हमें कोई प्लेयर या कोई हीरो लास्ट मैच में बहुत बुरी तरीके से पीट के आता है ना, तो हमारा सबसे पहला माइंडसेट होता है, यार इसको बैन करेंगे भाई, बहुत मार रहा है। मुझे वलीर नहीं पसंद है भाई, अगर किसी मैच में वलीर आ जाता है ना, तो अगले मैच में बैन करता ही करता हूँ, मेरा ये है। क्योंकि आप टाइग्रेल खेलते हो तो वो धक्का दे हाँ, देता है, धक्का दे देता है यार, उठा के बाहर फेंक देता है, अल्टी खराब कर देता है, मुझे नहीं खेलना उसके सामने। तो वो वाली एक्सप्लोजन में सिचुएशन है दिक्कत भाई। आती है, तो बिल्कुल। चलिए यूजी भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि गटो जो है वो भी जा चुकी है। क्रिम्सन बीकन का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जोसिन जो है वो भी जा चुकी है। पिछले मैच में था इनके पास, इनको पता है कि फर्स्ट पिक इस बार उस तरफ है, तो प्रायोरिटी यहाँ पे जोसिन की तरफ भी रख रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो क्षमता रहती है, वो पोक करते रहते हैं। जब उनके ऊपर अटैक होता है तो क्रिम्सन बीकल का इस्तेमाल करके वहां से बच के निकल सकते हैं। और ये जो पुश वाला मैप आ जाए उसका डर लगा रहता खुश है उसके करो लिए। खुश जो रहो। हिल्डा का जो बैन है ना, वो इस बार भी देखने को मिल रहा है, एक रिस्पेक्टेड बैन। पिछले मैच में भी देखा कि बैन किया, और इस मैच में भी बैन करते हुए दिखे हैं। एक बैन गवाया था हालांकि पिछले मैच में, पर इस बार शायद नहीं गवाएंगे। चलिए यूजोंग भी जा चुका है, थर्ड बैन अब इनके पास है। टीम इन्फर्नो ही थी जो गवाए थे, ज्यादा सोच लिया था, पर इस बार चलिए उनके पास अभी भी मौका है। देखना रहेगा कि किसकी तरफ जाते हैं इस बार। हाया ओपन है इस बार, वायसेस ओपन है। टीम नेक्स्ट गॉन जो है वो कौन सा पिक करते हुए दिखेगी, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस तो आएंगे। चलिए कलिया गए पूरा हैं, ओपन है। इस बार सोरा ओपन है, इस बार उनके पास वायसेस के लिए जाए तो वो भी ओपन है। हाया के साथ जाना चाहते हो तो हाया भी ओपन है। आर्मेज की तरफ जाना चाहें तो वो तो है ही, फारसा की तरफ। पर वो इंतजार करेंगे पहले, जो है कौन से हीरो की तरफ जाते हैं। क्या वो सोरा की तरफ जाएंगे? क्या ग्रेंजर की तरफ भी जा सकते हैं? क्योंकि पिछले मैच में देखा ग्रेंजर सामने से कमाल का खेल रहा था।
थोड़ा एक यहाँ उत्तम चयन हो सकता है टीम नेक्सगॉन के लिए, क्योंकि उसका ऑफेंस डिफेंस दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा क्राउड कंट्रोल प्रोवाइड करता है, 1v1 फाइट में अच्छे खासा डोमिनेट करने की क्षमता रखता है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, सोरा में यहाँ पर पाइस की तरफ से देखने को मिलेगा। देखते हैं कितनी अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टीम फाइट्स में कितना अच्छा वो प्रयोग करते हैं और 1v1 में कितना अच्छा डोमिनेट कर पाते हैं। ठीक है, ये बहुत हीरो का अच्छा होना सिर्फ आपकी टीम की विजय संभव नहीं करता, आप कितना अच्छा से उस हीरो को प्रयोग करते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखते हैं तो हमारे पायस हैं सोरा के साथ क्या बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अब टीम जो हमारी इन्फर्नो है ना, इनके लिए थोड़ी चिंताजनक बात हो जाएगी, कौन से हीरो के साथ ओह! जाएँगे जिससे सोरा को काउंटर किया जा सके। इसी के साथ किमी आ चुकी है, किमी के साथ हमारा जो अ, एलोज़ है वो देखने को मिलेगा। पहले इसको मैं लॉर्ड का छोटा बेटा बोलता था, क्योंकि हमारे लॉर्ड भी ऐसे दिखाई देते थे। ठीक है? तो हाइलोज़ यहाँ पर एंट्री मारेंगे। हाइलोज़ अर्ली गेम में थोड़ा-सा अग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनका अर्ली गेम से जो स्टन आता है और साथ के साथ जो डैमेज आता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहता है। तो अर्ली गेम में यहाँ पर फिर से जो हमारी टीम इन्फर्नो उनके पास अपर हैंड रहने वाला है, अगर टीम नेक्सागॉन यहाँ पर कुछ काउंटर पिक्स नहीं करती है तो। ओह! और टिग्रियल, ये एक्सपेक्टेड था टिग्रियल प्लस क्योंकि सोरा कॉम्बो। ये चल रहा है, कमाल का चल रहा है। पर इसमें कई बार दिक्कत भी हो जाती है। जैसे समझ लो इम्प्लोज़न एक सिचुएशन बताता हूँ, इम्प्लोज़न जो है टिग्रियल ने यूज़ कर दिया। अब टिग्रियल को सेकंड स्किल यूज़ करने का है, उस समय पे सोरा जो है वो अपना इकट्ठा अल्टी करने वाला मार देता स्किल है। यूज़ कर देता है, तो थोड़ा-सा खदेड़ता है वो पहले प्लेयर्स को, फिर वो हाँ, इकट्ठा करता है। तो उस समय पे क्या होता है कि फिर सेकंड स्किल वेस्ट हो जाती है वहाँ पे। वो काम नहीं आता। या समझ लो इम्प्लोज़न लगने वाला और उस समय पे वो स्किल यूज़ करके उसने प्लेयर्स को थोड़ा-सा दूर कर दिया। ये टाइमिंग भी मैटर करती है दोस्त। टाइमिंग तो भाई हर जगह मैटर करती है, टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी हर काम करते हुए। तो वापस आते हैं हम गेम की तरफ। तो यहाँ पर चीज़ ने मॉस्कोव उठाया, मॉस्कोव एक अच्छा खासा जो हमारे नीरज चोपड़ा है अर्ली गेम से हमें ये बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के नज़र आएँगे, फाइट जितनी ज़्यादा हो सके अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमने जितने ज़्यादा अच्छे मॉस्कोव प्लेयर्स देखे उनका यही होता है कि अर्ली गेम में वो फाइट नहीं करते हैं, मिनियंस क्लियर्स करते हैं और कोशिश उनकी रहती है जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके फार्म अप करें, क्योंकि लेट गेम में मॉस्कोव अनबीटेबल रहता है, 1 वर्सेस 2 करवा लो, 1 वर्सेस 3 कर लो और बड़े प्यार से बंदा हैंडल करने की क्षमता रखता है। इसी के साथ वापस से पिछली बार ओपनर की तरफ लप्पू-लप्पू की ज़रूरत है, इस बार हमारे जो इस साइड है उधर लप्पू-लप्पू आए हैं। तो क्या ऐसे भाई लप्पू-लप्पू सोरा को काउंटर कर पाएगा? मेरे को इसका थोड़ा-सा डाउट है। मैंने सोरा को फोवियस से एक बार थोड़ा-सा काउंटर किया था, शायद वो सोरा अच्छा नहीं था इसलिए मैं काउंटर करने में सक्षम हो गया था। ठीक है? बट लप्पू-लप्पू मुझे हाईली डाउट है कि लप्पू-लप्पू अर्ली गेम में या मिड टू लेट गेम में भी लेट गेम में शायद काउंटर कर ले, बट अर्ली टू मिड में मेरे को लगता है सोरा को रोकना ईज़ी होगा लप्पू-लप्पू के लिए, दिक्कतें बढ़ेंगी। चलिए वो टीम फाइट एग्जीक्यूशन की तरफ जाएँ तब देखना रहेगा, लेकिन नेक्स्ट इस बार चलिए कुक करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं और आवश्यकता भी है वहाँ पे लेट गेम की तरफ उनके पास वो भी है, तो लेकिन अर्ली गेम में वो दिक्कत देते हुए यहाँ से भी आएँगे, वो जो पल्स आते रहते हैं वो दिक्कतें ज़रूर दिलवाते हैं, क्योंकि किमी जो है वो ज़रूर दिक्कतें तो ज़्यादा देती हुई दिखेगी और हाइलॉस है तो वहाँ पे ग्लोरियस पाथवे से स्पीड मिलेगी और उसका कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। मेज का चयन देखेंगे तो वहाँ पे ईयू बैन हो रही है, पता है ग्रेंजर जो है वो जाएँगे, दिक्कत वो देते हैं, तो ग्रेंजर के ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बैन कर दिया इन्होंने और हाया की तरफ वो खौफ दिख रहा था। तो हाया को भी बैन किया है, बट अब यहाँ पे देखना रहेगा कि क्या वो एक एमएम की तरफ ही जाते हैं या तो फिर वाईएसएस भी ओपन है, सामने की टीम में खेलना पसंद करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। ऑप्शन की बात करें तो क्लॉड भी यहाँ पर ओपन थे, बट वाइसेस की आपने बात की तो वाइसेस को भी यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा, रिस्क नहीं लिया जाएगा। बट इसी के साथ अब यहाँ पर चिंताजनक बात होने वाली कि आप मोस्कोव के अगेंस्ट कौन सा मार्क्समैन पिक करने वाले, ऑप्शन बहुत सारी है, रिथिल आपके पास है। ठीक है, आप क्लॉड की तरफ जा सकते हैं, क्लॉड यहाँ पर अच्छा खासा चयन साबित हो सकता है। मेलिसा है, इक्शी है, बहुत सारी ऑप्शन है जो बैकलाइन पे जाके अच्छा खासा डैमेज देती है, क्योंकि मोस्कोव एक क्लोज रेंज डैमेज डीलर है, तो बेटर ये है कि आप ऐसा लॉन्ग रेंज हीरो लॉन्ग लें रेंज। सो दैट आपको बहुत ज़्यादा पास में आना पड़े, क्योंकि मॉस्को के आप जितना पास आएँगे ना उतनी आपकी खटिया खड़ी होगी। तो दूर रहे, दुरुस्त रहें और इसी के साथ लैंसलॉट फिर से आएँगे। लास्ट गेम में स्टोन ने लैंसलॉट के साथ काफ़ी अच्छा खासा जलवा दिखाया था। ठीक है, लास्ट में थोड़ा-सा मिसहैपनिंग हुई थी बेचारे के साथ, अंदर ज़्यादा चले गए थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। बट ओवरऑल उनका गेम प्ले काफ़ी शानदार था। तो इस बार दोबारा वो जाना चाहेंगे लैंसलॉट के साथ, और लैंसलॉट अच्छा भी है क्योंकि बड़े प्यार से बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर सकता है। उसकी जो डैश स्किल्स है, साथ के साथ जो सेकंड स्किल से इम्यून हो जाता है, वो उसके बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पर अंधा कानून प्लस सुयो आ चुका है। अब थोड़ा-सा दिक्कत होगा, क्योंकि अगर ये कॉम्बो लगता है, टिग्रियल प्लस सोरा प्लस
मिड टू लेट की जो फाइट्स होंगी ना, टीम फाइट्स होंगी, वहां पर टीम नेक्सागॉन के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्बोज है। और ये नहीं कि सिर्फ एक कॉम्बो पे डिपेंडेंट है, वहां पर टिग्रेल प्लस फारसा कॉम्बो लग सकता है, टिग्रेल प्लस सोरा कॉम्बो लग सकता है, सोरा प्लस फारसा कॉम्बो लग सकता है, फारसा प्लस सूर्यो का कॉम्बो लग सकता है। तो बहुत बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास कॉम्बोज बनाने के लिए। और दूसरी तरफ ऐसी चीज नहीं है, दूसरी तरफ कॉम्बोज मेरे को लगता है थोड़े से कम है एज कम्पेयर टू टीम नेक्सागॉन। देखते हैं क्या सिचुएशन आती है। थोड़ी देर में हमारा जो मनोबल का युद्ध है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है, ड्राफ्ट फेज यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब हम चलेंगे हमारे गैस करे फटाफट। डेंजरस ग्रास। चलिए एक्सपेंडिंग रिवर्स की तरफ हम गए हैं। अब ये भी धोखेबाज है भाई ये। ये भी मजेदार गेम हो गई ना। अब अक्सर कहा करते हैं गैस करें पहला गैस करे मतलब गैस करे। फर्स्ट ब्लड कौन लेके जाएगा। तो चलिए एक्सपेंडिंग रिवर की तरफ हम जरूर जा रहे हैं। वो रिवर का दायरा है और वो बड़ा रहता है। और चलिए देवी और सजनों, हम आगे बढ़ रहे हैं आज के छोटा मार्टिस मैच मत लग रहा नंबर भाई। 1 के गेम नंबर 2 की तरफ। पहला गेम जो है वो निकाला था टीम इन्फर्नो ने, इन्फर्नो की ताकत से। नेक्सगॉन अब उनकी तरफ चलते हैं, क्या वो किस तरीके से कर पाते हैं इस बार। देखिए हम बात कर रहे थे ना एग्जीक्यूशन की, इस बार देखिए किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। क्या इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है कि टीम नेक्सगॉन आ रही भाई? मुझे तो बहुत डाउट है भाई इस तरीके से वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि जो एचएनटी की एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। इसी के साथ बफ की बात करें तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि जो हमारे हाइलोस भैया थोड़ा सा इन्वेड करने के मूड में चल रहे हैं। किमी दीदी उनके साथ पीछे पीछे घूम रही है और जो जंगल का मंगल है वो करने में शायद वो सक्षम हो पाए। और सुयो का जो अर्ली फार्म है उसे रोकने की कोशिश की जाएगी, बट ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे उन्हें पता चलेगा भाई हमारे घर में चोरी हो गई है, वो पहरेदारी बढ़ा देंगे। हाँ जी, पहरेदारी तो बढ़ानी पड़ेगी अभी के लिए। हाय, पिछले मुकाबले में भी यही हुआ था इस बार। चलिए, लेकिन वो आदान प्रदान करने के लिए गए थे। पता है यहाँ पे हमला हो रहे हैं तो वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश जरूर कर रहे थे, पर की तरफ चलिए उतना कुछ होगा नहीं। लेकिन अभी के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास भरपूर करते हुए। ये अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे हैरिस जो है वहाँ है, वो जबान फोर्स का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं वो भी देखना रहेगा। थोड़ा वहाँ पे प्रेशर करने की कोशिश करते हुए, लेकिन अभी के लिए वो लीथो वंडर होता है वो लेके जा चुके हैं पार्सा, ताकि वो जंगल का विजन है वो मिलता रहे। और जंगल की तरफ आप जब जाते हैं थोड़ा सा बफ भी मिलता है, तो वो मूवमेंट स्पीड का थोड़ा बफ रहता है। तो वो कहते हैं कि लीथो जो है आपको अपने हाइपर को दे तो ज़्यादा बेटर रहता है वैसे। यहाँ पर टॉप लेन पे ना ऐसा लग रहा था कि मॉस्को की अभी पिटाई होने वाली थी, बट सही समय पर थोड़ा सा पीछे हट गई, क्योंकि हैरत कंटिन्यूसली उन्हें रिकॉल दिखा दिखा के टीज करे थे और पीछे से लेफ्ट फ्लॉट वहाँ पे खड़े थे। अगर थोड़ी सी भी गलती तो यहाँ पर शायद हमें फर्स्ट फ्लॉट देखने को मिल सकता था, बट कहते हैं ना सावधानी यहाँ पर बहुत प्यार से बढ़ती जाएगी। टर्टल यहाँ पर स्पॉन हो चुका है, टर्टल के पास यहाँ पर फाइट बहुत शानदार देखने को मिल सकती है। बहुत बखूबी इस्तेमाल किया गया सेकंड स्किल का, हमारे ग्रिड की तरफ से इसको ड्रैग किया, पीछे किया, किल लेने में कामयाब नहीं हो पाए, बट पीछे हटने पे मजबूर कर दिया लैंसलॉट। अब थोड़ा सा संभल के आएंगे हमारे जो सुयो है, गए हैं अपना ब्लू बफ सिक्योर करेंगे, उसके बाद शायद टर्टल पे आएंगे। टर्टल की एक शानदार फाइट हमें देखने को मिलेगी, उससे पहले शायद लैंसलॉट को भी अपने ब्लू बफ पे जाना पड़ेगा, ब्लू बफ सिक्योर करना पड़ेगा। कोशिश पूरी की जा रही है, जोन यहाँ पर थोड़ा सा विजन देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को, टर्टल फाइट इनिशिएट करने की कोशिश की जाएगी। टिग्रियल फिर से जा रहे हैं, ये लड़का फिर से जा रहा है, देखने गया था कि क्या ब्लू स्टोन अपना ब्लू बफ ले चुके हैं, और हाँ ब्लू स्टोन ने अपना ब्लू बफ ले लिया है भाई। पीछे आ जाओ, टर्टल के पास यहाँ पर फाइट होने की संभावना है। टॉप लेन पे फिर से मॉस्को को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, हैरत उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा भारी साबित हो रहे हैं और लेकिन से डैमेज दे रहे हैं, और मॉस्को को टर्रेट के अंदर ही रखा जा रहा है। ब्लू स्टोन यहाँ पर अंदर जाएंगे, स्टन का इस्तेमाल किया जाएगा, पकड़ने की पूरी कोशिश है। वेन यहाँ पर फंसते हुए नजर आ सकते हैं और अंदर जाएंगे, टर्रेट निकाला जाएगा, एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया जाएगा, डैमेज इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं आएगा। सूर्य को समाप्ति की ओर किया जाएगा, सूर्य की मृत्यु के साथ ही पीछे से यहाँ पर सो रहा है, अल्टीमेट का इस्तेमाल करेंगे, बट उनका डैमेज इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं होगा कि किल लेने में कामयाब होंगे, बड़े प्यार से स्केप करने में कामयाब हो जाएंगे। पॉइंट एचपी पे जो स्केप किया हमारे लैंसलॉट ने बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ था। इसी के साथ टॉप लेन पे जो लेंस है यहाँ पर दमकम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, पोक करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छा खासा बहुत डैमेज दिया है और टीज कर रहे हैं, क्योंकि पता है पीछे से किमी आ रही है, किमी का सपोर्ट रहेगा तो शायद यहाँ पर उसको भी धराशायी किया जा सकता है। क्लियरिंग की बात करें तो फटाफट यहाँ पर जोन है, मिनियंस को क्लियर करें सो दैट यहाँ पर पायस के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। पायस को यहाँ पर थोड़ा सा अंडर फार्म करने की कोशिश की जाएगी, कि सोरा को जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करके रखेंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। टॉप लेन पे यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि जो हमारे मॉस्को है उनका शनि भारी है, उनके ऊपर बहुत बहुत बड़े ग्रह मंडरा रहे हैं। वहां पे देखिए जो हैरिथ है वो कमाल की जोनिंग कर रहे हैं, वो देखिए पूरा रोक रहे हैं वहां पे। पता है जब फाइट इनिशिएट होने वाली तभी वो वेव क्लियर कर रहे हैं। लेकिन चलिए वहां पे ग्रिड ऊपर पहुंच चुके हैं तो दिक्कत देने के लिए वो तैयार है। पर फिर भी देखिए मॉस्को का वो जो बिजिंग रहता है ना, वो भी ऐसा होता है कि जब आप यूज करते हैं, जैसे 3 मिनट एक साथ है तो तीनों पे अटैक करता है, उस वजह से लेवल मेंटेन करने में कामयाब हुआ है। लेकिन एस्टा का इस्तेमाल जरूर करेंगे, एक गोलियत पाथवे का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश रहने वाली, उनके पीछे चलिए 16 तैनात है, इम्प्लोजन का इस्तेमाल करके रोका जरूर जाएगा। ब्लैक स्टॉन दिक्कतों में
ब्लैकस्टोन को डाउन करके इस बार चलिए बराबरी से ताल मिलाने के लिए तैनात है। फ्लिकर का इस्तेमाल पहले हो चुका था, अगर होता तो कुछ और प्लेयर भी फंसते हुए दिखते, लेकिन लेंस जो है वो खूबसूरती के साथ जोनिंग कर रहे हैं, पीछे के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, पूरा का पूरा एक फायदा लेते हुए जरूर दिख रहे हैं। आप देखिए ऊपर की तरफ जा जरूर रहे हैं ग्रीड, लेकिन उनको इंतजार करना पड़ेगा। खूबसूरती के साथ वो रोके हुए हैं, बट इनका सपोर्ट इस बार क्या ऊपर की तरफ जाएगा? जी हाँ, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनके पास इंप्लोजन है नहीं, तो पीछे हट सकते हैं क्या? लेकिन आगे आए, ये गलती हो चुकी है क्या? जबरदस्त बोर्ड का इस्तेमाल करके वो चीज करने में कामयाब हो चुके। खूबसूरत आउटप्ले, डबल सिक्योर किया, वो ट्रिपल में कन्वर्ट होगा। पर चलिए फ्लिकर आया और फ्लिकर इंस्टेंटली इस्तेमाल हो चुका है। लेंस ने यहाँ पर 1 सेकंड में पूरा जज्बात पलट के रख दिया। ऐसा लग रहा था कि पीछे से जब ग्रीड आए तो उनको सेकंड स्कल का इस्तेमाल किया, तब मारने में कामयाब हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। पीछे से उनकी पूरी टीम में आउटस्टैंडिंग गेम प्ले देखने को मिला। इसी के साथ ट्रिपल किल उन्हें मिल चुका है, और थोड़ा सा समय लगा तो उस ट्रिपल किल को यहाँ पर किलिंग स्प्री में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और बड़े प्यार से फिर से टीम इन्फर्नो यहाँ पर टर्टल लेने में कामयाब हो जाएगी। 6 मिनट 20 सेकंड का समय हो चुका है। बात करें यहाँ पर स्वर्ण मुद्राओं की, तो ऑलमोस्ट 3000 गोल्ड का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 3 किल्स का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और दोबारा लास्ट मैच की तरफ इस बार भी बफ पे पूरी पहरादारी की जा रही है। जो सुयो है उनको बफ नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर फिर से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेट्स यहाँ पर चेस पोक करते हुए नजर आ रहे हैं, पर पीछे से सुयो आएंगे, पकड़ना चाहेंगे, थोड़ा सा मिस कर जाएंगे, पीछे हटना पड़ेगा, किल लेने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। पीछे से पूरी की पूरी टीम इन्फर्नो यहाँ पर आ चुकी है। ब्लू स्टोन, ब्लैक स्टोन, रेड स्टोन सब यहाँ पर आ चुके हैं, और इसी के साथ दिक्कतें बढ़ेंगी। फिर से पकड़ना चाहते थे, ब्लैक स्टोन यहाँ पर अंदर जाएंगे, स्टन मारेंगे, पीछे रखने की कोशिश की जाएगी, विन को बार बार लगातार टारगेट किया जा रहा है। पता है उनको बफ जितना ज्यादा उनका बफ रोका जाएगा उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 7 मिनट का समय, और शायद अभी तक सिर्फ एक बार विन को बफ का यहाँ पर प्राप्ति हुई है। इसी के साथ फिर से ये स्ट्राइक का इस्तेमाल किया गया, कोशिश करना चाहते थे, डैमेज देना चाहते थे, बट अभी आपका जो गोल डिफरेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अभी इस स्थिति में नहीं है कि आप अपने एयर स्ट्राइक से किसी को भी मृत्यु के घाट उतार पाए, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्बोज लगाने पड़ेंगे। जैसा एसएम भाई ने कहा था, क्या आप एग्जीक्यूशन कर पाएंगे? तो वो एग्जीक्यूशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। हीरोज बहुत अच्छे पिक है, बट यहाँ पर दिक्कत हो रही है। आगे अंदर जाएंगे, मेगा किल लेंगे, इसके साथ पीछे आएंगे, यहाँ पर हमारे टीगरे लाए तो इंप्लोजन का इस्तेमाल किया, बट पकड़ने में कामयाब हो नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा डैमेज नहीं आएगा। पीछे से टीम सपोर्ट नहीं आए, मेज की रोटेशन देखने को नहीं मिली, वो वहां पर किमी के साथ ही किटी खेलती रही। इसी के साथ उनकी टीम को जो हमारे टाइगरेल थी वो भी शहीद हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कर रही थी फारसा दीदी, वहां पर उनकी पूरी की पूरी टीम बॉट में लड़ रही है, जूझ रही है, मर रही है, और वहां पर मिनियन क्लियर कर रही थी। इसी के साथ सोरा फिर से पकड़ते हुए नजर आएंगे। अल्टीमेट का इस्तेमाल देखने को मिल सकता है, शानदार अल्टी मारी थी, बट डैमेज की कमी की वजह से उनको यहाँ पर मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। लैंसलॉट यहाँ पर अंदर जाएंगे, स्टन देखने को मिलेगा, और फाइनली लैंसलॉट यहाँ पर धराशायी हो जाएंगे। बहुत मिन्नतों के बाद 2 किल मिला है टीम इन नेक्सागॉन को। दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, थोड़ा सा टीम कोऑर्डिनेशन यहाँ पर मेरे को मिसिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉट लेन पे एक अच्छी खासी फाइट चल रही थी। अगर फारसा वहां पर आते तो शायद इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता उनके टीम का। इसी के साथ एक और टर्टल यहाँ पर स्पॉन हो चुका है, तीसरा टर्टल आ चुका है। एसएम भाई 2 टर्टल बड़े प्यार से टीम इन्फर्नो ने ले लिया, तो शायद तीसरा भी वो बिना किसी दिक्कत के लेते हुए नजर आएंगे। चलिए, क्योंकि माइक्रो मैक्रो दोनों के ऊपर जो है बढ़त बना के रखी है। चलिए आगे जरूर आए वेरीफाई को इस्तेमाल करके, लेकिन जोन जो है पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि पता है कि दिक्कत हो सकती है। वो इन्वेड करने के लिए जा रहे हैं, बार बार वो दिक्कत दे रहे हैं, स्टन लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर चलिए सही समय पे पीछे जाएंगे, टर्टल की तरफ जाएंगे, या फिर पहली प्रायोरिटी अभी के लिए वो रख रहे हैं कि जितना हो सके कुछ करते जाइए। टीम एनएक्सजी भी ऊपर की तरफ आए हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस बार जब कंटेस्ट करे तो जाए, लेकिन जी नहीं, वो लॉर्ड का इंतजार कर रहे थे। पता है लॉर्ड का आगमन हो सकता है, तो टर्टल छोड़ा उन्होंने, अब लॉर्ड की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके वो चाहते हैं कि गेम को अपने नाम किया जाए। और चलिए अभी कूल डाउन बिट की तरफ गए हैं, तो नहीं, इनके पास ग्लोइंग वन आया था, यानी कि वो अभी के लिए एंटी हील की तरफ गए हैं। धीरे धीरे कूल डाउन भी आएगा, लेकिन आप देखिए जमान फोर्स किस खूबसूरती के साथ वो फोर्स डालते हुए दिखेंगे। वो आगे गए हैं, उनको पता है टावर लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चलिए ब्रश करने में कामयाब हो जाएंगे। एक बार फिर डाउन किया है, गॉड लाइक सिक्योर कर चुके हैं वंस अगेन। और दूसरी तरफ ब्लैक स्टोन वो वहाँ पे आए हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और खूबसूरती के साथ वो लॉर्ड भी ले चुके हैं। लेकिन इस बार जो है मिड लेन के सारे टावर तैनात है, और समय भी कम हुआ है। चलिए इस बार वापस से टॉप की तरफ से वो आता हुआ जरूर दिखेगा, और वापस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जोन और किलिंग स्प्री। इसी के साथ ब्लू स्टोन का एक और जोड़ दीजिए। पूरी की पूरी दिक्कत है, हम बात कर रहे थे कि मिड का टावर आया नहीं है, वो भी आ चुका है। क्या भाई ये लॉर्ड फरियाद होगा?
नहीं, पर्याप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, टोटली डिपेंड करता है जो हमारी टीम नेक्सागोन है वो कितनी अच्छे से इस लॉर्ड को डिफेंड करने की कोशिश करती है। अभी उनके पास होली शील्ड तीनों लेन्स की बची हुई है और बड़े प्यार से डिफेंड किया भी जा सकता है, अगर गलती ना करे, आगे जाके फाइट्स ना लें, पीछे रहिए, आपके साथ जो दोनों महारथी थी मृत्यु के घाट उतर चुके थे, वापसी कर जाएंगे। और इसी के साथ मिड लेन का होली शील्ड जा चुका है, बॉट लेन का होली शील्ड जा चुका है, मिनियन का वेव अभी आने में थोड़ा सा टाइम है, पीछे से आ रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके अगर ये लॉर्ड को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, शायद ये लॉर्ड पर्याप्त नहीं होगा, हमें एक और लॉर्ड की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। बट वही है ना, गलती नहीं करनी है आपको, फाइट इनिशिएट नहीं करनी है, फाइट डिफेंड करना है। अगर फ्रंट चार्ज हमें टीम नेक्सागन की तरफ से देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैच आते हुए नजर आएंगे, बड़े प्यार से लॉर्ड हम उसको यहाँ पर रोकने में कामयाब हो जाएंगे। लेंस का बहुत डैमेज देखने को मिल रहा है, लेंस ने अगेन पॉइंट एचपी पे पीछे हटने में मजबूर कर दिया। मिनियन प्रेशर आ चुका है, टॉप लेन में भी आ चुका है, बॉट लेन में भी आ चुका है, दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ब्लू स्टोन यहाँ पर पीछे हट जाएंगे, फिर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया जाएगा, मिनियन वेव जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। जोन यहाँ पर बड़े मजे से वेट कर रहे हैं कि कोई तो थोड़ा सा बाहर है, उसको मैं स्टन मारूं, मैं अपनी टीम को एक मैच जिता दूं। फिर से मिनियन प्रेशर आ चुका है एसएम भाई, और इस बार दिक्कतें बढ़ेंगी। यहाँ पर शायद टर्र टाइप देखने को मिल सकता है, हाई लॉस की जो रेल की पटरी वो देखने को मिलेगी। उससे पहले यहाँ पर जो हैरत है वो अंदर घुसते हुए नजर आएंगे, अच्छा खासा बस डैमेज देखने को मिलेगा। सोरा ने अल्टीमेट थोड़ी सी ज्यादा जल्दी इस्तेमाल कर दी, इंप्लोजन का यहाँ वेट करना चाहिए था, जिसकी वजह से उनको मृत्यु के घाट उतारा गया। इसी के साथ फिर से एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया जाएगा, मिनियन वेव क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। टॉप लेन का जो मिनियन शायद इस बार थोड़ा सा ले जाएंगे, टॉप लेन का टारगेट मिलेगा, इसी के साथ फारसा दीदी भी मिल जाएंगी। फारसा की मृत्यु के साथ यहाँ पर वेन को भी टारगेट किया जाएगा। वेन की मृत्यु होते ही जो मैच है वो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, अब सिर्फ औपचारिकता ही रह गई है, कहते हैं ना पूरा काम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ घंटी बजानी रहेगी। तो वो घंटी यहाँ पर हमें बजती हुई नजर आ रही है। और बड़े प्यार से जो दूसरा मुकाबला था, सॉरी पहले मुकाबले का जो दूसरा गेम था वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर हो चुका है, और टीम इन्फर्नो इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में तीसरा पड़ाव हासिल कर चुकी है भाई। चलिए वो इस बार जो है थोड़ा सा इंटरटेनमेंट बढ़ाना चाहते हैं, वो जो अंक है वो सोच रहे हैं कि चलिए कितने बढ़ा पाते हैं। चलिए रिकॉल कर रहे हैं, ये रिकॉल नहीं है, विजय गर्जना कह दीजिए, मजे ले रहे हैं भाई, मजे ले रहे हैं। वो डीज कर रहे हैं, गैनेक्स जी को बोल रहे हैं कि चलिए भाई आपकी कितनी क्षमता है दिखाइए, फटाफट चाहिए वो वर्ड्स का इस्तेमाल करके आगे गए और खूबसूरती के साथ हाँ चलिए वो जो इम्प्लोजन है उसको फेल करने में भी कामयाब हो गए, क्योंकि प्यूरीफाई उनके पास तैनात थी। तो वेव आई है उसके साथ वो आगे गए हैं। जोन इस बार वो टावर की तरह ऊपर जाते हुए, क्रिस्टल ओपन है, नेक्सस सीढ़ी टूटेगा और इसी के साथ क्लीन स्वीप के साथ टीम इन्फर्नो टीम नेक्सगॉन को हरा के तीसरा जो पायदान है वो हासिल कर चुकी है। इस मैच में वो जो एमवीपी है ना वो किसको जाएगा, चलिए एक और गैस कर लीजिए। हैरत 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 भाई, हैरत से ऊपर कोई नहीं है भाई, क्या लेंस। आउटस्टैंडिंग आउटप्ले किया है भाई उस बंदे ने। ठीक है, 1 वर्सेस 3 ऑलमोस्ट हो चुका था, पीछे से सपोर्ट आया, आई थिंक 10% एचपी थी, वहां से वापस डबल किल सिक्योर किया, उसके बाद उसको ही मारा, लास्ट की फाइट करे, पीछे से अंदर गए, फारसा को टारगेट किया, उनको मारा, उसके बाद तो भाई मतलब यहाँ पर मॉस्कोव उठाया था। मॉस्कोव मैं सोच रहा था लेट गेम आएगा, बट ये टीम इन्फर्नो वाले कहते हैं ना ना भाई आज लेट गेम नहीं आएगा, लेट गेम के लिए आपको दोबारा नेक्स्ट टूर्नामेंट का वेट करना पड़ेगा। तो ये टूर्नामेंट का जो तीसरा मुकाबला था ना, तीसरे पड़ाव के लिए जो मुकाबला था वो वन साइडेड ही समाप्त हो गया। टीम इन्फर्नो ने एक तरफा पहले मुकाबले में एक तरफा विजय प्राप्ति की, दूसरे मुकाबले में एक तरफा विजय प्राप्ति की, और बड़े प्यार से बिना किसी दिक्कत के। होता है ना कि थोड़ी बहुत हमें कश्मकश देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, चाहे अर्ली गेम की बात करें चाहे मिड गेम की बात करें, लेट गेम तो पहुंचे ही नहीं थे हम, तो उसकी बात नहीं की जा सकती। ओके चलिए, जो अभी तो हमारा जैसे विराम लेने का समय आ रहा है, तो जाते जाते ना एक चीज के उसके ऊपर हम ध्यान दोहराना चाहेंगे। पीटर भाई जो एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं, शैडो ई स्पोर्ट्स, उनका मुकाबला होने ब्रो, वाला है यहाँ पे। मेगाट्रॉन दिख रही है मेरे को, तो शैडो उनके सामने M3CM जो मेगाट्रॉन है, कमाल की ऑर्ग है, नॉर्थ ईस्ट में जानी मानी पॉपुलर ऑर्ग, उनके सामने शैडो ई स्पोर्ट्स जो रिसेंटली आए हैं काफी सारे पॉपुलर क्रिएटर्स जिसमें देखने को मिल रहे थे। पीटर भाई हमारे जाने माने जाने माने। नामचीन प्लेयर जरूर है, मिड लेन में दबदबा दिखाते हैं, लेकिन इस बार चलिए कौन सा रोल खेलते हैं वो भी देखेंगे इस मैच में। तो उनका मुकाबला आएगा, लेकिन उससे पहले ना एक ब्रेक की थोड़ा सा तरफ जाना ब्रेक, पड़ेगा आरवी भाई, क्योंकि फाइनल आ रहा है। बिल्कुल तो फिर आप रेडी हो जाइए दोस्त, पॉपकॉर्न रेडी हो जाइए और भी कुछ चीजें रख लीजिए। लेकिन जाते जाते ना जो हमारे आरवी भाई का एक गैस था वो गैस पूरा करके जाएंगे। वो गैस था एमवीपी, कि एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल वो प्लेयर। लैंड्स ने क्या लिया है। गैस तो चलिए यार आप भी कर सकते हैं, और फाइनल में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी जरूर बताएगा। लेकिन चलिए गैस कीजिए दोस्तों आप भी कि वो एमवीपी किसको मिला होगा, क्योंकि वो आउटप्ले ना कमाल का था। देखिए वो दिख ही रहा है कि किसकी तरफ जा सकता है, कि वहां पे हम सोच रहे थे कि खत्म है, पर वो जो प्योरीफाई है ना दोस्त, मैं वो नजर आपके लेके जाना चाहूंगा कि वो प्योरीफाई ने बचाया था उधर।
सुपर्ब था भाई, सुपर्ब था। इसे कहते हैं ये जैसा हमने प्रेडिक्शन किया था। ओपी प्रेडिक्शन ऑलवेज ब्रो। सो मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग लेंस यहाँ पर एमवीपी साबित हो चुके हैं भाई। कि 10,000 गोल्ड, 13-0-4 का स्कोर। ओवरऑल टोटल किल्स कितने थे टीम की? टोटल 18-19 के कुछ पास हाँ थी आई 18 थिंक। से ऊपर थी हाँ। 19 थी ना? तो भाई 19 में से ऑलमोस्ट 17, कहते हैं 90 टू 93% में कंट्रीब्यूशन था। कहते हैं ना ओमनी प्रेजेंट वाली सिचुएशन हो गई थी। नॉर्मली जो हमें ओमनी प्रेजेंट में वर्ड यूज करता हूँ या तो मेज के लिए होता है या तो फिर हमारे टैंक के लिए होता है, क्योंकि हर टीम फाइट में हमें दिखाई देते हैं। बट इस बार ये एक हमारे गोल्ड लेनर के लिए भाई, हर टीम फाइट में थे। 92% टीम फाइट में उनका पार्टिसिपेशन था, तो वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ था। इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी ज्यादा कम है, क्योंकि ऐसा गोल्ड लेनर हमेशा ना अवॉइड करते हैं फाइट्स को। उनकी कोशिश ये होती है पीछे से आऊं, किल सिक्योर करूं, या फिर जब मेरा फार्म हो जाएगा प्रॉपरली, मैं मिड टू लेट गेम में ही अपना जलवा दिखाऊंगा, उसके पहले नहीं। बट लेंस भाई ने वो समीकरण बदल के रख दिया। अर्ली गेम से उन्होंने एंगेजेस किए, मॉस्को को कंटिन्यूअसली पोक किया, बेचारे को फार्मिंग नहीं करने दी। तो वो जो छोटी-छोटी चीज़ें थी ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गई और बड़े प्यार से वो अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब हो गए। बिल्कुल चलिए वो ओवरऑल रिजल्ट की तरफ जाएँगे, वहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा, क्या कुछ रहा क्योंकि आप देखिए खूबसूरती के साथ वो गोल्ड भी काफ़ी तेज़ी के साथ लिया है। 3 और 4 कमाल का और आप ओवरऑल देख लीजिए 19 की तरफ गए, 4 किल लेने में सिर्फ कामयाब हो पाए। ऑब्जेक्टिव में दिक्कतें हुई, ऑब्जेक्टिव सारे के सारे लेते हुए गए, तो वो दिक्कतें थी। बाकी लोग का केडी भी देख लीजिए, ब्लैक स्टोन कमाल का था पिछले मुकाबले में भी, इस बार चलिए वो सपोर्ट देने में कामयाब ज़रूर रहे। काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनको मौत का सामना करना ही नहीं पड़ा। ब्लैक स्टोन ने जो है सारा का सारा प्रेशर खुद के ऊपर ही ले लिया और सामने सिर्फ बिल्कुल। 4 किल लेने में कामयाब हो पाई। इस बार लग रहा था कि नेक्स्ट गॉन जो टिकेगी, सस्टेन उनके पास था। लग रहा था कि मॉस्को है तो लेट गेम थोड़ा सा कुछ प्रेशर डालेंगे, लेकिन वो प्रेशर आने ही नहीं दिया। उस हिसाब से जो है आ, उनका वो आउटप्ले आता हुआ दिखा, तो उस वजह से जो है ना दिक्कतों में आ गए दोस्त। फाइनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? भाई फाइनल्स देखना बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि दोनों टीम्स बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शैडो स्पोर्ट्स की बात करें या मेगाट्रॉन की बात करें, मेगाट्रॉन के बारे में जिनको नहीं पता भाई, ये असम की ऑर्ग है। बहुत जानी-मानी ऑर्ग है। इनके पास क्रिएटर्स है, इनके पास प्लेयर्स है। सिर्फ मोबा तक से लिमिटेड नहीं है। इनका मोबा, बीजीएमआई, एफएफ तीनों जगह इनका दबदबा चलता है। ठीक है, मल्टीपल मल्टीपल टाइटल्स टाइटल होल्ड करते हैं। तो मेगाट्रॉन वर्सेस शैडो स्पोर्ट्स, एक कांटे की टक्कर होने वाली दोनों टीम यहाँ पर अपने अस्तित्व के लिए खेलती हुई नजर आएंगी। तो कुछ ही देर में ये मुकाबला शुरू होगा, तब तक आप अपना पॉपकॉर्न ले लीजिए, कॉफी ले लीजिए। ठंड अगर आप मैं जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ, हमारे इधर बहुत ठंड है, तो अगर आप ठंडे वाले एरिया में तो हॉट चॉकलेट ले लीजिए, क्योंकि मुकाबला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पंजाब वाले ठीक है? को और चलिए फटाफट कुछ और लेते हैं, चलिए उसके बारे में खैर बात नहीं करेंगे। लस्सी नहीं लेते हैं हर टाइम पंजाब वाले भाई। लस्सी नहीं किसने होती भाई, बोला है ये? ठंडी के टाइम पे गर्म होने के लिए लस्सी नहीं लगती है। खैर हम तो डाई स्टेट वाले हैं, छोड़ दीजिए, चलिए हम लोग ब्रेक की तरफ ही जाएँगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मुकाबले में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।
नमस्ते एवरीवन, बैक अगेन रेल्म ऑफ राइवल्स के साथ हम आए हैं फर्स्ट मैच के तरह। ये होगी ग्रैंड फाइनल्स। इसी के साथ आज हमारी टीम्स है, टीम शैडो ई स्पोर्ट्स वर्सेस टीम C3 मेराकी, मेगाट्रॉन C3 मेराकी। सो देखते हैं क्या होगा। आज हम आपका कास्टर मैं पीछे एंड इसके आज हमारे साथ SM कास्टर है। हेलो SM, कैसे हो आप? हेलो, एकदम बढ़िया। और चलिए, जैसे आपने आज की टीम्स के नेम बता दिए तो मज़ा तो भरपूर आने वाला है, क्योंकि जाने माने टीम्स है। शैडो ई स्पोर्ट्स Definitely. एंड मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स एंड C3 मिरा की जो मर्जर है, जो C3 मिरा हाँ, की एंड मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स, दोनों टीम कमाल की। नॉर्थ ईस्ट में कमाल का इन्होंने, मतलब वो कहते हैं ना कि ये नॉर्थ ईस्ट की टीम नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट का इमोशन है एक तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से मोबा हाँ, 5v5 भी नॉर्थ ईस्ट के लिए सिर्फ एक गेम नहीं है, वो इमोशन है जो अभी जाके पूरे पैन इंडिया में बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसमें सहयोग रहता है HNT ई स्पोर्ट्स और काफ़ी सारे ऑर्ग्स हैं जो इवेंट्स कर रहे हैं बैक टू बैक। अभी के लिए हम इनका इवेंट कर रहे हैं तो इनके बारे में बात ज़रूर करेंगे। पर आज के मैच पे हम बात करें तो क्या लग रहा है कि शैडो ई स्पोर्ट्स एंड उनके सामने मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स एंड C3 मिरा की जो टीम है, क्या स्कोर रहेगा? प्रेडिक्ट क्या करेंगे आप? आज मुझे 5 के 5 मैच देखना है, 3-2, क्योंकि यार 3-2। बेस्ट ऑफ 5 मैचेस है एंड इसके ऊपर दोनों के दोनों काफी अच्छे से खेले। पूरा सीजन जो रेल्म ऑफ राइवल्स का है उन्होंने देखा है, तो मेरा प्रेडिक्शन होगा 3-2 गोइंग टुवर्ड्स शैडो ई स्पोर्ट्स। ओके, चलिए शैडो ई स्पोर्ट्स। वैसे इनके मैच अनफॉर्चुनेटली मैंने देखे नहीं थे, बट वो जो प्लेयर्स देख रहे थे ना, जैसे C3 मिरा की जो मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स है, उनके प्लेयर्स का मैंने देखा हुआ है, क्योंकि जो रिसेंटली मैच हुए थे शैडो ई स्पोर्ट्स के, मैं फर्स्ट टाइम कास्ट करने जा रहा हूँ। और इंस्टा प्रोफाइल काफ़ी कमाल की है, वो देखी हुई है हमने। और जो वहाँ पे प्लेयर्स है उसका गेम प्ले यार मैं देखना काफ़ी पसंद करूँगा। हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त भी है पीटर, काफ़ी टाइम बाद जो है उनको खेलते हुए देखूंगा मैं। हालांकि काफ़ी समय पहले जो लाइनअप बना उसमें हुआ, तब देखा था मैंने पीटर को शैडो ई स्पोर्ट्स लाइनअप में, पर आज उनको खेलते हुए देखने में आफ्टर लॉन्ग टाइम मज़ा आने वाला है। लास्ट जो उनका मैच मैंने कास्ट किया था, देखा था, वो था व्हाइट फेदर्स आर्केडिया का जो फिनाले था। उसके बाद हाँ, मैचेस नहीं देखे हैं, तो चलिए फाइनली जैसे आपका कमबैक हुआ है वैसे भी उनका कमबैक होता हुआ दिख रहा है, तो मज़ा तो भरपूर आने वाला है, क्योंकि कमबैक मैच है। पर कौन वो लेके जाएगा टाइटल, वो तो ये बेस्ट ऑफ 5 के बाद ही पता चलेगा। यप। सो देखते हैं, ड्राफ्ट के साथ हम बढ़ेंगे थोड़ी देर पे ही एंड थोड़ा बहुत हम मेराकी ई स्पोर्ट्स के सॉरी मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो टीम जो है अभी तक आई है, काफी टैलेंटेड है। हमने देखा है कि सुपर IMM टिग्रियल पे काफी अच्छा फ्लिकर आर्ट्स मारते हैं। ऐसा भी है कि वो पूरी टीम को पकड़ लेते हैं एंड उनका जो कमबैक जो पोटेंशियल रहता है उनका हाथ पे काफी अच्छा है। तो मुझे आज देखना है वो शैडो esports के अगेंस्ट कैसे करते हैं। दोनों टीम बहुत इक्वल है, दोनों के दोनों टीम काफी टैलेंटेड है, बट मोबाइल लेजेंड्स 5v5 तो एक विजेता होगा और देखते हैं आज क्या है। बट इसी के साथ और एक अनाउंसमेंट है, हमारा जो थर्ड प्लेस है वो जो अभी हो चुका था थोड़ी देर पहले, वो होगा टीम इन्फर्नो। सो आज हमें पता चलेगा फर्स्ट प्लेस कौन लेगा, सेकंड प्लेस कौन लेगा। सो देखते हैं क्या होगा। जबलपुर थर्ड प्लेस जो है वो टीम इन्फर्नो, फोर्थ प्लेस जो है टीम नेक्सगॉन, वो लेके गए थे। लेकिन आपने जो सुपर टीम के बारे में बात की ना, उसके ऊपर मैं आना चाहूंगा। जैसे हम बात करते हैं मोबा 5v5 ई स्पोर्ट्स की, तो वो जो रोमर्स होते हैं ना, उनके बारे में चर्चा हो ही जाती है। कहीं किसी भी मैच में बात करें, आप ऐसे 12 की लाइनअप की बात करें या फिर आप गॉड लाइक के लाइनअप की बात करें, उनके रोमर भी इस तरीके के जिनकी चर्चा हो ही जाती है अक्सर, हम ना करने की कोशिश करें तो भी, क्योंकि उनका एक सिग्नेचर हीरो रहता ही है। जैसे आप गॉड लाइक की बात कर ले तो आर्ट जो है वो ग्रॉक खेलना पसंद करते हैं। जैसे सुपर टीम की Yeah. बात की तो जो उनके पास टिग्रियल आ जाता है, तो फिर जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि वो इम्प्लोजन का जिस तरीके से प्रयोग करते हैं, वो काफ़ी काबिल तारीफ होता है। तो आज देखेंगे कि किस तरीके से वो कर पाते हैं प्रयोग। और शैडो ई स्पोर्ट्स जो है वो लाइनअप आएगी, तो ट्विटर के अलावा कौन कौन खेल रहे हैं वो भी हम जरूर देखेंगे। तो जैसे आपने कभी इससे पहले इनका मैच कास्ट किया? शैडो esports से आई थिंक एक बार किया है उन्होंने, लाइक काफी जल्दी मैच खत्म किया, तो ज्यादा कुछ देखने नहीं मिला उनके साइड क्योंकि से। उनमें वो काबिलियत है। यस। एंड उसी के साथ टीम मेगाट्रॉन esports, उनका वो थोड़ा बहुत ड्रैग करते हैं मैच को। हमें लाइक वी हैव लाइक डिफरेंस की एक साइड पे जल्दी जल्दी खत्म करना है, थोड़ा बहुत अर्ली गेम टीम कॉम्पोजिशन लेते हैं, दूसरी साइड थोड़ा सोच समझ के मिड टू लेट दिखती है। तो वो डिफरेंस मुझे आज देखना है लैंड ऑफ डॉन में कैसे दिखने वाला है। बिल्कुल। चलिए, ये एक अच्छी चीज़ आपने नोट करी कि अब दोनों टीम की बात करें तो एक अग्रेसिव होके खेलना पसंद करती है,
जैसे हाँ। शैडो स्पोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जितना हो सके अर्ली गेम की तरफ खत्म करने की कोशिश करें। और आप बात कर रहे हैं मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स, वो डिफेंसिव की तरफ जाना चाहते हैं। सुपर टीम जो है वो लेट गेम लेके जाने की प्रायोरिटी रखते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जब लेट आएगा, जब मौका बनेगा, जब मोमेंटम बनेगा, तब गेम को खत्म किया जाए। तो हम्म। ये इस बार मजा आने वाला है कि एक तरफ वो सोच होगी कि चलिए जल्दी गेम खत्म की जाए, एक तरफ वो डिफेंसिव की तरफ जाएंगे, या तो फिर हो सकता है आज जो है एक न्यूट्रल रास्ता निकालेगी। सोचेंगे कि चलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए, मिड की तरफ लेके आइए, थोड़ा सा हम एडजस्ट करते, थोड़ा सा लेट करते हैं, तो मिड की तरफ गेम खत्म होते हुए दिखे। और किसकी तरफ खत्म होते हुए दिखेंगे वो देखना जरूर रहेगा। पर अब तक ये दोनों टीम यहाँ तक पहुंची है, मतलब अनडिफिटेड रही होगी। डेफिनेटली उन्होंने जो हमारा जो लीडर बोर्ड था का फर्स्ट और सेकंड पोजीशन लेते हुए अभी तक आए हुए हैं। एंड इसी के साथ और एक टॉपिक है जो मुझे आज बात करना था, DHS जो डीमन हंटर स्वॉर्ड है। अभी उसका जो थोड़ा बहुत उन्हें बफ मिला है एंड जी। हीरोज जैसे क्लॉड कैरी वापस आ चुका है। क्या आज हमें वो दिखेगा कि फर्स्ट मैच पे कि हमें क्लॉड पिक हो सकता है या नहीं? जैसे ये आपने बात की डीएचएस के बारे में, तो जैसे अभी इवेंट चल रहा है मोबा 5v5 का, जो अपर वर्जन है कह लीजिए, या फिर सिमिलर वर्जन है, जो ग्लोबल वर्जन है एमएलबीबी, उसका सबसे बड़ा इवेंट कहा जाता है जो एम सीरीज चैंपियनशिप, जो M7 चल रहा है, वहाँ पे क्लॉड जैसे आपने बात की ज़्यादा पिक होते हुए दिखते हैं, कैरी जो है पिक होते हुए दिखते हैं, फिर वो जो ट्रिनिटी बिल्ड है उसकी तरफ जाते हुए दिखते हैं। ताकि क्या है, हाँ। जैसे वो कोरिजन स्काइज के साथ जाते हैं, फिर डीमन हंटर स्क्वाड के साथ जाते हैं, तो वो बिल्ड पहली प्रायोरिटी पे रखते हैं ताकि वो डैमेज भी आने लगता है। तो उसी तरीके से क्या आज क्लॉट देखेगा या फिर कैरी, हमने देखा इससे पहले वाला मैच में और भाई थे, तो हमने कैरी हम्म। का गेम प्ले देखा, पर वो जो रिजल्ट है वो कैरी से तब्दील नहीं कर पा रहे थे। तो इस मैच में क्या वो हो पाएगा, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे थे, ये जो बफ मिले रिसेंटली आइटम्स को कुछ, तो उस बदौलत जो है काफी सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कुछ में चेंजेस हुए, टैंक की बात करें, वो तो काफी समय पहले थोड़ा सा आ चुका था वैसे। जैसे डोमिनेंट्स के हाँ। पास क्या रहता था कि एंटी हील्ड भी है, साथ में अटैक स्पीड रिड्यूस भी रहता था, तो वो दो अलग अलग चीजें कर दी। तो ऐसे काफी सारी चीजें चेंजेस हुई है, उसको किस तरीके से हम बात कर रहे थे कि इंडियन टीम्स जो है वो अडॉप्ट करती है। लेकिन आज तो फिनाले है, और ये टीम जो है एक्सपीरियंस लेके चल रहा है, जैसे आपने बताया कि आपने काज किया शैडो ई स्पोर्ट्स का, पर कितने जल्दी खत्म कर दिया कि आपको समझ ही नहीं आया कि कब क्या कर रहे हैं। यस। एंड ओके। इसी के साथ ड्राफ्ट हाजिर। देखते हैं क्या होगा आज। शैडो स्कोर्स के पास थोड़ा बहुत एडवांटेज है ब्लू साइड पे होते हुए, तो आई थिंक हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत यूजोंग, लापू लापू और मे बी अब मिनट और जैसे पिक्स देखने मिलेंगे। बट बैन की तरफ बात करते हैं, ग्रॉक मुझे लगता है कि आज यहाँ पर वो एक डेफिनेट बैन दिखेगा कि वो आज खुला हो ही नहीं सकता। चलिए, सबसे पहले आप ग्रॉक की बात कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी वही है कि सुपर एम ग्रॉक भी वो खेलेंगे, यस। कलिया भी वही खेलेंगे, तो उनकी तरफ जो है वो जाते हुए दिख रहे हैं। पहला बैन देख लिया ग्रॉक जी, बिल्कुल एक लाजमी बैन बनता है, क्योंकि वो टेक्टोनिक चार्ज जो है वो प्रयोग, फिर उसके साथ जो वॉल का एग्जीक्यूशन अगर बेहतरीन तरीके से करते हैं तो दिक्कतें ज़्यादा ज़रूर देगा वो, उस हिसाब से ज़रूर भी है। और बाकी यहाँ पे ये दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट में खेली है, तो वो जानती है कि कौन क्या खेलना पसंद करेगा। जैसे हम देख रहे हैं पिछले मैच में भी जूसिन या तो पिक हो रहा है या तो बैन हो रहा है, इस मैच में भी यस। प्रायोरिटी वही चल रही है कि जूसिन जो है वो बैन कर दीजिए, क्योंकि ये को डैमेज भी दे सकती है, और क्लोज रेंज जाने की कोशिश करेंगे तो वो क्रिम्सन बीकन से पीछे हटने के लिए भी कामयाब हो सकता है उनका। और जो फर्स्ट किल से लैंटर्न के साथ आपको उछल कुछ करवाते रहते हैं, वो भी दिक्कत ज़रूर देती है। एंड इसी के साथ वो ऐसा हीरो है कि वो आपको कंफर्टेबल पोजीशन से निकाल के तुम्हें एक ऐसा पोजीशन में डालते हैं कि तुम्हें वापस से रिपोजिशन करना पड़ेगा, तुम्हें वापस से सोचना पड़ेगा कि मैं आगे जाके डैमेज दे सकता है या नहीं। तो आई थिंक वो बैन करते हुए वो काफी एक अच्छा डिसीजन है टीम मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स की तरह। बट आई थिंक आज हमें फर्स्ट फेज में काफी टैंकीनेस दिखने वाला है मेज की तरफ से। ये एक एक थ्रेट है। बट वैलेंटीना एक ऐसा पिक है जो आई थिंक मैंने एम सीरीज में भी काफी देखा है, तो मे बी और मे बी नॉट हमें आज देखने मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपके अपोनेंट जो है वो कितने ऐसे हीरोज पिक करते हैं जिनका अल्टीमेट आप यूज करके उन्हीं के ऊपर प्रयोग कर पाए। और हिल्डा जो है, हम देख रहे हैं कि एक रिस्पेक्टेड बैन आता हुआ दिख रहा है, तो ये वही इरिस्पेक्टेड बैन है तो अच्छा है। और यूजोंग भी चलिए वो आता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि यूजोंग आप कोई भी इवेंट देख लीजिए, आप इंडियन टीम्स की बात करें जो रिसेंटली जो इवेंट हुए हैं, या तो फिर अभी जो वर्ल्ड सीरीज चल रही है, वहां पे भी एक रिस्पेक्टेड बैन आता हुआ दिखता है। क्योंकि इनका जो स्पेल वैम्प रहता है वो कमाल का रहता है, क्योंकि खुद हील होते रहते हैं और आपकी एचपी डाउन करता रहता है। डेफिनेटली।
एंड इसी के साथ उनका जो डाइवन पोटेंशियल है, अगर टैंक के साथ अगर पैर अप करते हो तो आई गेस तुम्हें रोकने के लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए, तो उसी के वजह से बैन एंड यप ग्रॉक आ गया है बैन सेक्शन में। टीम शैडो स्पोर्ट्स काफी टैंकीनेस को प्रायोरिटाइज किया है, एंड इसी के साथ आई थिंक असासिन का पिक हमें देखने मिलेगा। ये कंपोजिशन उस तरीके का ये क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, सिचुएशन जो है उस तरीके की बनाते हुए दिख रहे हैं। और ये अच्छी चीज़ है, जैसे आपने पहले के मैचेस नोट किए थे तो उसके हिसाब से इनका जो टारगेट है ना वो हमें दिख रहा है। जैसे हर एक इवेंट में हम बात करते हैं, मोबा 5v5 के जो रिसेंटली इवेंट हुए, मैजिक शोडाउन सीजन 2 की तरफ हम चले तो वहाँ पे एक प्लेयर के पीछे जाते हुए दिखते हैं वो, कि एक प्लेयर का हीरो पूल जो है वो जितना हो सके आप ट्राई कर दीजिए कि आउट कर दीजिए, क्योंकि वो ले गया। तो इस तरीके यहाँ के पहले जो 3 बैन है ना वो दिखा रहे हैं कि वो सुपर एम के लिए कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं यहाँ पे। पता है कि और सारे हीरोज हैं जो मेटा में है अभी के लिए, सोरा आ सकता है, वाइसिस की तरफ जा सकते हैं, हाया की तरफ जा सकते हैं, पर प्रायोरिटी अभी के लिए ये सुपर एम की तरफ जा रहे हैं। और लास्ट ज़्यादा ये सोच रहे थे शायद, उस चक्कर में इन्होंने नहीं जी चलिए सोरा जो है वो बैन कर दिया, मैं सोचा मिस किया शायद। आई थिंक टीम मेगाट्रॉन स्पोर्ट्स वो गैम्बल नहीं देना चाहती है कि वो सोरा ओपन रखे। मे बी नेक्स्ट मैच में थोड़ा देख सकते हैं अगर कि अगर मेगाट्रॉन स्पोर्ट्स सोरा उठा सकते हैं नहीं, बट इसी के साथ फर्स्ट पिक आ चुका है। तो काफी मेन टैंकी टैंकी हीरोज, डैमेज वाले हीरोज जा चुके हैं बैन सेक्शन में, तो दैट लीड्स टू गटोट काचा काफी अच्छा पिक है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर थोड़ा चांस दिख रहा है मुझे ईव या फारसा का पैर अप होने का यहाँ पर। देखिए सामने की तरफ से वो पिक करते हैं तो एक वो उनको पता रहेगा कि जब टीम फाइट का बात आएगा तब गटोट जो है वो डाइव इन करते हुए दिखेंगे, पर इनके पास वो प्रायोरिटी है कि पहले चलिए आपके पास अब मौका है तो ईव या फारसा आप ले लीजिए, क्योंकि ईव या फारसा में डैमेज अच्छा आता है। जैसे आरडब्ल्यूएम जब पॉपड अप होता है तो स्लो जरूर कर देता है, आपको टाइम लगता है, पर आपके पास ऐसे हीरोज है जो डाइव इन करके सीधा चले जाए तब दिक्कत दे सकता है। क्योंकि ये हीरोज ऐसे हैं, आप फारसा की बात कर लीजिए, ईवी की बात कर लीजिए, जब अल्टीमेट का यूज करते हैं तब उनको एक जगह पे खड़ा रहना पड़ता है, वो पोजीशन जो है उनकी फिक्स हो जाती है। तो उस वजह से उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास अगर पहुंच गए, जैसे लेंस है वो डाइविंग करके आ गए या फिर गटोट है वो पहुंच गए, तो दिक्कत तब आ सकती है। सो डेफिनेटली देखते हैं क्या होगा। एक जगह पे टीम मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स हमें देखने मिल रहा है वाईएसएस और एस्मेराल्डा। यहाँ पर थोड़ा बहुत गोल लेन का चांसेस भी हो सकता है एस्मेराल्डा का, तो देखते हैं क्या करेंगे टू मैच अप द एनर्जी ऑफ वाईएसएस। क्लासिक पिक फ्रॉम टीम शैडो ई स्पोर्ट्स। जल्द से जल्द उन्हें पता है कि लैंडस्लॉट लेना है, उन्हें सीसी लेना है, सीसी ओपन रख के गटुट काचा को रूम पे डाल दिया। तो यहाँ पर आई थिंक एस्मेराल्डा को थोड़ा दिक्कत होगी अपने लेन पे 1v1 सिचुएशन पे, बट इसी के साथ वाईएसएस उसको बहुत स्नोबॉल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर वो स्नोबॉल करने नहीं मिलेगा तो काफी ओह, प्रॉब्लम है। बट इसी के साथ ये जो पिक है ना साइक्लॉप्स, उनका क्लासिक पिक है, उनका सिग्नेचर मूव है हैनी का। तो और ऐसे पिक्स लेते हैं अभी टिग्रिल के साथ वो साइक्लॉप्स पेयर अप करते हैं, तो ये गेम प्ले काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है ऐसे। साइक्लॉप्स अगर आप ई स्पोर्ट्स के बाहर बात करें, जो इंडियन रैंकिंग सिस्टम है, चाहे आप बंगाल सर्वर की बात करें चाहे मुंबई सर्वर की बात करें, तो हाई रैंक्स जो ये प्लेयर्स आते हैं जिस रैंक से, वहाँ पे ना ये पसंद करते हैं खेलना, जो रिसेंटली वो जो डैमेज आता है उसकी वजह से। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वो जो सेकंड स्किल से इनको बफ मिलता है, स्पीड भी मिलती है, तो चेस करते हुए कई हीरो भी डाउन होते हैं, तो उस वजह से ये पोक भी करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पता है कि किस तरीके से टीज करना है, तो वो परेशानी क्रिएट करते हैं उस लिए। तो ये उस हिसाब से पिक है। और वो चलिए ब्रस्ट डैमेज आता है, वो रफ वेव के साथ दिक्कतें होती है, और पेट्रीफाई के साथ आ गए तो सोने पे सुहागा। उस वजह से कदीता जो है वो चाहेंगे कि ना दिया जाए जल्द से जल्द, तो वो उन्होंने बैन कर दिया है नहीं। ये कमाल का खेलते हैं, लेकिन अभी के लिए आ, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एस्मा गई है, तो या तो हो सकता है कि वो एक ऑप्शन सुने लापू की तरफ, नहीं लापू तो नहीं जाएंगे। लापू जो है ये सोचे कि मे बी अगर गोल्ड पे बेचते हैं तो इनके पास वो है, पर बाकी देखते हैं कि कौन से की तरफ जाते हैं, क्योंकि हाइलोस जो है वो बैन में डाल दिया है ताकि वो स्पीड जो मिले वो सामने की टीम की तरफ ना आ पाए।
बट इसी के साथ मुझे देखना था टीम मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स की वो भी अपना टैंक हीरो उठा दे, क्योंकि अब अभी हमें गटोट काचा मिल चुका है और शैडो ई-स्पोर्ट्स की तरह तो थोड़ा बहुत मेज का आराम से भी उठा सकते थे, बट वो केस नहीं था। उन्हें टैंक थोड़ा स्लो करते हुए दिखते। तो इसी के साथ हाईलॉस बैन हो चुका है, मिनटोर का चांस तो लग रहा है मेरे को यहाँ पर फ्रॉम शैडो ई-स्पोर्ट्स। so देखते हैं वो है या नहीं, बट इसी के साथ और क्या बैन कर सकते हैं हम। चलिए इन्होंने ये लूनक्स की तरफ गए हैं क्योंकि अब तो मे बी अगले हीरोज जो है वो एक अच्छा सा टैंक ही आएगा, क्योंकि लूनक्स ऐसे है जो टैंक गलाने की क्षमता रखता है। पर अगर इस तरफ भी टैंक की पिक की तरफ जाना ही है तो कैरी की तरफ जा सकते हैं, पर एक रिस्पेक्टेड बैन है तो शायद अभी भी सोचे कि मिनोटोर बैन कर दीजिए, क्योंकि आप अभी जा ही रहे हैं सुपर इन की तरफ। तो मिनोटोर की तरफ सोच सकते हैं, या तो फिर आप सोच लीजिए कि टिग्रिल की तरफ टिग्रिल। जाते हैं तो उतना क्या वो पकड़ पाएंगे, क्योंकि इनके पास डैश रहता है। और सीसी जो है वो भी कट एंड कॉल के साथ वो परेशानी टीज करती रहती है, थोड़ा सा डिस्टेंस से खेलेंगे तो एक फ्लीगर अल्ट अच्छे से यूज कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर टीम एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। खलीद। ओह ओके, थोड़ा बहुत अलग रूट लिया है टीम शैडो ई स्पोर्ट्स ने यहाँ पर खलीद को बैन करते हुए। थोड़ा एक्सपेक्टेड बैन था यहाँ पर, डिस्पाइट हम जैसे देख रहे हैं कि स्टार्टिंग से वो लोग काफी टैंकीनेस को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा टैंक हो सकता है। वाईएसएस के साथ पैरा पर डेफिनेटली एक अच्छा है, उनका जो सीसी कॉम्बो है वो जाके कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर लेट्स नॉट फॉरगेट अभी एस्मेरल्डा का भी डैमेज यहाँ पर पड़ने का चांसेस है, बट थोड़ा बहुत लैक कर रहे हैं क्राउड कंट्रोल के बारे में बात करें तो टीम मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स। सो आई थिंक यहाँ पर वो जो टैंक है और उनका जो ईएक्सपी लेनर है वो प्रायोरिटाइज हो जाएगा उसमें। बट इसी के साथ क्या हमें आज ओह। मार्क्समैन देखने मिलेगा? एंड उसका आंसर हाँ। चलिए मॉस्को पिक जरूर किया है, तो इनके सामने क्या एक मार्समैन की तरफ जाएंगे या तो फिर एक फाइटर की तरफ वो सोच के जहन में चल रहा है। अगर जाते हैं मार्समैन अच्छा रहेगा, अगर दूर से मारने वाला मार्समैन लेते हैं, क्योंकि मॉस्को के पास वो क्षमता रहती है कि नजदीक गए तो दिक्कतों में फंस सकते हैं, और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा तब दिक्कत आ सकती है। लेकिन इससे पहले के मैच में हम देख रहे थे कि हैरिथ के साथ ना मॉस्को को हम्म। आउटप्ले कर दिया था टीम इन्फर्नो ने। तो वो कमाल का था, जो कि लेंस खेल रहे थे वो बेहतरीन था। लेकिन इस बार चलिए अब क्लाउड की बात कर रहे थे तो क्लाउड ज़रूर चलिए आए हैं। तो अब डीएचएस के बफ के बारे में खूब बताया तो वो दिखने को भी मिलेगा अब तो। एंड इसी के साथ फारसा फारसा का एडिशन वो गटआउट का सा पिक के साथ मुझे दिखा कि आज हमें फारसा दिखने मिलेगा। तो शैडो स्पोर्ट्स के बारे में बात किए तो उनके पास रेंज है, उनके ओह। पास एओई है। पर टीम मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स उनका क्लासिक पिक आ चुका है, सुपर आईएमएम। उन्हें पता है यहाँ पर उनके चांसेस ज्यादा है सिंस टिग्रियल को बैन नहीं किया है। तो डेफिनेटली ये एक मैच वो 1-1 मैच काफी अच्छा जाने वाला है। देखिए आखिरी पिक के बारे में जो सुपर आईएमएम है उनके पिक के बारे में ये भी मैं कहना चाहूंगा, क्या सेडो ई स्पोर्ट्स जो है वो मजबूर कर रहे थे उनको कि आप ठिगरिल की तरफ ही जाइए, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो बैन करते हैं, आप वो खेलना पसंद करते हैं तो वो ऑप्शन हमने ओपन रखा है। Oh, definitely. So that is definitely interesting. बट इसी के साथ हमें मैप मिल चुका है, ब्रोकन वॉल्स होगा। यहाँ पर अगर ग्रासलैंड मिला रहता तो टिग्रियल को थोड़ा काफी इजी टाइम मिलता, बट इसी के साथ लैंड ऑफ डॉन। चलिए मैच देखते हैं। बिल्कुल चलिए, तो दोनों टीम लैंड ऑफ डाउन में आ चुकी है और जा चुकी है फार्मिंग की तरफ। सिक्योर कर लेंगे, पर्पल की तरफ गए हैं वाइसेस, और यहाँ पे ऑरेंज से शुरुआत करते हुए दिखेंगे लैंसलॉट जो है, और लीथो की तरफ मून आगे गए हैं, क्या दिक्कत वो ऊपर सकते हैं। लेकिन विजन देने के लिए गए थे, क्योंकि वो जो हल्का सा गोल्ड है वो मिलता रहे विजन से, उसकी बदौलत वो गए। लेकिन लीथो वंडर सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। आईएम एक्सपेंसिव, उनको दिक्कतें होगी नहीं। लेकिन सुपर आईएमएम वो आगे आए थे, उनको पाजी जो है वो पीछे हटने के लिए मजबूर जरूर कर रहे थे। विग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मॉस्को तैयार है वहां पे। शुरुआती दौर है, पता है, हल्का सा आप आगे छोड़ दीजिए, और ये जो वेव आ रही है और शुरुआती 5 मिनट में वो गोल्ड का फायदा जो है वो लेते रहिए। तो यहाँ पर आई थिंक हमारा जो फर्स्ट ब्लड होने वाला है वो थोड़ा टोटल के अराउंड देखने मिलेगा। काफी स्लो रोटेशन है उन्हें।
दोनों को टीम्स पता है कि उनका जो मिड टू लेट गेम है वो स्ट्रांग है। अर्ली गेम ज़्यादा फार्सा के हाथ पे होगा, बट इसी के साथ लांसलॉट जो है टॉप लेन चले चुके हैं। थोड़ा बहुत फार्म कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रुक रहे हैं। यहाँ पर विजन मिल रहा है जेनी को, वो काफ़ी अच्छा उनका रोटेशन चल रहा है। सो क्या हमें बॉट लेन में फर्स्ट ब्लड दिखेगा? हाँ चलिए, गैंग करते हुए देख तो जरूर थे, लेकिन अभी के लिए वो मिड की तरफ जाएंगे क्योंकि टर्टल का आगमन होने वाला, तो टर्टल डांस करने के लिए जरूर आएंगे। तो मे बी फर्स्ट ब्लड का हम जो इंतजार कर रहे हैं वो टर्टल के आसपास आता हुआ दिखे, क्योंकि टर्टल चले आ चुका है, लेकिन विंक और उनके सामने चिंग जो है वो आपस में लड़ाई करते हुए जरूर दिख रहे थे। लेकिन वो उनके पास क्षमता रहती है सेकंड स्किल से बचने की, और इनके पास टन की क्षमता रहती है, तो बचने में कामयाब जरूर हुए। और टीम SDES यानी कि सैडो ई स्पोर्ट्स जो है वो टर्टल की तरफ गए हैं, फेदर स्ट्राइक का इस्तेमाल करके रोकना चाहेंगे, लेकिन जैनी आगे आ चुके हैं, उनकी तरफ मदद करने के लिए टीम आई है। और उसी के साथ साथ रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करके वो मॉस्को भी आ जाएंगे। टर्टल से क्योर करने में कामयाब हुए। किस कीमत पे? आपने पाजी को जो है गवाया, एक हीरो जरूर गवाया, बट टर्टल मिला तो एक तरीके से बराबरी का ही रहेगा, क्योंकि टर्टल से आपको जो बफ मिलता है 300 गोल्ड का, वो प्लेयर मार के उन्होंने भी ले लिया है कहीं ना कहीं उसके आसपास का, और एक और जोड़ दीजिए उसमें। ओ बाप रे, काफी अग्रेसिव है यहाँ पर टीम मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स। उन्हें पता है कि उनके पास एडवांटेज है, बट इसी के साथ थोड़ा बहुत रिसोर्सेज लेते हुए अपने हाथ पे। ओके, मिड लेन में थोड़ा बहुत डैमेज है लॉर्ड के हाथ से, आई थिंक है नहीं, ओवर एक्सटेंशन के वजह से वहां पर जाएंगे वापस बेस। चलिए थोड़ा सा इस बार सैडो स्पोर्ट्स आप बात कर रहे थे, जैसे वो अग्रेशन के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो वो अग्रेशन किस तरफ ही दिख रहे थे, बट वो हमने देखा कि फिर सामने जो है इस बार जो है मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स इस तरीके की टीम है कि उनको भी पता है कि किस तरीके से गेम को दबोचना है। तो हम देख रहे हैं कि ये अग्रेशन के सामने वो भी उस तरीके का जवाब जो है देते हुए दिख रहे थे, जैसे अग्रेशन के साथ गए, टर्टल सिक्योर करने में कामयाब, बट इंस्टेंटली जो है वहां पे सीसी को डाउन करने में कामयाब हो गए। थोड़ा गेम आगे गया, फिर हमने देखा कि साइक्लॉप्स जो है वो भी डाउन करने में कामयाब हो गए। तो खूबसूरती के साथ गेम चल रहा है, और चलिए अब वापस भी आए हैं, तो अब ये देखना रहेगा कि जो अग्रेशन है उसके ऊपर वो काबू भी रखेंगे, क्योंकि पता है अब दिक्कत हो सकती है। और चिलेस्टा का इस्तेमाल करके इंस्टेंटली वो जो वेव आ रही है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे हैनी को रोकने के लिए प्रयास अच्छा था, लेकिन ली तो वंडर सिक्योर करने में वापस कामयाब हो जाएंगे, उसमें दिक्कतें हुई नहीं है। बट विंग के ऊपर परेशानी क्या आ सकती है, और प्योरीफाई उनके पास है, तो इस्तेमाल करके पीछे जरूर आए हैं। इंस्टेंटली टीम उनको बैकअप के लिए आ जरूर जाएगी, मोन कोशिश कर रहे हैं, चिंग आगे जाते हुए सही समय पे पीछे भी जा चुके हैं। इस बार पता है कि अग्रेसिव भी जाना है और किस समय पे पीछे हट के डिफेंसिव भी आना है, तो ये खूबसूरत दोनों टीम की तरफ से डिफेंसिव और अग्रेसिव गेम प्ले की तरफ जाते हुए। और टर्टल का जब स्पॉन होगा तो वापस से वो फाइट होती हुई जरूर दिखेगी। तो दोनों के दोनों टैंक्स काफी अच्छे से विजन दे रहे हैं, वो एक अच्छा है। एंड यहाँ पर थोड़ा EXP का भी वापस से थोड़ा बहुत बैटल होने वाला है। टर्टल आ चुका है, ये दूसरा टर्टल होगा, बट इसी के साथ यहाँ पर टीम्स जो अभी कैचअप हो गए। यहाँ पर हम देखेंगे कि सुपर IMM लेवल 4 हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत डैमेज दिख सकता है, बट ओके फारसा। वो कोशिश वजी कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या, इस बार रुकने में पीछे कामयाब जरूर हुए थे। बात करिए टर्टल जरूर निकालने में कामयाब हो जाएगा, टर्टल के साथ साथ इस बार किल भी निकालने में कामयाब हुए। टीम सैडो ई स्पोर्ट्स तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जेनी को डाउन करने में डबल सिक्योर करेगा लैंसलॉट। एक्सपेंसिव को भी क्या डाउन कर सकते हैं, कोशिश वो रहनी चाहिए। मून आगे जाते हुए, लेकिन क्या बचने में कामयाब होंगे? आगे की तरफ जरूर गए हैं वो सेकंड स्किल का प्रयोग, लेकिन इतनी तेजी थी उनके पास, स्पीड थी, स्फूर्ति थी, तो बचने में कामयाब हुए। देखते ही देखते इस बार चलिए ट्रेड जो है टीम सैडो ई स्पोर्ट्स के लिए, उनके फैंस के लिए कमाल का रहा, क्योंकि वो किल भी आए और किल के साथ साथ टर्टल भी आए, तो उस बदौलत जो है हल्का सा उनको फायदा भी मिलेगा गोल्ड की तरफ। शुरुआती गेम में तो उतना कुछ फर्क है नहीं, बट वो हल्का फायदा तो जरूर है। डेफिनेटली यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि आई थिंक सीसी के पास वो एक्स्ट्रा एडवांटेज है एस्मेराल्डा के अगेंस्ट, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो रही है वहां पर। बट टॉप लेन में देखते हैं क्या होगा। दोनों के दोनों टैंक्स, स्पेशली मून, काफी एक सुपर IMM को ऐसे पोजीशन में डाल रही है कि उन्हें रिवील करना पड़ रहा है अपने आप को, एंड उन्हें लाइक सेट देखने नहीं हो रहा है। बट ओके, लैंसलॉट इसके साथ जानते जाते हुए चलिए हैनी को भी डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं बैन 14, और वापस चलिए बफ चुराने के लिए जा रहे हैं। वो कोशिश चल रही है, पाजी कोशिश करते हुए पीछे हटने के लिए मजबूर कर देंगे उनको।
और इसी के साथ ये वेव जरूर जाना चाहती है। जैनी वहाँ पे तैनात जरूर है। एक्सपेंसिव वो चलिए कोशिश कर रहे हैं और ऊपर की तरफ से सिंह ने जो है अपना काम कर दिखाया है। वो चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है उनके ऊपर भी आपका कब्जा रहना चाहिए। वो टर्रेट था वो जरूर आया, टर्टल के आसपास की लेन में जरूर गए हैं। टर्टल गवाया 2 बार और एक दूसरे टर्टल में थोड़ा सा नुकसान हुआ। अगली बार सोचेंगे कि चलिए उसकी भरपाई जरूर की जाए। इस बार आगे जा रहे हैं और अभी के लिए क्या वो कोशिश करेंगे या शायद से पकड़ने के लिए जरूर जा रहे हैं, लेकिन लैंस के पास वो डैश रहता है, उनके पास वो स्पीड होती है, उससे भाग सकते हैं क्या, लेकिन उनके पीछे माउंटेन सॉकर के साथ वो आएंगे और वो चलिए उनके जंगल की तरफ जा रहे हैं तो उतना तेज नहीं जाएंगे। और साइक्लॉप्स उनकी तरफ हम नजर रखें तो कूल डाउन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि लास्ट में वो अल्टीमेट काफी तेजी के साथ आएगा। वॉरेक्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कोरिजन आ चुका है, यानी कि अब डीएचएस चलिए वो भी आ चुका है। तो इनके पास टैंक किलर तो चलिए जरूर बना है, लेकिन सामने 2 है। एक जैनी की बात कर लीजिए, सुपर आईएम की बात कर लीजिए, वो वहाँ पे तैनात है। एंड फारसा चलिए वो भी जो है मैजिक डिफेंस को हल्का सा रिड्यूस करते हैं, जो हल्का हल्का मैजिक डिफेंस सबके साथ रहता है उसकी बदौलत वो गए हैं। और ब्रश डैमेज को रोकने के लिए अथीना वो चलिए बनाते हुए जरूर दिख रहे हैं और टर्टल के आसपास वापस आ जाएंगे। टर्टल शैडो ई स्पोर्ट्स आसानी के साथ निकाल रहे हैं और इस बार भी निकाल लेंगे। रेटरी बैटल में कमाल का आउटप्ले दिखाते हुए यहाँ पे और एक और डबल जोड़ दीजिए। टर्टल के साथ डबल और ट्रिपल क्या वापस होगा? आगे जरूर गए हैं लेकिन वो टर्रेट के अंदर जाके फाइट नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि पता है दिक्कतें आ सकती है। चिंग वापस गए हैं और रिकॉल करने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए जब तक पहुंचेंगे तब तक रिकॉल हो चुके हैं। तो धीरे धीरे जो है टीम शैडो ई स्पोर्ट्स अपना कब्जा जो है, अपना आउटप्ले जो है बेहतरीन दिखाते हुए यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं विंग जो है उनके पास काफी डैमेज आ रही है। अभी उनके पास आइटम्स है, उनके पास असिस्ट भी है, उनके पास स्किल्स भी बढ़ रही है। तो इसी के साथ आई थिंक टीम मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही है। ओके बैटबाजी के पास यहाँ पर डैमेज तो है बट ओ ये जो फारसा का जो अल्टीमेट है थोड़ा इट्स अ स्टेप बैक की रुक जाते हैं, थोड़ा सा रीग्रुप करते हैं, कूल डाउन को हम बढ़ाते हैं, फिर हम जाएंगे। देखते क्या होगा। बून जो है अपना पोजीशन ट्राई कर रहे हैं रिवील करने का, वो भी सुपर आईएमएम का। ये जो है काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम्हें अगर पता नहीं कि डिग्री था ओके यही जो है देखो अल्ट मारते हुए उन्हें पता है एक किल भी मिला तो वो काफी अच्छी है। एंड यहाँ पर मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स ट्राई कर रही है और किल भी लेने को वापस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैन 14 वो सही समय पे पीछे जाने के लिए तैनात जरूर है नहीं वहां पे तैनात है। मिड के आसपास वो फाइट ले रहे चाहे रहे दोनों टीम का। देखिए प्रयास वही है कि जो मिड का टावर है ना वो ना गवाया जाए, कि जब मिड का टावर गवा दिया जाएगा तो आप अपने अपोनेंट के लिए जंगल का दायरा जो है वो बड़ा कर देते हैं, जंगल इन्वेड करना आसान हो जाता है। तो उस वजह से अप्रोच तो सही है, लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे कि शुरुआती गेम से अग्रेसिव जाना पसंद करते हैं तो वो दिख रहा है यहाँ से। हालांकि अब मिड की तरफ हम जरूर बढ़ रहे हैं तो लेकिन शुरुआत से ही उन्होंने वो दिखा दिया था कि शैडो ई स्पोर्ट्स जो है वो अग्रेशन के लिए तैयार है। वो आएंगे और वो लड़ने के लिए स्टार्टिंग से ही आएंगे। शुरुआती गेम में कैजुअलिटीज ली बट उसके बाद टर्टल सिक्योर किया और तीनों के तीनों टर्टल जो है वो सिक्योर करने में कामयाब रहे। और उसके साथ साथ जो है अब धीरे धीरे वो किल्स में भी बढ़त लेने में कामयाब हुए हैं। एक और ऑब्जेक्टिव जो रहता है मैच लॉर्ड अब आता हुआ, लॉर्ड के आसपास फाइट लेते हुए जरूर जाएंगे। वहां पे देखना रहेगा कि क्या मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स कुछ बदलाव कर पाते हैं या तो फिर वो जो लैंस है वो वापस है रेटरी बैटल में अपना कब्जा जो है वो जारी रखेंगे। तो ओके देखते हैं क्या होगा। लॉर्ड स्पॉन हो चुका है एंड इसी के साथ मेंबर्स आगे पीछे है। वो एक काफी थोड़ा सा ओके मून थोड़ा बहुत डैमेज लेते हुए इसी के साथ चलिए लॉर्ड के आसपास ये फाइट लेंगे जरूर। ब्लेजिंग ड्यूएल के साथ वो अपना प्रयोग करते हुए इस बार तैयार है। क्या विंग सुपर आईएमएम को डाउन करने में कामयाब हो पाएंगे? लैंडशॉट आगे गए हैं और अनस्टॉपेबल सिक्योर करेंगे और काफी कम एचपी पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे। तो लॉर्ड के आसपास अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आसानी के साथ शैडो ई स्पोर्ट्स जो है वो लॉर्ड को सिक्योर कर लेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव्स में अपर हैंड रखते हुए अब तक शैडो ई स्पोर्ट्स लॉर्ड सिक्योर हो चुका है। डिफेंस करना पड़ेगा। मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स के पास वो क्षमता है, वो डिफेंस कर सकते हैं और एस्ट्राइक का इस्तेमाल करेंगे वापस। बैटबाजी एक्सपेंसिव के पीछे डाउन करने में भी कामयाब हो जाएंगे। हाइपर डाउन है, कितने टावर्स यहाँ से निकाल पाते हैं, क्या वो मैच भी निकाल पाते हैं वो देखना जरूर रहेगा। और 11 सेकेंड्स का जो वेव था वो जा चुका है, यानी कि 41 सेकेंड्स का जो वेव आएगा उसके साथ ये लॉर्ड का आगमन। चलिए लॉर्ड का आगमन भी हो चुका है तो लॉर्ड अब आगे जाते हुए जरूर देखेंगे ये लॉर्ड के साथ कितने टावर ले पाएंगे पीछे।
यहाँ पर इनहिबिटर स्पेशली बॉटम लेन का इनहिबिटर लेने का काफी इजी पड़ सकता है अगर वो लेन को चेक पे नहीं रखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर जो विंग जैसे दिख रहे हैं उनके पास डैमेज है, उनके पास वो मोबिलिटी है, तो देखते हैं क्या होगा। थोड़ा बहुत डैमेज लेते हुए सुपर आईएमएम कोशिश वही कर रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके, जितने ज़्यादा हो सके वो निकाल ले। सुपर आईएम उनके ऊपर नजरें रहेगी। यहाँ पे गेम आगे जरूर जा रहा है तो मॉस्को के ऊपर भी उम्मीदें जरूर रहेगी टीम मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स के फैंस की भी कि कुछ चमत्कार कर दिखाएं। लेकिन विंग जैसे जैसे गेम आगे जा रहा है ये भी परेशानी क्रिएट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनके पास ये क्षमता रहती है कि वो गलाने में कामयाब हो जाता है। पैटपाजी आगे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या दिक्कत होगी। एओजी का प्रयोग जरूर करेंगे, 2 डाउन करने में कामयाब हो सकते हैं क्या? विंग आगे गए हैं, बैन 40 हैनी को डाउन करने में कामयाब हो जाएंगे। रहने भी काफी दिक्कतों में, उनके पास वो क्षमता रहती है सस्टेन की, बट चलिए वो टिक नहीं पाएंगे। डाउन करने में उनको भी कामयाब। मिड लेन से मिनियन जो है वो कम पड़ते हुए, तो पता है चलिए इंस्टेंटली विंग जो है वो दूसरी तरफ गए, बॉटम की तरफ से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश चल रही है। बैन 14 भी आगे जाएंगे, मुंड भी आगे जाएंगे, सुपर आईएम वो तैयार है वहां पे, लेकिन सिंह वो उनके साथ है। उनको पता है कि ये वेव तो रोक लेंगे, बट आगे वाली जो वेव्स आने वाली है और सभी तरफ से ये जो टावर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा तब दिक्कतें ज्यादा हो जाएगी। प्रेशर तो डेफिनेटली बढ़ रही है। मिड लेन का भी जाने का काफी ज्यादा चांस है, बट इसी के साथ जो बेन 14 है उनका जो फेदर्ड एयर स्ट्राइक है इतना ज्यादा डैमेज दे रही है कि चिंग को थोड़ा रोकना पड़ता है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, वापस से रिचार्ज करके आना पड़ता है। तो ये जो फास्टा का जो डैमेज है एंड दैट इज डेफिनेटली टारगेटेड। ओके, सुपर आईएमएम थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर एक अच्छा सा सेट देने को, बट उसी के साथ आई थिंक ये सेट थोड़ा लॉर्ड के लिए वेट करना चाहिए। आई थिंक उन्हें वो थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि चांस तो है अगर वाईएसएस को थोड़ा बहुत यहाँ पर किल्स मिले तो, बट यहाँ पर वाईएसएस को वो चांस नहीं मिल रहा है, ना चिंग को चांस मिल रहा है। बट इसी के साथ जो बैट पाजी है सीसी होके भी वो ही टरेट डाइव कर रहे, दे आर नॉट लेटिंग मून गो, एंड मून को थोड़ा बहुत रोक के भी रख रहे कि वो थोड़ा एंड पे अच्छे से वो एओजी दे। तो देखते हैं अभी यहाँ पर क्या होगा। 10 सेकंड बाकी लॉर्ड के हुए। लॉर्ड के आसपास वो चलिए कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, या तो फिर एक गलती मैच पलटी वाली सिचुएशन। लेकिन शैडो ई स्पोर्ट्स वो उतने एक्सपीरियंस वाली टीम है कि वैसी गलतियां करती हुई दिखेगी नहीं। तो एक्सपेंसिव को कुछ कमाल का आउटप्ले कर दिखाना पड़ेगा तो कुछ हो सकता है। अभी के लिए स्प्लिट पुश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पता है जब आपकी स्ट्रेटेजीज वर्कआउट नहीं कर रही है तो स्प्लिट पुश एक अच्छा ऑप्शन रहता जरूर है। लेकिन सुपर आईएमएम उनको डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं, यहाँ पे आ जरूर रहे हैं, लेकिन बैन 14 चलिए इस बार वही कामयाब हो जाएंगे लॉर्ड को लेने में। लॉर्ड गवाया जरूर, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि टावर लेने में कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन रैनी दिक्कतों में सस्टेन करना वो जानते हैं। लेकिन एयर स्ट्राइक वो डैमेज देते हुए और उसी के साथ लैंड जोन को भी डाउन करने में कामयाब हो चुका है। 3 तैनात है, लेकिन तीनों ऐसे हैं जो सस्टेन नहीं कर सकते, तो डाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन लॉर्ड जब तक पहुंचेगा तब तक सुपर आईएमएम आ जाएंगे, वो डिफेंस करने में कामयाब हो जाएंगे। अभी के लिए देखिए अच्छा खासा काम कर दिया है वहां पे मॉस्को ने। जैसे जैसे गेम आगे जाएगी ये प्रेशर तो क्रिएट करेंगे, और देखते ही देखते एक प्लेयर को डाउन करने में कामयाब हो चुके, दूसरे भी डाउन हो सकते हैं। चिंग ऑन अ डबल, मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स की उम्मीदें अभी भी बरकरार है कि लॉर्ड को पहुंचने ही नहीं देंगे, और लॉर्ड को रोक भी दिया है, और उसी के साथ 2 प्लेयर को डाउन करने में भी कामयाब हो चुके हैं। वहां पे पैड पार्टी फंसे, बैन 14 फंसे, लेकिन चलिए लैंड्स वहां पे गए, उनको सिक्योर करने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अब मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स जो है वो गेम में कमबैक करते हुए दिख रहे हैं। कमबैक तो दिख रही है, क्योंकि हम चिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी आइटम्स के साथ काफी डैमेज दे रही है। वो एक अच्छा एक डिस्ट्रैक्शन जैसा था फॉर टीम शैडो ई स्पोर्ट्स की। उन्हें जाना पड़ा बॉटम लेन डैमेज देने को, ये मॉस्को को कैसे भी वो लेन से हटाने को। तो वो एक अच्छा सा चैलेंज मिल रहा है टीम शैडो ई स्पोर्ट्स को। तो अभी देखते हैं क्या होगा। टेंशन तो बढ़ रही है मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स के हाथ पे भी, बट इसके साथ शैडो ई स्पोर्ट्स के हाथ पे भी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो क्लॉड है देयर इज अ चांस कि वो बर्स्ट डाउन हो सकते हैं अभी ब्लेजिंग डुएट के साथ अंदर जाते तो। बिल्कुल वो पॉसिबिलिटीज, लेकिन स्ट्राइक से क्या वो हैनी को डाउन कर पाएंगे? काफी कम एचपी, लेकिन वो जो ब्रस्ट रहता है वो ब्रस्ट उनको लगता हुआ और उसकी बदौलत जो है डाउन करने में कामयाब हो चुके। चलिए किस्मत भी चलिए साथ देती हुई नहीं दिख रही, लेकिन अब देखना रहेगा कि सिंह जो है वो इस मैच में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर अब दारोमदार पूरा का पूरा रहने वाला है, और गेम आगे जा रही है तो उनके ऊपर वो प्रेशर भी रहेगा। बैटबाजी लेकिन उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्रिस्टल ओपन है, बेस ओपन है, ये वेव के साथ अंत करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन बैट पाजी पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहा है। ये एक्सपेंसिव आएंगे, 2 डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। इसी के साथ टीम मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स अभी भी लड़ना चाहते हैं। आधा क्रिस्टल उड़ चुका था, थोड़े से मिनियंस और रहते तो दिक्कतें हो सकती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वाईएसएस और मॉस्को का जो डैमेज आ रहा है ना, उस बदौलत फायदा तो होता हुआ दिख रहा है। ओ, जो ब्लेड आर्मर जो है वाईएसएस के हाथ पे वो काफी आई थिंक यहाँ पर अभी हमें जो डैमेज दिख रहा है, बट यहाँ पर मून थोड़ा बहुत अटके हुए हैं, वो भी चिंग के हाथ पे काफी लो हो चुके हैं। यहाँ पर बेन को यहाँ पर एक अच्छा सेटअप देने का चांस है, तो देखते हैं क्या होगा। सुपर IMM बैट पाजी से डैमेज लेते हुए यहाँ पर बेन 14 का भी एचपी निकाला गया है। चिंग आई थिंक वहां पर अभी कोई अच्छा सेटअप चाहिए फ्रॉम शैडो ई स्पोर्ट्स अगर चिंग को पकड़ना है तो। क्योंकि देखिए अभी जो है शैडो ई स्पोर्ट्स को भी पता है कि वो प्रायोरिटी उनको चिंग की तरफ रखनी पड़ेगी, या तो फिर जो है आई एम एक्सपेंसिव मॉस्को को पकड़ लीजिए, या तो फिर वाईएसएस को पकड़ लीजिए। बट अब ये लॉट टीम मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स लेने में कामयाब हो जाती तो दिक्कतें रहेगी, लेकिन लैंसलॉट वो बेहतरीन आउटप्ले दिखाना जानते हैं। रेटरी बैटल में अब तक देखा है कमाल का आउटप्ले उन्होंने दिया है, और स्ट्राइक का इस्तेमाल करके पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन इस बार चलिए आई एम एक्सपेंसिव को रोक नहीं पाएंगे। वो एक्सपेंसिव बनते हुए शैडो ई स्पोर्ट्स के लिए प्रेशर क्रिएट करने के लिए वो जरूर जाने जाते हैं। विंक लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि प्रेशर जो है रिलीज किया जाए। एक को डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं, डबल डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। पेट पाजी आगे जाते हुए चिंग को पकड़ना जरूरी है यहाँ पे, और उसी तेजी से आगे जा रहे हैं। क्या उनको डाउन कर पाएंगे, क्या ट्रिपल सिक्योर करेंगे, क्या लैंसलॉट वो किल निकाल पाएंगे? तेजी के साथ वो फ्लिकर था उनके पास, फ्लिकर का प्रयोग करके पीछे हट चुके हैं, लेकिन आई एम एक्सपेंसिव ऑन अ किलिंग स्प्री। एस्ट्राइक का इस्तेमाल किया था बैन 14 ने, सोचा था रोक पाएंगे, बट आगे आए वो फंसे, लेकिन देखते ही देखते ये जो वेव है वो दिक्कत दे देगी यहाँ पे टीम शैडो ई स्पोर्ट्स। और गवाया जरूर लॉर्ड को, पर मैच को नहीं गवाएंगे। पहला मैच जो है वो खूबसूरती के साथ अपने नाम किया है। बेस्ट ऑफ 5 का ये मुकाबला, पहला अंक जीत के वो जो अपना मनोबल जो होता है ना, वो उन्होंने अपने नाम जरूर किया है। और शैडो ई स्पोर्ट्स के फैन भी कुछ जरूर होते हुए दिखे। एक समय के लिए लगा कि टीम मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स जो है वो कमबैक करी, एक्सपेंसिव का डैमेज आने लगा, वो लॉर्ड सिक्योर किया। चिंग ने जो है एक समय पे वो जो कमाल का मूव दिखाया, पेटबाजी को डाउन किया, बैन 14 को डाउन किया, तब लगा कि अब एक कमबैक तो हो रहा है। पर चलिए पहला अंक गवाया है, अब प्रेशर और रहेगा। डेफिनेटली काफी अच्छा खेला है टीम मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स में, बट एक मैच यहाँ पर उनका एक थोड़ा छोटा सा मिस्टेक हो चुका है लास्ट पे, एंड इसी के साथ उन्हें ये मैच जाने देना पड़ा। तो बट इसी के साथ शैडो ई स्पोर्ट्स अभी एक मैच के हाथ पे है, बट तो मुझे देखना है अभी आगे क्या होगा। बट इसी के साथ हम रुकते हैं एमवीपी और रिजल्ट के लिए। अभी ऐसे एमवीपी प्रेडिक्शन करते कौन हो सकता है, लैंसलॉट है या जो टैंक जो है वो हो सकता है, शायद मून। शायद विंक। ओ, देखो वे लैंसलॉट का जो गेमप्ले था वो कमाल का था, पर वो कहते हैं ना कई बार मार्समैन यूजर जो होते हैं, गोल्ड लेनर जो होते हैं, वो एकदम धप्पा कर जाते हैं और वो निकलते हैं एमवीपी। पर अगर मून को मिलता है तो मुझे पर्सनली मजा आएगा, क्योंकि जब रोमर्स को एमवीपी मिलता है तो मजा तो बिल्कुल आता है। आपका गैस क्या कहेंगे? आई थिंक लैंसलॉट, मेरा गेस लैंसलॉट के पास जाएगा, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे तरह से मॉस्को को टारगेट किया है। उन्हें पता है कि मॉस्को डैमेज देगा, उन्हें पता है कि वाईएसएस को भी लेने के लिए इजी पड़ सकता है, तो वो उसके वजह से उन्होंने काफी बैक लाइनर्स को टारगेट किया रादर देन फ्रंट लाइनर्स। सुपर आईएमएम को भी इट्स वाज मोस्टली चिंग और अपना बैट पाजी जो डैमेज दे रहे थे। आई थिंक यहाँ पर सीसी का जो टीम कॉम्पोजिशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर यहाँ पर सीसी नहीं होता तो थोड़ा बहुत हमें डैमेज कम देखने मिलता फ्रॉम शैडो ई स्पोर्ट्स। तो बिल्कुल, जैसे हम आपने मैच के दौरान भी बात किया और चलिए मैं बात ही कर ओह, रहा था कि ये जो धप्पा होता है ना वो लेके जाते हैं, तो वही चीज़ नहीं, आपका गैस सही है शायद कि वो देखिए अभी ये जो लैंसलॉट, एमवीपी है ना। मेरा गेस लैंसलॉट। आपका आपका गेस था ये क्लॉड या तो हाँ, मून, सॉरी मून नहीं, अपना गडोट विंग। का विंग। हाँ, यस, गटुट गाचा जो मून है वो खेल रहे थे, और विंग जो है वो थे ना यहाँ पे। तो हाँ। वही चलिए एक लेते तो ज़रूर दिखे हैं, तो वही चीज़ें चलिए। एमवीपी तो ख़ैर किसी के पास जाए, पर इनकी प्रायोरिटी जो है आज का ये जो फिनाले है ना वो जीतने की रहनी चाहिए। ओवरऑल भी देखेंगे कि कौन जो है कितने किल बटोरने में कामयाब हो पाया है।
देखते हैं इन्होंने जो एमवीपी लिया है 1017 के साथ 17 असिस्ट। इतना असिस्ट तो हमारे गटोट काचा के हाथ पे है, तो यहाँ पर वो भी थोड़ा सेम टैंक के तरह खेल रहे थे। जी बिल्कुल। अरे मतलब वही चीज़ है ना कि यहाँ पे ये जो है, अब बात कर रहे थे कि मून को मिलना चाहिए, तो मून जो है वही खेल रहे थे। तो एक मज़ेदार हाँ। ज़रूर रहा, पर अब चलिए स्कोर की ओवरऑल बात करें, तो ये ऑलमोस्ट शुरुआत में तो एंड करने नहीं दिया, लीड की तरफ ही लेके जाना पड़ा। 17 मिनट 38 सेकंड तक चला, 21 जो है किल निकालने में कामयाब हुए। टीम यहाँ पे शैडो ई-स्पोर्ट्स और मेगाट्रॉन जो है, वो 11 किल बटोर पाए सामने जवाबी हमले में। तो कोशिश अच्छी की, ओवरऑल सबने अपना-अपना योगदान दिया। एक समय के लिए लगा कि वहाँ से चिंग जो है, वो गेम चेंजर निकलेंगे, बट वो जो रिजल्ट है अपने नाम नहीं कर पाए। पहला मैच था, अभी भी उनके पास मौका है, और ये मुकाबले में अगर दिक्कत होती है तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर इसके बाद डू और डाई हो जाएगा। ये मुकाबला जीतना उनके लिए काफ़ी आवश्यक रहने वाला है। डेफिनेटली। चलिए, ये जो सो मुकाबले में हम जैसे दूसरे आज के जो फिनाले के गेम नंबर 2 में बढ़े, उससे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं ना, उनसे कहना चाहेंगे कि देखिए ऐसे इवेंट्स आते रहेंगे, तो आपको क्या करना है कि एचएनटी ई स्पोर्ट्स को जो है वो फॉलो कर लेना है, ताकि क्या होगा कि और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे जो इवेंट आते रहेंगे उसके आपको अपडेट्स जो है वो मिलते रहें। अगला इवेंट इससे भी बड़ा और सरप्राइज आपको बहुत जल्द मिलेगा। तब तक क्या करें कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, उसको कमेंट में जो है उनका नेम स्पैम होते रहना चाहिए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में मैं अलविदा लूँगा, क्योंकि जैसे एक गोट हमारे साथ ऑलरेडी है पीछे, तो जो दूसरे गोट है टैबी, वो जुड़ते हुए दिखेंगे। तो इसी के साथ एक छोटा ब्रेक लेते हैं ना, हम आते हैं सेकंड मैच के लिए जल्दी जल्द। Hello, hello. Welcome back, ladies and gentlemen. Back again at the Realm of Rivals. We are gonna go soon towards the match number 2.
Match number one, Shadow Esports took it away with very good combination. They had a bit of a damage with the CC. They did not let the Esmeralda Zenny farm up. They took the Claude. They made sure to get their advantage on there. And obviously, as you guys know, with the Claude, you have to make sure you have to take him down, or else the snowball's gonna take it away. So that's how Shadow Esports got it also. That was a little recap, but I'm back again on the casters deck along with Debbie. Hello, Debbie. How are you doing today? I'm doing really good, Peachy, because it's been a long time since we have gossiped together in Yeah. one place. So I'm looking forward to it again. And two of my favorite teams will be playing, of course. We already had the game one already, like you mentioned, a replay. And I did watch it, right? Rice was amazing onto the Lancelot, I would say. But hey, I think a second game is what we wanna focus on this time around. I think maybe there might be a little bit of change up here and there for both of the sides, especially for the side of C3M, because that is because of the reason why they lost onto the first game. I think the draft wasn't even a problem. The execution might be just lacking in a Yeah. bit in comparison to SDES. Agreed. Like Super IMM, despite picking up his signature pick, Tigreal, he wasn't able to come up with those sets. There was like very few moments where you have seen. And on top of that, Moon, the Gatotkacha Moon, as well as the Oh. CC did not let, Super IMM come at the front lane. Not even the flicker surprise that we look at for. So that's definitely a good advantage. And with that, the respect ban is definitely there. It's just they don't want the cutout kacha right here. I think I kind of know that Moon is very comfortable onto the Gatot as well. It's like, 2 weeks ago, so it's a very, very first pick worthy. But this time around, it's kind of a very situational pick. But him able to make it work is kind of surprising and also very respectable. And I think that is the sole reason why C3M has to ban it away. But the Jushin always has to go. SDS, they have to ban out the Jushin because, of course, they are onto the red side. Red side ban hero always going to be the Jushin. The thing is, I don't really see Jenny picking up the Yuzhong, right? And I've never seen him on Yeah. the Yuzhong. If he's able to play it now, that's gonna be a completely different story. So they should ban away the Yuzhong. That is a very completely winnable hero onto the lane, but they can be a different side. Oh wow, they ban out the Lancelot instead, huh? Respect bans are definitely showing tonight. Like team Ah. Megatron Esports, they don't want to keep those heroes open, which is quite a surprise given the fact that there's a lot of tanks still open. There's quite a lot of assassins as well. Now, apart from Lancelot, I do feel like YSS might be going into the hands of Shadow Esports. Uh-huh. Okay. The thing is, expensive is much more well versed onto the Lancelot. I mean, onto the Yi Xuanxin rather than the Lancelot. So maybe Yeah. that's the reason why they ban it away. And also, like you mentioned, it's gonna be a respect ban, right? That's the thing. So, what can they ban here for the side of Megatron? Is it gonna be the Eve or Kalea? Because there's Kalea, so yeah. many choices. Kalea is Um. definitely an yes. They need to make sure she is out of the way. First game we did see a Kalea ban. Now again, Hilda getting banned. That is just another indicator that we might be getting an assassin. And here you go, another respect ban. Looks like team What? Shadow Esports just they just don't want these heroes. They did identify the problems, which is a good thing. So this game they do have a very good chance right here. Uh-huh. I think maybe they're respecting a little bit too much, it could have been onto the onto where is the confidence, right? Just try to get it out because this is not just a best of one or a best of two, man. Come on, this is the finals we have right now, best of five. They also have a lot of chances, but nevertheless, respectable bans might be it because of the first game that we can see so far for the side of SDES. I think a very solid choice ban could be the Eve as well, but then the Eve is like counterable, dare I say. Yeah, it's kind of like if you have a good experience to your side, you can basically counter out the Yeah. Eve here. So yeah, they can let it go. Yuzhong out of the way. Now that's definitely a good ban. I was expecting a Yuzhong to be up, or Team Shadow Esports picking it up for themselves, but they just Yeah. gamble it.
True. So now the first pick can. Now that the Yuzong is banned, right? It's actually gonna be good for. Okay, Sora completely left open. It's definitely gonna be a big pick coming through for the side of Megatron now. So Valentina can come to into the hands of Ben 14. I think Valentina is a very solid choice for him. He does play the Valentina very well, so that can also come through. Wait, okay, there we go. Valentina and Grok. So, oh man, a free ultimate. Yes, and that's definitely a very hard combo that Team Shadow Esports are going in for, which really looks good given the fact that they could actually pair it up well. Now, I do want to see how they are going to pair it up, but YSS again making his debut onto the game number 2, and from the same side, it's going to be Megatron Esports. But with that, Kalea is there. But Debbie, I do want to see Yeah. Kimmy and the Sora combo. Like, put a Kimmy in the middle lane right now. Ah, that is very solid choice. But look at that though, the Leomord coming through again. It's kind of popular pick now, the Leomord. But then again, the Leomord is a very early game centric hero, no? So you might want to win out onto this first hurdle, or at least have 2 kills into the early game so that you'll be able to have a good lead with the Leomord. This is the downside of having a fighter into the jungle most of the time. But then again, he have a lot of ways to try to go in and out with a lot of damage as well. Look at that though. Carry ban coming through for the side of SDES, and mind you, there's still Cloud available for SDES, so it has to be banned away by Megatron, or else it will be let go. Megatron Esports really need to ban it up, or they really have to pick it up for themselves. But I do feel like they will not be trying to capitalize it again. Well, there was a Moscow at the last game. This was picked before we could see a Claude getting picked from the hands of Team Megatron Esports, and yet Ah, Moscow played it out very well. There was a moment we have seen like a 1v2 situation, and yet he mm-hmm. won that. So again, Oh, it's a good choice, but better to ban it up. So yep, Claude is out better. of the game. It's like the attack speed Yes. marksman has been removed time and again. So I think that is also a big choice to go for. Is that a Lunox ban coming through? Maybe it's a Yes, it is. It is. Yeah, I think Henny is he's always been very consistent onto the Lunox, whether it may be onto the losing side or the winning side. He usually have a pull through, like a surprising factor with the Lunox all the time. So I think this is a big respect coming through for the side of SDS. Very well choiced as well. So now the marksman that's left, I mean the goal in possibility that's left is either the Granger, the Harris, or the Moskov. And the Harris is always gonna be winning out against the two. Agreed. So there might be a possibility that we might be looking the Harith getting a bit of a priority right here. That's just because the Claude is out of the way. But that's not the case. They want Oh, to place in another fighter. They will try to force a fighter team composition, a fighter goal lane. So now the yeah. dashes are trying to get very limited. Against Sora, it's looking good, but I just feel like it is a goal lane for years. Golden Phobias. Man, I feel like now that the Phobias is picked, the Harris is out of the picture again. So Yes. SDS, they're so brainy with this composition. It's definitely okay that they pick up the Phobias early on already. Maybe they are predicting the Sora to go into the XP lane as well. So the thing is, they need a. Do they want a Moskov again for Megatron? Because I they don't might think so. no. Okay. If they don't want a Moskov, what could be going for here? The Kalea and something combination, right? Oh, What? wait a minute. Okay, so the Moscow, okay, there's he has to use up his dash for getting a bit of a attack speed, and Phobius can jump in. You have the Leomord jumping in as well, and let's not forget the Grog being the tankiest and has the bit of an immune. So the Moscow was such a bad choice, but at the same time, Cyclops being picked out. Wasn't expecting a Cyclops though, right here. Cyclops. Good I hero. don't There's no know. complaint about Yeah. that. He played it out very well.
But in this team composition, I really don't feel like, this composition holds a Cyclops in its place. Oh man, I don't like the Cyclops. No matter what, the Cyclops, it's a late game hero, sure, but how can you contest onto all those objectives and the turtles with the Cyclops? Oh, Now with the let's dangerous gas into the picture, I think PG, we might have a game in our hand. let's see which team picks it up now. Again, Megatron Esports trying to switch it up with their team composition, and with that, ladies and gentlemen, let me welcome you into the game number 2. Looks like Shadow Esports have won the first game. They are looking for a first blood. The Super IM quite low in the mid lane. Yeah, that's a fast rotation coming through into the mid side here yet again, but looking like onto the top lane, that's gonna be Ching onto the mid sitar, something that we are not really comfortable seeing into the gold lane side. But hey, I think that's why this is also the reason why they put out the Sora against the Bruno, right? So they'll be able to win it out. But this is weird. Look at that mid lane. Oh, but What? we're already Super IM quite aggressive. Now again, let's not underestimate Moon. Yeah, he's very fast onto the rotation with the Grog, and of course with the combination of the Cyclops, the early game the damage is definitely not gonna be there. But something that I'm pretty sure is shocking is that Ching is actually onto the XP lane, and Jenny. Oh, never mind, bot lane. Wait a minute, Moondog looking quite low, but none of the members are able to reach them. Megatron Esports, they have not gotten a blood. But alright, go, okay, he goes in, he gets his horsey. Wait a minute, is it a kill on Super IM? And once again looking quite low, but he will be watered down before he can make a kill. There was actually a fast rotation coming through. Very much of a blunder for the side of Arise, but oh yeah! Jenny onto the bottom lane. That is solo kill for the Sora onto the Bruno. Of course, the Bruno doesn't really have that early game and momentum against a fighter, but that's Jenny onto the gold lane side. Very surprising. He's usually into the XP lane against Bad Pazzi, but right now the Turtle already up PC. They might be a contest though. Let's wait and watch, alright? Though, despite losing his life already, is it going to be IM Expensive who picks it up? But alright, he really loves to pick it up. Okay, so I was in the combo. That will take him down. That will be members of the Megatron Esports taking the members one by one. 4 vs. Next on the line, 4 members down for 1 turtle, and that is definitely expensive. Oh my goodness, that's a definitely big one that we can see right now. What a good set coming through from Jenny onto that Sora, of course. That was amazingly well done. This is the priority that the Sora gives onto the turtle most of the time. This is definitely going to be giving a lot of gold into the hands of Megatron Esports right now. They are taking the turtle, which means they have extra gold, and the plating that they are trying to munch down onto the top lane is also going to be giving expensive a lot of item potential to go for onto the early game. That's going to be a little bit of a stun coming to onto the mid side. Henny, I don't think he will be able to rotate as early as possible, but that turtle win, that should be able to give them a little bit of a pressure onto the map. Let's wait and watch. The grassland, though, it just is helping Moon to come up with a bit of a situation. But okay, alright, so he's battling 1v2. He goes in for this horsey, but I'm Ooh. like to fix it up. Now Moon, he's trying to come in. It's too late. It's a bit too late now. Bottom lane is what they want to focus on. There's going to be a stun onto Band 14, unable to do anything. But there's no Tsunami Slam yet for Super IM, so he might have to be very careful around the close-up. But look at that, Jenny. Then he goes in and he catches wing, but Wow. it's Ching who picks it up. Now Super IM as well. Good jump from Kalea. There you go, double kill. Megatron Esports taking the early aim into their hands. That is an early lead at the dive. The synergy coming through from Megatron this time around is amazingly well done. The rotation that has been coming through from Ching as well, so fast to reach out onto the bottom lane. That was, yeah, they were going 5 full on onto Wing. That's not a very good day for Wing right there, because I think he's 2 deads down. Super IM, look at that. One more Tsunami Slam. There you go. Arise, Captain. Once again, this is possibly the third and the fourth that you're talking about. But Bad Party being crushed down by I Am Expensive. Now, okay, God for the hand. He just comes in for clutch. And he takes it away. Another easy turtle for Megatron.
Oh my god, I kind of like the double fighter that has been going on for them right now because they also have a late game hero. That's the Cyclops and the Mincetar. This is a very cheese pick coming through from the side of Megatron, and they are actually making it work. Wink isn't able to have a good time of his life onto the Bruno because of the lack of mobility that he had because of the Purify that he had to bring onto this game. When he is ganged upon by 2 or 3 members, he's actually gonna be dead. You cannot really purify out of the Sora again when he have the bulk class. But look at that though. Okay, so NEXGON once again. This would be bad party. He's trying to jump up, but he's not Oh, able to get that. Arise though, he's playing it safe as of now because he knew what happened the last 2 times. that's right. That's right. You got to be careful here where your momentum is gonna be, where you are trying to enter upon. That's right onto the mid side though. Look at that. Oh, wait a minute, Mundo. He's trying to sort of make sure that this turret won't go down, but that's not the case. It is already down. Now, Uh, Wilfred Esports are moving in numbers. Look at that, 4 members. yeah. Going for that, and Kalia Oh. comes in, and Hugo picks up Moon this time. Not an ideal, but Sora though, he Oh. tries to the backline shut down, picked up by Ben 14, but that's just not over because Arise is out. That means it's such a easy manner to take members one by down. Okay, Pat Paji picks up the crumbs, gets Ching, he's gonna go in, but I feel like the dash, okay, yep, the dash is definitely expensive right here. He's just trying to get out. Finally, 1 kill into the hands of SDES right now. They are actually in favor of 1 game already, so they cannot really lose out to the second one either. So they are very careful on the way they are playing. Ching taken down is definitely going to be the compensation that they are looking for. But if you look at the turret wise, it's all into the hands of Megatron. They have been able to hold on for their turrets here. The outer ones, though, for the side of SDES already gone. Mid, top, bottom already gone, which means the pressure onto the map is definitely going to be into the side of Megatron right now. Moon, though, he's yet to create a good tech charts, and we are kind of waiting for it, no, because that is the only factor that's going to be saving them. Oh, that's right, that's right. You know, he's just trying to wait for them to use up his blink charges, like from the side of Team Megatron Esports. That's not happening, but Zenny though, he tries to get in. Kalea gets in. That's a Wow. combo with the Mincetar. Ben 14, no mercy shown. 3 turtles in a row. I'm expensive. It's the person who picks it up. With the Cyclops into the mid lane side, you don't think that you will be able to have this much of a pressure into the lanes here. But the fact that they have 2 winning lanes, it's kind of helping them quite a lot. Look at that stun, but Pazzi though, I think it's okay. Yep, not much though. I don't think he should have been gone in because Tectonic Ah. Substance at the very right man. Hani will be taken out. Super I'm looking quite low. Looks like Shadow Esports, they are like stacking up 5 members all together right now. Yeah, they are trying to be together as much as possible so that they will not be getting caught. And Moon, they're kind of waiting for Moon though. But then if they are clumped up together like this, who's going to be able to handle out onto the far lanes here? Because Sora, Jenny right now, he's so free farmed. He's alone onto the bottom lane, getting all of those minions yet again. And I think he's gonna be the one with the most gold as well. That means he's gonna be able to have a lot of damage too. And I don't think he's gonna be dying anytime soon because of the tankiness of the tanky items that is gonna be building up as well. This time around, I think as for Megatron, all they have to do is wait out for the Lord and try to get out the inhibitors here. Oh, let's wait and watch what will happen given the fact that there's just a lot happening in the map as of now, given the fact that the side of the Megatron Esports trying to get in, but okay, Mincetar goes in with his ultimate. Whoa. See, that's a brilliant execution coming in. They pick up Moon as well. Arise looking quite low, but it will be Zenny who goes down. Now the Bruno is dealing damage though. Look at him. He picks up the Yeah. middle. He's trying to get his items back. But wait a minute, they're not over. Kalea picks it up. Oh. Something expensive in that moment will be taken off. That is okay. That is definitely not a team behavior right here. Saving Grace is doing his work at this point. Wink onto the Bruno, already 3 damage item. He was, he kind of required that malefic gun in order to have the range and the penetration as well. And now he's quite doing good. He's already 7k gold into his hands and the most one at that too. And this might eventually be in favor for the side of SDS. All they have to do is play for Bruno, play for Wink. Don't let him out of sight. To play together with him and give him a good set, especially into the hands of Moon to get that stun though.
Oh, wait a minute, Kalia though. He's trying to go in, but Moon and that manner will be taken down. They know the Minsadar ult is there, so Arise cannot do much. Oh, Pink will be taken down. Wait a minute, Zenny's quite low, but he still wants to try to go in. Ben 14 flickering out of the way. Is it a good lord for them? this is definitely going to be a free not good maneuver coming through from Mama Expanse. They've completely focused onto Wing. This, the Purify cannot really help you with the stuns coming through, when there is a damage onto the Yi Shin as well. So that is the reason why he's got the shutdown. Giving the shutdown onto the hero like the Yi Shin is definitely not the best case scenario also. Onto the other side though, Rise onto the Leomar. I don't think he's able to get that early farm, which means that he's going to be struggling quite a lot onto the later part of the game as well. He is lacking onto the items. Ben 14 with the lightning, I think he'll be able to dish out the damages that require. But then again, I feel like across the map, he is unable to be that factor of why he's picking out the Valentina, no? Because he is unable to get out the Sora's ultimate and unable to create space for the team. I mean, it is kind of a lack of chain CC though. If they are able to, pair it up with the Brock at the right moment, I feel like Ben 14 can actually get a good set here Uh, with the Sorazar, but that's not happening given the fact that Moon is the first one to fall down. But okay, King's Calling will be used up quite early. Like, oh, that's what? a bit waste of resource, though, given the fact that the Lord's just jumping in and they could have gotten a very good set. Look at them Yeah, set up. it could have been in favor for them now. The Lord did is kind of useless. They are unable to get even one inhibitor because one Lord is what it takes to get at least one inhibitor right now. Jenny trying to give out a vision out there. Everyone on the side of SDS has been clumped together. They don't want to stay alone because whenever they are alone, they're gonna be cut off. And they need Moon everywhere to be honest, because when there is a set coming through with the tsunami slam, he's gonna be the one to cancel it out. And if anyone is getting caught and he's not around the vicinity, it would be very, very hard for them to have a comeback. And this is also the reason why, for the side of Megatron, they are able to find that split push potential, trying to send the minions here and there. But look at that though. What? Oh, look at that. Okay, Moon jumps in. He picks it up, but okay, in that manner, Bad Party will be taken down. Moon will be What? targeted left and right. Arise, he tried to save it up, but that was futile. Now that there is a minion onto the top lane, though, can be able to get it in with the inhibitor. Okay, Arise, though, lost his ultimate, so he has to wait it up. That was actually very questionable of Bad Party to do that, because when you are on a Phobias and behind onto the goal and to the XPs, you don't really want to jump in, and now the inhibitor is gone. Look at that. Oh, Megatron! Sora, nice combination, but that was not enough. Okay, wait a minute. There you go. Bad Pazi with a flicker. He's trying to go in there. Eyes as well. Bad Pazi will be taken up. That's Kalea for you. But in the same manner, Sora, so much damage. That's definitely Oh, not a good option. Wing though is looking quite low. Sora picks it up. Another double kill. That's just 4 members. What will Moon do? There is a wave coming in, and on top of that, the crystal is quite open. There you go. A mega kill for Hanny. wow. It's a win. Cyclops, man, that is Cyclops. And he is actually doing very, very good onto this hero. Oh my goodness. I have thought that this Cyclops would be a I don't know, useless. That's a big word. That's a big word. It's not useless, I man, mean, because for a Cyclops, the it's not. I'm combination not a fan of doesn't Cyclops. fit well with Kalea. Like I have seen Hani playing Cyclops with the Tigreal. Like with the Tigreal, you usually try to pick something like a Louis or maybe a Vexana. Combo it up, give that chains easy. But that's not the case. Hani is Yep. different. He's kind of different, man. I think he loved the late game heroes, because of the Linux and the Yeah. Cyclops. Again, on paper, you're not supposed to win out into the rotations with the Cyclops. You're gonna have to wait out for your items to come through. But that cannot happen. That did not happen because I feel like most of the time Megatron win it out because they have a winning side lanes, and they are unable to rotate from the mid lane side, because I think Henny was doing quite a good job in trying to control onto Moon as well as Ben 14. And the contest onto those turtles has been definitely well done by the side of Megatron. The rotation was fast. They were very, very fast. They don't really have that marksman that uh how do we say normal marksman into the goal lane. They had a Sora and he was winning out into the lane. Of course, Wing did a good job in trying to hold on as much as possible. He also have these items when it was time. But then
it was already too late. He was getting caught too frequently by the Sora. He was trying to Mm, get it out, like his mobility wasn't enough. And top of that, let's not forget he was trying to pick up the crumbs. But again, Sora with his damage, with the CC. This time around, Team Shadow Esports really has to ban up the Sora. So let's wait and watch what will happen. As of now, let's move on to the MVP, and it is Oh. Super IMM. Look at him though, the tank getting an MVP. Plus, let's not forget, like he did pick up couple of double kills, so that is definitely a good thing. You know, most of the time when you play a Kalea, when you see a Kalea, you usually want to be the one having the control onto the map. And I think Yes, Super IM did a really good job on that too, because whenever he tried to get a jumped or a tsunami slammed, it is a direct kill because of the yeah, amount of damage they already have. So very good job done by Megatron, and I think this is also the synergy coming through for them too. They were able to find the perfect targeting, to find the perfect maneuver. And they are actually doing that. Look at that. 7-1-12 onto the main sitter, which I question quite a lot. T-Speak works, PG. that's true. You know, Super IMM really said in brackets, I'm gonna take the MVP, I'm gonna take some kills, so still plays. But kudos to team, Megatron Esports for making it 1-for-1 as of now. Look at them. Mm, They are unstoppable as of now. They knew if they could take out Arise quite early on, they can actually capitalize the early game onto their hand. This was the strategy used by Shadow Esports in the game number one. They did make sure YSS did not get any farm. So mhm. I this time it was just quite opposite. This time it was Team Megatron Esports. So the matches are definitely going interesting. It's really interesting now. Now that we know that it's not gonna be a sweep, right? So, I feel like Megatron they finally find their footing, because most of the time in best of five series, right, when you are unable to get the first game, you kind of lose out your momentum because of the Oh, mentality, right? But that did not happen for Megatron. So very, very definite indeed. But then again, SDES, they are so good onto the drafting phase, but it's yes. just the execution part that they weren't that wasn't really happening. I think they did not expect the min sitar. Neither do we, right? Yes. And let's not forget that Team SDS really tried to, show their opponents that they are trying to go in for a fighter team composition, but in turn they picked up a marksman. So that one last Yeah. switch was so important. But that marksman Mm. though, I feel like other than Bruno, maybe even the Beatrix could have gotten a bit of a That's what. leverage right there. Mm. Beatrix, it's kind of like very underrated, but could Yeah. work. Maybe it's because it's one of my favorite hero, just saying, but it's a definite pick if you want a combination, right? But with the Yeah. presence of the Fulvis already, you have a spacing. I don't think Bruno is dead. Wink is a hero. I mean, not a hero. Wink The is a player. player who I know him as a 1-1 player, so Ooh. maybe yeah, he loves playing the 1-1 too. It's like one of his best heroes as well. And I think it's also the card which was unfortunately banned away. So that's a big respect. So Yeah. now let's see game number 3 how it goes. Let's wait and watch. Kalea being the most, respected hero right here will be banned off. That Oh, was much needed. Okay, game number one, we did see the Kalea getting banned. Game number two, it was open and you just seen the result, what happened. So these are the classic bans that you will be looking at, especially the Hilda, the Grog, the Kalea, the Sora has to come up the list this game. Sora is always gonna be removed. It's like a 100% choices, right? Hilda is like every hero's dream, right? To play the Hilda, like because it's a damage, so you wanna ban it away. Yeah. But I think this time around, okay, Jushino is gonna be banned. Oh, Yuzong is still out there in the open. I feel like you don't need to ban Yuzong against Megatron, but you do need to ban against SDES, so that can happen. The Lancelot, can it go? Oh, but the thing is, SDES plays the Lancelot, right?
Yes, agreed. So they do Mm. have a chance to pick it up. So let's wait and watch. One last ban coming in from the side of team Shadow Esports. What are they going to go in for? There's they can gamble a bit as of now with them having the first pick, but at the same time, team Megatron Esports cannot. So the Sora ban must be there. But YSS Mm. this time, the comfort hero is out of the way. I'm expensive. What are you gonna do? His second choice of a pick usually goes for the Hayabusa, but Haya is kind of situational now, so it has to be the last man. Okay, there we go. It's gonna be the Sora taken away again. It's always gonna be banned. Is the Lancelot banned though? I can see the first ban. How? Let's wait. Let's wait. The picks are here. So, hey, this chance though. Arise, come on. He did a fantastic job on the game number one with the land. The steals, the lord stealing, the turtle being taken with his, thorn rose was definitely a good execution right there. So I do want to see Mm-hmm. a Lancelot game once again, but at the same time, you do have a bit of a heroes open there. The Grok is open once Grok. again. Oh yeah, Grok is open. Do you want to pry onto the Yuzhong? Okay, there we go. It's like the Yuzhong is mostly a definite pick for a Yes. bad Puzzy. Yeah, he's comfortable on that, which means that I'm expensive. Oh, wow. Okay, the rarest hero to have a good game against the Yuzhong onto the jungle has to be the Lancelot, so they can go for it if they want. Uh, but Yif, Yif, this should be a Grok, no? Can they Grok here? Oh wow, Basha, Claude. I'm Okay, surprised. Claude, quite early on Oh, though. That movie might be a bit, I'm curious to see. Like that is a good decision to, not let the cloud go towards the ban section. But at the yeah. same time, there is a bit of a pressure from SDES since, there is a Yuzhong, there's this diving hero, and no CC so far. Is this a Bakshia jungle? Like, I feel like it's gonna be a jungle rather than a roam. Yeah, I wish it is a jungle Basha rather than the roam because I hate a roam Basha because of the lack of tankiness that it have in comparison to the jungle and the roam. Okay, there we go. The carry Oh, is still gonna be a direct pick against the Claw. The two heroes that has been banned away into the first and the second game will be picked away by both of this team right now. Carry definitely gonna be onto the fighter emblem. Will be winning out against against the Claw into the lane. But onto the team fight though, the Claw kind of comes on top, and it's a very solid choice of a pick coming through as well against the boss here, right? So now it's gonna be another Rises hero. It's the Lancelot that's comfortable on. So Megatron, what can they pick here? Is it gonna be an Alice, against the Yuzhong? I just feel like there's gonna be a mage coming in. Like, let's not Mate, wait. wow, Oh, surprising. Not a mage. Lapo, Going to be a Lapu Lapu against the Yuzhong. Yuzhong. Hmm, it's kind of a 50-50, no? So they don't want to brawl in the lane. They want to fight for objectives. That is the name of the game right now. Let's see the bans though for Megatron. They have the ban right now. They should ban out the rumors. So I'm quite surprised that the rumors has been banned first rather than any kind of assassins, and then it's completely let go again because they haven't picked out the rumors yet, and still Basha is still a flex. So why can't they ban here though? Oh, on the bans, I feel like they should be going for a bit of a mages. They should be trying to go Mm, for something like a Tigreal, the Minotaur, especially from the side of Team Shadow Esports. Tigreal should be there. The Tigreal, I feel like maybe or maybe not Super IMM can go for this match, but the Grok, as usual, will be banned off.
when in usual scenarios, you would have thought that the grog would come through into the first phases of the game, not in the banning phase, but into the picking phase. But it's completely ignored up to the last one. Now, for the side of SDES, they are still yet to know if the Bassa is a roam or a jungle. I don't know if Expensive plays the Basha because I kind of, usually see him onto the assassins. But okay, Yes, they have to ban this. Eh, So, what looking can quite Megatron good. remove? What do you There's think they'll gonna be a ban here? Mage? Megatron. Yep, there has to be a maze as of now. Maybe the Mm. Farsa or possibly something like, a classic signature hero from Ben 14. There's quite a lot of tanks already banned up. Uh-huh. Mage. Against the Claude. Megatron can actually be the one who can take the Farsa. They have the first pick now, so Yes, maybe they can let it but go. Yeah. they're more keen on Oh. taking the Cyclops. Like this has a streak. I have not seen Hanny pick up any other hero. I feel like the Lunos has to go, or maybe we will be looking at something different from Hanny today. Henny might, pull out something out of his picture, out of his pocket. He usually Yeah. go for the carry mates, right? So maybe put him on the carry mate, he will carry it exactly the way you want him to be. But the Joy Band coming through, so they are kind of banking on a Basia jungle still. So that, Rome. So, you cannot risk it out. The Joy is kind of a very good hero against the Lancelot as well if you want it. So now, what can be a pick here? They are still, both of them are still yet to pick out the mages, right? What is good one for the side of Megatron? Farsha. For Megatron, I still feel like Eve. Harry is just gonna pick up as usual the Cyclops. I really Cyclops. Selena! Oh my goodness, that is a Selena. So, Eve can come through here? For, oh wait, is Eve banned? I don't think it is, right? know it is Uh, not. okay. Eve against the Basha can come through here for SDES if they want range. Ooh, they Do have they? SDS can go for Cyclops. But I'm not sure. I Oh. don't think they will. A Cyclops fits quite well in the scene composition. Low cooldown, the mobility, trying to get away from Bakshia, Claude as well, works well. Or you can trap up Claude if he comes into the Blazing Duet. That's definitely looking good. But at the same time, Ben 14 might be, trying to go towards the Fansa. Oh, wait. What? Oh, the couples are here. Let's go. It's a game. It's a game. Oh my goodness, that is a good couple for the first time in a while. We are seeing Odette. I Yeah. mean, you cannot cancel out to the swan song with the arrows, but the leaning phase is actually definitely gonna be very hard into the middle side because as underrated as that is, the leaning is it's so annoying to lean against because of the passive that she has. So very solid, I would say, but very vulnerable. So last pick coming through from the side of M for Megatron is the boss a roam or a jungle. You Ooh. know what, PT? If they bring Angela here, oh, Oh. Oh, what? okay. It's a bug. It's a bug. Yeah, okay. So we will get to know the pick. But this is crazy lineup coming up from both the sides. Not from one, but both the sides. Okay. I was not Yeah. thought that I was not expecting a Selena, but okay, that's the case. Yep, we did get a Bakshia jungle against Arise this time, but again, Arise will be having that advantage of taking away Yep. resources. So unless Franco comes in with his hooks and all the resources, so let's wait and watch what will happen. But before that, the map. What are we expecting today, Debbie? Oh, because of the Selena, if it is a dangerous grass, it would be no, it's not dangerous Oh, grass, it's expanding rivers. quite a bummer, but ladies and gentlemen, let me welcome you into the land of dawn. Let's go
third game. This is going to be a bit of a decider game for both the sides, given the fact that you know which team has to get another chance. As of now, the score is 1-1, and let's wait and watch. Now, the members are trying to, get those creeps very quickly as of now. You know, the clearance coming through from the boss side is definitely going to be up to the par, but Arise is also onto the land side, so that is definitely going to be a 50-50 onto the jungle side. But Super IM though, I think he's just trying to check out with the lethal here. Won't be able to get look at the stun. Okay, one more stun. Ben 14 looking quite low, but on the other hand, he will be the first blood, and on that at the same time will be going down. Flicker wasted as well, but double kills picked up by Arise though. He's having that snowball as of now. Yeah, that is a good early start of the game for Arise right now, even though they did lose out onto the mage. They traded out with two bodies already in bottom lane, though. Might be something against Bad Pazi, yeah, but that is a U-zone, right? Mid lane, we might want to focus onto the mid lane yet again, because this is a combination of Wink not winning out into the lane on a carry, huh? Oh, it's not even level 4, and the carries, has Yeah. to be a bit safer, has to wait it out. I love how carry did not go for his vengeance though. Could have been such a good Yeah. kill. I think it's mainly wait, Qingdou trying to do something against Ring, but yeah, back to the point. I think it's mainly because you do not want Ben 14. Oh, not looking good. Once again, will be taken down. Now that's Ah. definitely getting expensive though, given the fact that the turtle is up. The turtle up to already. That's a good set coming through. Bad Pazi. You have level 4 already. Super IM is still yet to go for the level 4. Yet the dragon already popped away. This should be a jump. Look at that. Alright, fix it up. Look at that. The turtle is here. I'm expensive though. He's trying to go in, hunt in for more, given the fact that he does have the tankiness. But Zani looking quite low will be taken off. That is Bad Pazi for you. Moon though, despite not getting level 4, he did make sure Arise will be getting that away. Wait a minute, that's lower. Looks like Bad Pazi. He is trying to go, and it will be the Franco who takes it off. Super Iron though, that call was definitely quite good. Okay, Ben 14 getting stunned up once again. The stun duration though, along with the Swan song. Another flicker being taken out. Okay. That was actually close on the top lane, the Wink. Oh my goodness, that's a solid kill up on top lane. Chinga taken down. That's the power of a carry, by the way. And to the mid side though, I think God of Henny, I think Godfather Henny, he will not be able to rotate out as much as possible because of the early invade coming through from the side of SDES, and now this might be eventually in favor for Moon as well as Ben 14 now, because they'll be able to have a good clearance. They need to open up the map with the Basha, but they are unable to do so because they always have been losing into the fights whenever they are going, because Arise this time around, he's not getting shut down. They need that buddy hunt for Arise to be taken down. Top lane is what they want to focus on. That's the rolling coming through. Oh, wait a minute. Look at that suppression coming in from Wow. it up. Ben 14 though, he tries to get two members right here. Again, would have been a bit of a good option, but okay, spinning wheels, that's just too much damage. They are out of the way, but okay, usual top lane. He jumps in. What is it going to be? Okay, there's a flicker. That is just too much. But he survives. He survives. At him. But at the same time, okay, front lane, looking at members. Oh, he doesn't survive. Sorry, I jinxed it. But Wink though, he is a double kill for Baksha. That was a good maneuver coming through for the side of M3C. I mean, this is another stun. Look at that, Henny. It was Moon actually, so he is unable to get anything out of this. If it was Ben 14, I think it would have been an absolute death for the guy. But the turtle is already up here again. No dragon still available for the side of Bad Pazi here, so it's gonna be a rush for the side of Megatron if they want to take out the Lord here right now, because the turtle, because it will be very very important for them. Arise back into the picture here. They are kind of slow here onto the turtle take, so this should be a contest again for the side of SDES. Oh, let's see the moon though. Now it's gonna be a bit of an option right here to go easily for the turtle. Rise, you can swoop in, get out. But getting a way for Baksha, that is quite important, guys. And he jumps in once again as the first member. He gets
the divine judgment, but on the other hand, you have a bit of a iron hook for Bat Paji. Look at that. There's a bit of a chase for Moon. Oh, he gets to stand up. Arise though, he is there. Dash, Okay. dash, dash. Selena out of the way. That's not over Oh, though. that's Harry does oh get a abyssal arrow, but you oh they do have a bit of a control, but not as the control that we are expecting with yeah. Ben 14. With the Selena, I think even hook. What the super I am? There was an amazing hook land onto Moon insta burst. He don't even need the bloody hunt to come to get a kill. But this pressure is already back into the hands of for the side of Megatron right now, just because of the arrows that has been able to land. I think it's just the way he has been kiting the place and scouting out where the team is gonna be for the side of Megatron, especially into the hands of Henny. I think this is actually amazing. Now they gain control back into the map. They might be eventually going for a little bit of an ambush again, but I think they still are on the buff, which is really definitely gonna be one that they are gonna be needing. First turret taken down onto the top lane side. Oh, let's wait and watch what will happen. Now, as of now, there is a bit of a chance that you are looking for from the bottom lane. Now, Zenny, though, he is the one who's getting sacrificed a lot. He knows he has to take the divine Mm. judgment. Now, he's doing his part. But at the same time, Super IMM, his hooks are really unbelievable. He's getting his hooks right off the bat, which is really looking good. But, we do have to see a bit of a damage. Okay, Moon right here does get stunned up, Oh! and the hog. There you go, bloody hunt. Now Team Shadow Esports don't have an opening because Kaja is down. What are they going to do? They don't have the set. They don't have someone to drag in another hook. Oh my goodness, it's just not stopping. One by one, they are targeting, but Ben 14 with his song did make sure. Oh, Wow. inexpensive is out of the way as well. But Yeah, alright, that so is. look at that. He's not over. He tries to go in for Ching, but Ching dealing damage. One Oh! three. Then he jumps in. He does double kill by Super Iron. And look at this guy. He's trying to take the MVP once again. This is definitely gonna be not a tank player here, dude. That was a good and amazing hook coming through out for the kill as well. The dragon just to clear out onto the minions. It will not be successful in trying to take it away, but I'm expensive though. I think he's trying to go look for a bit of a steal, but unable to do so. He's trying to bait out onto the retribution, but that's gonna be still a retribution for the side of Arise right now. Should they contest this hook? Oh, the Lord, though. Look at that. Moon down. This means Shadow Esports once again don't have an opening. Alright, though he's trying to get out. He does have that leverage. Okay, bad passy though. That was too bad. He wanted to dash in towards the bread above, but you just took it away. Yeah, that was actually too fast of a maneuver. But perfect hooks coming through from Super Eye. The accuracy he have onto this Franco is amazing. And I think I kind of want to blame it onto the hands of Honey as well, because he has been so successful in getting all the stuns off to the arrow. And you are busy trying to dodge out the arrow, you don't really see where the hooks come from. That's just a annoying hero that we can see through right here. But onto the other side though, I think the Lord is gonna be merging into onto the mid lane. Another stun onto Moon. This might be a successful take onto the turret though. That's true, that's true. Look at that, look at that. Zenny taking too much damage. Wing takes it up their head. Wing, but okay, there is a hook on Ben 14. Wing will be taken down. Wow. That's just too much damage. Bad Party tries to go in for the back line, but then the front lane, Ching takes it all away. And that's the triple kill. He's trying to go in. Okay, if he goes in, he might get it on, but they have a bigger priority. The Nexus, the Crystal being open as of now. They want to end this game as fast as possible, but there is a possibility that there's going to be a clearance coming through for the side of SDES. There's going to be a stun, not landing, just the arrow, but no hook onto the other side. Another stun landing onto Moon as well. This Lina has been so annoying for the side of SDES. They are unable to do anything because the map has been completely opened most of the time, and they are unable to find the right targeting again and again. Even though Bad Puzzy is trying to do so much for his team, just because of this dragon, they are unable to go into the backlines. Even though if you can see that the dragon is trying to get a kill onto Henny most of the time, he is unable to because the flicker is always available with the dashes.
That's true. Wait a minute, Zenny though he goes in once again. He's taking so much damage from spinning wheels from Wing. Here you go, Ching though. Hey. He's trying to get it away, but Ben 14, he takes so much damage from Ben 14. What? He's getting quite low. I'm expensive. It's just targeting Ben 14, but under the front lane, Super IMM is getting targeted down. That's 2-for-3 trade. Are they trying to make it 2-for-4? Because I'm expensive is really trying to, make sure to get something there. That is amazing setup coming through from the side of SDS. Finally, something that they can talk about. This is also the reason why they haven't picking out the dragon. They want the dragon to go into the backlines, especially onto the side of the Selena, and try to take him down again and again. Because if this drags to the later part of the game, he'll be able to get out onto the switching lantern, and that is not a good decision. He's always going to be poking here and there without getting taken down. But right now, there are signs of loss coming through from the side of Seto Esports here right now because they are able to set onto the lanes here again because they are getting 2 shutdowns. That's very, very good. But the lore is already up. Hey, Kumar. Okay, look at that Ben 14, a long ultimate, but they know expensive. The time that he is up, he can actually come into the team fights, capitalize it. Okay, one other hook coming up, doesn't land very well, but Oh. Mundo, Abyssal Arrow non-stop. He's just trying to get as much as possible. That's really looking good. But wait a minute, for Bad Party, not a good day for him. He's trying to take some knockups, he's trying to survive, but Zenny picks it up. Whoa. Gets Abyssal Arrow along with that the Iron Hook. Okay, they're good. Free Winter Freeze coming in. I'm expensive looking quite low. He tries to get out. Moon will be taken down. Ben 14 still lurking around with that. Oh, okay. It's a 2-4-0 trade. That was amazing set turnabout of events. Of course, that that the dragon will be the one trying to go in first. If he is actually gonna be the one who open out the map because they have as a pressure. They have a support Kaza, right? So I think it's unfortunate that he's unable to do anything and getting taken down. That's gonna be a jump. Look at that. Oh, Ben 14, look at him. He's trying to get in, but okay, suppression once again. Wing will be taken out. Alright, on the second hand, looking quite low along with Ben 14. I feel like he should be going behind, given the fact that he will be trapped. Bad Paji trying to capitalize something. The members of this team, Megatron Esports, are looking quite low. What are they going to do? They cannot contest for a lot as of now, and if they do, it's going to be a bit of a wipeout situation, and the table's turning. They have a good amount of advantage onto their hands as of now. Yeah, the fact that they are able to chase them away from the lore time and time again, even though they have been successful in taking the lore, taking a lot of kills, it's amazing. Because now, I think, another hook, look at that, Moon. Oh, look at that. They have knockups from the Lord, though. It's kind of hindrance, but Zenny goes in for the back lanes. Ben 14 jumps up with the turtle. Zenny will be the first one to take down the Abyssal Arrow left and right. Bad Party is trying to survive it out, but Chingdo, his damage is really impeccable. Look at him. He's trying to deal some damage. Moon is this time being alive is such a menace. With the retribution, he gets that. There is the mid lane quite open. What are they going to do on top of that? They don't have a chance as of now, so let's wait and watch what is going to be happen. For Megatron Esports, they have to wait for Zenny to come through because he's going to be the one who's trying to go in first and then try to set up for the team and waste out any resources that he deemed worthy. And then after that, they can start the fight that they wanted to. But now they are trying to go in out into the lane because the Lord will be marching onto the mid side here. They should be able to take down onto those steel inhibitors that has been standing. But there's also this fact that for SDES they have the high ground, they have a good clearance, but then again Wink onto the carry is unable to find a good positioning. Look at that! No way! Once again, Rise will be taken. What a game that team Megatron Esports are really showing us with Super INF. Look at that! Okay, another hook did not was there quite well, but Zenny will be taken on. Bad Paji looking quite low. Wink as well. He's trying to get something, but no, that's not possible. The Lord's also marching in. What are they going to do? This is just looking quite a lot, given the fact that all the members are quite low. They are trying to, target each other a lot, but Ching, he's not getting that opening. What are they going to do? The crystal is quite open. There goes the Iron Hook as well as the Bloody Hunt. Members are falling down one by one. Ben 14 all alone, and Ching will be taken down. That's surprising, but
Team Shadow Esports lives to see another day. That was amazing coming through from Band 14. This is the clearance that I was talking about with the Odette and the landslide as well. If these two are alive, there's no way that you'll be able to end the game with the minions here. And I think that was a bit overstaying coming through from the side of Megatron. They shouldn't have done that, man. They are low onto the HPs, and you never know when the Odette passive will be hitting right now. But still, they still have time to try to go for this another possible amp, because all the base inhibitor already gone. Arise might be trying to get onto the roof buff here, not getting stunned. It's just gonna be Hanny trying to give out a little bit of a vision here and there. The next slot will be a possible contest coming through for the side of SDES, because if they don't, it will be an end already. They should contest this one, or else they are gonna be doomed either way. That's true. That's true. What are they going to do? There's no inhibitors. The members are getting tanky. Super IMM, he's unstoppable. As of now, there's a vast difference of score right here. Okay, wait a minute. Suppression coming here for Jenny, Steph. But the mid lane, though, they have to go target the mid lane. Look at that, the lightning truncheon taking down 3 members who are trying to go in. Bad party, though, that's a very bad mistake, given the fact that you should be trying to go back, and there's going to be a lot coming up. Ben 14 tries to salvage something, but he gets hooked in and taken. Oh. Bad party, onto the other hand, low, looking quite good. Oh. It's just the abyssal arrow. He jumps in. He wants to take some damage. He wants to do some damage as well. But the Winter Crowd is a good savior. It's an easy loss for Megatron Esports once again. Oh my goodness, Ben 14, that was such a weird place to get caught upon. And the fact that, I think Super IM wait for a little bit so that the all could end and he'll be able to get hook in on time. Whatever hook he has been doing, it's always been a kill for their side, because they don't even need the bloody third lord already taken away, which means that this should be a possible end coming through for the side of Megatron right now. They have to be careful though. Look at the sun. Oh, Muto, he goes in Divine Judgment. Bad Pass, he will be taken down. Zenny on to the other hand. Oh, the hook did miss out though. Or to the other hand, there is a bit of a chance. They are trying to save Wink as much as possible, but Zenny is down. This means they don't have a bit of an opening, but the Lord's coming in. What are they going to do? This is going to be a bit of a chance that they have to clear out the Lord. If Wink fell down here, it's going to be such a problematic, but Wink is alive. They can take down the Lord as quickly as possible. But what about the lanes though? Oh, Super IM a bit short of a hook. Wait a minute, they're trying to make sure that Ching is also out of the way. The minions though, this is going to be the super minions is gonna be quite tanky. Look at them. It takes 4 to clear those lanes. This have been a possible end for Megatron. The fight that they shouldn't have taken has been taken. I think, man, that's such a waste of the Lord right now. They are unable to end the game, but they have to wait for this enhanced Lord now, the evolved one. But it's gonna be taking a bit of a time. But then again, with the base completely cracked open, STES, they need to clear out onto their house as much as possible and try to get a one pick off, because at this point of the time, even if they find one good pick off, they don't die, it could be a possible end, because they have Ching onto an attack spring marksman who is always gonna be able to get those bases on a perfect maneuver. But now I think Rice and Band 14 together, they have a good clearance. I do agree. They have to make sure that the Wink is alive. They are taking down Zenny as quickly as possible, but Super IMM is such a nuisance. They have to make sure Super IMM is, taken down. But even if Super IMM is down, there is Amex Spencer who's soaking up the damage, who's dealing damage. So that's just like, a tower of defenses onto the side of, Megatron Esports. Tower of attack as well. Like the damage is really, really good. So let's wait and watch. Abyssal Arrow striking once again. Not quite, landing on the target as of now, but let's wait and watch. Oh, there you go, the lightning truncheon though. Moon! He will be almost taken down. Look at that, the winter truncheon play is here, but the divine judgment, he goes in for a bit of a Ching will be taken down. This is a green signal for Shadow Esports to go, but at the same time, Megatron Esports are taking a red. Look at them, they are flickering away. They are trying to go back away as quickly as possible, but the minions though, they have to be, taken off as of now.
it could have been a very, very good chance for Sendo Esports to try to go for the chase onto any member of the Megatron side. But then again, they can't really do it because of the pressure that they always have to clear out onto the base because the minions is always going to be coming in. Like you already mentioned, it's already a super minion and it's going to be very harder to clear right now. They're going to be needing the carry to be there, especially Arise as well. But now the Lord is going to be chunked down quite low. Will this be a steal? Oh, there's a possibility though. So Paramam, he tries to go to Zenny as well into the back lanes with a bit of a chance. Right, picks it up. Look at that. There's a bit of a bloody hunt as well. There's bad Paji, but okay, members are falling down one by one though. Ben 14 gets the stun. He's looking quite low, but Okay. picked up by Rise. Are they getting a comeback? Shadow Esports. Look at that chase. The Wind of Nature really helped it out, but shutdown will be there. There's just 4 members, waiting it up. The lots coming in. They do have Sing though. They can easily clear out the lot. Yeah. I just feel But like they it's going to be a 30 minutes game. you might possibly see we are already there actually, but hey, all the inhibitors, all not the inhibitor, all the turrets are still standing, so they're still points. Look at that. Oh my god, no bloody hunt though. Oh, Rise though, he does have the immortality. Look at him, he's trying to go in once again. He's trying to get Ching. It does get Ching. The Lord still alive. Bad Paji as well. Is a very good chance to get it out given the fact that the death What? chances are quite high as 1 minute as of now. What how is Ching getting caught most of the time? It could have been so much better onto the positioning, I think. And now this is going to be a little bit harder for the side of Megatron to try to defend this. This should be 2 turrets down the drain into the mid lane as well as the bottom lane. That's going to be 3 already. Okay, one Evolve Lord coming down onto the bot lane side. This turn is for SDES right now. They are able to defend quite a very, very long time. The clearance is definitely good. Arise might even eventually try to dive in again for the zone. They need Ting right now. Oh my goodness. Oh no. Oh no, that's all looking good. Look at that. The crystal being taken down. And there you go. Shadow Esports wins it up despite not having the tempo onto their hands. What a game. What a game. Like, they lost quite a few lots. They lost quite a good amount of turtles as well. And they turned up the tables. Like, the death counters were really on their side. Ching getting caught into the last part is definitely not the best case scenario. Arise must have been focused onto the clock for most of the part, and he was able to find that one out too. And I think that was a very mega troll coming through from the side of Megatron Esports. That last part where they had the Lord could have ended the game, where they tried to go for those engages again, was the main factor of why they did lose Yes. out. Man. What a game, though. That was definitely a gut-wrenching game coming up from both the sides. The push and pull, the draft surprise was definitely that's something that everyone was not expecting, and that's what we got. Curious about MVP though, Debbie. Who's your guess? Arise, maybe, but there's also the fact that Ben 14 has been very, very good onto that. I think Wing is unable to do anything here though. You know what? Let's give it to Bad Pazzi if it is my choice, but I don't think it's gonna be accurate. But he was the one who have made a lot of comeback for the team, trying to dive into the backlines, getting those people who he's really, really needed. That is the main factor. But then again, Arise was doing the most important one, taking down the Claude again and again. The Lord definitely played a good role. The same goes for Wink as well. The carry they get it out is going to be a little bit of an easy game for them. Yep. How they were trying to roll around, and those unfortunate hooks that landed upon Shadow Esports. Super IMM, my goodness. If Team Megatron Esports won this game, it was definitely Super IMM getting the MVP. But okay, looks like Debbie, your prediction is right. Arise picks it up 7-10. He did make sure, at the last moment to Yep. make sure the chink will be taken off. Yep. All eyes on Ting is what he said, and he was able to do that again. When you take out the Claude, there's already a no clearance
basically no clearance coming through from the side of Megatron, and he was able to find it. A good job for a Lancelot, and I think this time around it's not gonna be very very wise of Megatron to give the Lancelot again. Either they have to take it for themselves, or either they have to ban it. It's gonna be it shouldn't be open anymore for Arise, because we can know that what is happening here, what he can do with the Lancelot. So let's see how the builds are going to be looking like on both of the teams here as well, because I'm kind of curious to see what the KDA of Jenny is going to be looking like. 288. Okay. Oh, I mean, he took a lot of sacrifices, He almost was in front of Moon, like, oh my God, ult me, please. Yeah, I have to save my team. He was there as a person like that. So he definitely took a lot of deaths right there. But other than that, though, Claude, though, phenomenal job. But I think the last moment, it was not his chance. It was not his time to actually get the game. But Ben 14, though, I think he would have been so frustrated with those abyssal arrows. Like if Yeah, I was that Othello, I'm like, oh my God, I just want to get this game over and just go home and sleep. it's the arrow, and then it becomes the hook again, together, always Yeah. together. So that's the reason why it was important, that they find a good angle at that. If you just show me the results, I would say that it was Megatron's win because of the amount of kills that they have accumulated, and 21 assists onto the hands of Mr. Super IM. I think that was onto the Franco. I think he's on the red room though, but definitely was a good Franco that we can see right now. They have a massive throw, mega throw. That is a pun intended anyway. So maybe they can come back for a bit more, a better discipline. Let's wait and watch. Now again, absolute of dominance right there was into the land of Dawn. They did make sure to get a good amount of damage as well. The damage transfer was good. You're talking about the crowd control, that was good as Yep. well. So that really played it out so well. But unfortunately, it was not into the hands of Megatron Esports. But again, they still have a chance. Though they have a chance, 2-1 is the score, and now Megatron. I think Megatron will be one down, and then SDS will be closer to victory, because mind you, again, this is a best of 5 series. This is the finals. Whoever wins will be the champion. And you know what? Let's not throw in again into this finals, man. Yeah, I'm talking about you, Megatron. So let's see how the game number 4 is gonna be looking like, because the draft is already set in actually, and they're gonna be changing out into the sides here. Megatron onto the blue side and SDES onto the red side. So Lancelot ban, right? Now, game number Uh 2. Team Megatron Esports were on the blue sides. They did win it up. huh. They had that advantage Oh. picking Sora, remember? So I feel like we might be able to see some kind of a similar gameplay coming in, but respect bans dropping in so as the first. Lancelot, you got to go. Arise, you shouldn't get your Lancelot anymore because you're so comfortable on that. So that's basically what Megatron has been saying, even though they were the ones who trolled. But Sora should be banned here, Grok as well, I think. But the thing is, do they want to ban the Franco? Ooh. Questionable though. I feel like they might not go in for that. They did have a proper answer of picking up Moon, the Kaja as a Mm, good counter, so that yeah, was there. yeah. But Kalea out of the way, very good choice. I feel like this game's gonna be super IMM Stigreal, I have to see that. Again. Oh, yeah, that's a good call. Because the Tigreal and the Cloud has been a very, very good combination for a long, long time. So they can come through. We can wait. So right now, I think Gatot again removed from the hand of the moon. Yeah, he's very comfortable onto that hero too, and the Grog as well. He's like, yeah, the second choice of the Gatot should be the Grog for him. So SDS right now, what can they ban here is the Jushin, right? That is a very red side ban. I don't think Henny has been getting given the chance to even play out the Jushin in this series so far. So they can ban out the Jushin, and then maybe what are the heroes that can be a possible ban? Hilda, right? Hilda also there.
Hilda permaban. From both the sides, I really had the chance to see Hilda getting permaban, but okay, Sora getting his respect ban as Okay. well. So that's looking quite good. But at the same time, the Grog, the Hilda, the Gatorkacha is already there, which is looking good. So let's wait and watch what we have. Gatot already banned. This can be a Grok too. Okay, because I think the Grok was plenty annoying into the second game as well, even though they did win it out. Wow, they have been consistent on banning out the CC, huh? Well, I think it's more of a gold lane CC rather than the XP that they are respecting. Yeah. Okay, okay, now SDES Jushin, right? It has to be. Or Hilda. Wow. I need Or the need. Yuzhong. But there's Oh, you Zushin open as don't. well. Okay. If you open the Jushin, you're gonna there's gonna be a lot of trade outs, right? Yes. So they can ban neither. Try to take completely different one. Okay, there we go. Jushin taken away. You know what, PT? I would like me a first pick Claude, not the Hilda, not the Grok. Pick the Claude. Oh my God. That's gonna be a crazy team composition. Like, come on. That that's definitely looking quite good. So I am curious to know if team, Megatron Esports go in for that or not. First pick Claude and get the carry again. Oh, never mind. They don't want to do that. You know what? Life is all about the risk, man. Why don't you take the risk? You did throw, but all right, Hilda first pick. So Okay. they don't want a risk, so they have to let go of either the Cloud or the carry. So now for the side of SDES, what are they comfortable on against the Hilda? You can play the Grog. Oh, wow, they pick away expensive hero. Yi Xin and Yuzong together in one place. So now, Eve, do you want an Eve against a Yuzong? I am not feeling naive right here. I am really the Oh, Karsa works quite well. I feel like they need the range. They need something of, something that works, with AoE. So I do want to see something like that. So, mm, but a different one. YSS is gone. They have been like, a team Shadow Esports. I feel like they might be like forced pick right here with the Mm-hmm. YSS. Oh, wow, they went for the carry and the Lapu Lapu again. I feel like Jenny did lose out against Bad Pazi onto the lane with the Lapu, so they were kind of struggling with the turtle, but they were the one who won out because of some unnecessary, I mean, uncalled fights that they were able to change out the tide of the game too. So very big pick coming through here. So either for it is gonna be Claude. Oh my god, they don't pick out the Claude. Okay, Hylos. Hylos against this com against the carry. Not a bad decision, but what should they ban here? I think it should be another mate, no? I need like again, Shadow Esports have been surprising with mages, and the same goes for them as well. So putting up a Yeah. mage might not be, a good option, but at the same time they need it. But it's gonna be a very unexpected, so you don't know what is gonna be there. So you can't ban every mage. So that's there. You know what? Peter's special. The Louis can come through. Louis plus Hylos. You know that Azel combination. Oh, so they ban out the Basha, right? So no jungle, no utility jungle here for the side of Megatron. They should ban away the Claude. I sound like I'm a Need. Claude fanatic. They need to ban away the Claude here. It is a need as of now. Like again, come on. Claude played out a very good role right from the game number two. You see if it's open, Yeah. it's just maybe a win or maybe not a win, but that doesn't matter given the fact that it's Claude, a DHS user. You have the carry as well. Now the carry last game was kind of struggling, but again, 1v1 did not struggle. During the Yep. team fight did struggle. The AoE damage from Claude was just enough Mm, to make sure that the members are trying to dissipate and trying to get away from
from each other, but that Oh. was just, a bit short from, Ching, but at the same time, banning it up was a fantastic decision right here. Now you have the joy, you have the joy banned up. You have one more ban right there. Now again, I feel like it's gonna be a mage though. I have a feeling. A mate ban, another mate ban coming through from the side of Megatron. Ruby. So, Oh wait. Oh, I think they oh, banned out the Ruby just because of the presence of the yeah. Yishan Shen. So now I think, how do you feel about the Kimi here? What But they though? need range, no? Not bad, but not the best. I Okay. think it should be the Farsa, no? Farsa? Because they First, banned out the, yeah. highly hoping though. I have a feeling this might be a Farsa game, but at Mm. the same time, both the majors have been surprising us right from the second. And that's just like I cannot predict. I cannot say. They could just pick up Zushin, not No, the no. Zushin, but the new hero, the orange one. What do you call that? Zacian. Zetian, Yeah, Zetian. yeah. Okay. And they'll be like, yeah, you know what? I'll just give up Vision today. That's what they want to do. But I would love to see Ben 14 on the Louis, just because of the Louis, just because of the heck of the way he's able to play other hero Louis. But hey, that's just a personal preference. But Granger, actually a good choice against the carry because of the range. But then again, into the later part again, the Granger gets shredded down. But will they go for the late game? That's the question. But here, for the side of Megatron, though, they need to pick out the mage. I'm still banking on the Farsa because now the Farsa is much more worth it. No, Farsa still Cyclops! Oh my god. I he's definitely behind Cyclops. There is a propaganda that Han is spreading as of now. I am 100% sure of that. Like, come on, the Cyclops showing up like 3 out of 4 times. That's just crazy. Loving the pick coming in from Hanny. There's a Fredrin jumping in. They played it well though. I mean, against the They Granger, do. yeah, it's just looking quite good. I'm expensive really does well on tank jungles. I just feel like it is his calling as of now in this grand finale. So this Yeah. game, high possible that team Megatron Esports can get it out. But one last pick. This pick's gonna be something. Yeah, What? I told you there's gonna be a surprise. And there is a surprise. A hero that has not been popular, not being taken much in the tournament scene, or even be in the rank, is being taken in this match. I'm quite surprised. I am very surprised. I kind of expected either the Kadita Yes, or the Versa, right? And even the Eve, because it's a Fredrin. You might want to play the Eve now that's not the because case. I kind of like the Xavier just because of the presence of no dive. No presence of dive. Look at this. It's gonna be flying cloud, so they're gonna be faster into the rotation as well. Let's see how the game goes because the Xavier, one of the weakest laner into the game, but the very very strong late game. Let's see how it goes, man. That's true. And with that, let me welcome Jeff on board. Hello, Jeff. Welcome to the casting desk and take it away. For sure, Peachy. And hello, Debbie. I am your co-caster for Yep. now, replacing Peachy. But yeah, on towards the previous game, I mean, I have been watching Team Shadow Esports actually dominating, and Megatron as well. They are doing their absolute best to catch up now. Yep. On the previous game, I mean, why don't you give me a rundown? You were there. Why am I talking? Yeah, that's definitely a Megatron coming through from Megatron. But yeah, they Oh my weren't my. able to end out the game. Oh Oh, wait, never mind. Flicker, Ben 14. I think he might be getting a kill. Look at that. Oh, you will. Wait, from Javier, both these man. teams. Ben Yeah. 14 on Xavier, Godfather Heaney on Cyclops. Oh, what are these picks? Didn't know that for some reason. Oh, There's wait, look at that. the Venus. Okay. Arise! Oh, Arise almost been taken down, but no, it's also going to be I am expensive, who will be dropped really low, and the Lightning Dawn combo will force him to be backed off. But yeah, I mean, last night I was there to witness Godfather Heaney play out the Cyclops and as well do a outplay Uh-huh. here. And I was there Yeah. for Shadow Esports, Ben 14 to be played out the Xavier as well. Mm-hmm. I was there for both these players, but I did not expect them to be facing off each other, facing with this particular lineup of having a Cyclops against Xavier.
What are they Me thinking? neither. I don't know. This must be a possible comfortable pick coming through from both of the sides, but then again, this is so late game competition, so they either have to win out both of the lanes or yeah, try to go for the objective as much as possible. But then again, looking like if we look at the experience, it looks like Bad Pazzi is having the better lane against comparison to Jenny here because he's not the one having the level 4 just yet. But onto the goal lane side as well, I think Ching might eventually try to go for the bit of a freeze, but look at that Taunt, band 14. I think he's still okay, does not really have the flicker yet, but the turtle will be contested and started by SDES. Exactly, and it's already a Black Dragon form straight onto us. I am expensive. The Mountain Shocker catching him down, and Paji will be the one taking him down with the Shao Residue. But Arise will be the one securing out the turtle here, and with that, Paji already going for the fight here, but it's going to be Zenny with the bravest fighter trying to go in, raging slashes, but it will be missed out by Paji here, and they are going for more super aim. Will be taking down Zenny as well, Wow. followed up, same down for Paji. He will be taking up a revenge, but on the favor of Team Shadow Esports. They traded out the turtle for an XP laner and a roamer, so I do feel Exactly. like it's still As gonna well be as in a favor jungler. for the side of SDS, right? Yeah, they did. So we cannot really see the KDA yet, so I'm kind of surprised. But the rotation coming through from the side of Megatron is definitely gonna be put on hold here because they are on a weak lane side, and same goes for the side of SDS, right? So it's very important that they have a winning retribution, dare I say, but they cannot do that. Exactly. I mean, despite the fact that I am expensive, had the piercing strike for a perfect retribution, as well as having a perfect retribution power for him. But Mhm. the control that came in from the side of Team Shadow Esports, that was way too much for even I am expensive to comprehend there, because there was a Black Dragon farm Yeah. straight with the Petrify, followed up with Moon's first kill. So that was pretty much a perfect chain stun that came in for I am expensive to not be able to use up the retribution. So from the side of Team Megatron C3M, what they are doing is they need to make sure that they don't actually throw out as much as they are doing right now, because the economy is already shifted not into much equalizer right now. But oh, look at that, Debbie. Yep, that's gonna be a stun coming through. It's gonna be a taunt as well. The dragon will be part. The Gore's pathway coming in as well. The flicker coming through from Kenny. Might be flicking in survive, but I'm expensive will be taken down. Wink with another stun coming through as well. That's gonna be the backlines Oh, in look at trouble right now. Zenny. Jenny able to grab a kill onto Moon. Bad Pazzi next to be taken down as well too. For one trade is what we are witnessing right now. But Wing though, he have one stack onto the Sky Piercer. Exactly, Wink. He will be having 10 stacks on his Piercer right now, which is going to be giving them. Oh, wait, Lightning Dawn will be there, but it's going to be kill onto his Wink. That was a clean ambush that was set up by Ching there. That's really impressive, I'll be honest, for Team Yeah. Megatron C3M right now. I mean, this match is a tie right now because Team Shadow Esports, they need a single match point in order to secure the championship throne for the Realms of Rivals here. While Team Megatron C3M, they need to make 2 more wins in order to actually make out a reverse sweep in this match here. But despite this fact here, the turtle fight will already be coming up right now. Yeah, that's gonna be a stun coming through from Arise right now. He's gonna be diving in. Jenny onto the stun, not being able to connect right now. He might be in trouble. Again, very low. The flicker helping him survive, but not for long. Ben 40 able to grab the kill. This is gonna be expensive trying to jump away to safety. But the turtle rather is gonna be up, and without the presence of the XP laner here, I think it might be into the hands of SDS. But right now, Ben Pazzi might be getting caught to the Misabito, might be chunked down quite low. It's gonna be the bong coming through. He's gonna be taken down as well. But the Hylos Wait, Moon right Moon. now walking away to safety. Oh my goodness. It could have been looking very good for the side of SDS, but now Exactly. with the kill for expensive, he is able to find the turtle and they are able to get the second neutral objective. Exactly. I mean, for the second turtle that we witnessed out there, not second turtle, but the first turtle that we witnessed out there, I am expensive. He was 2 levels behind Arise, and wait, with that, is already going in for more. Arise will be taken down by I am expensive, and he is still kicking up way too much damage from 2 people here. Glorious Path will be there. Godfather Healy with it all there for the immobilization, and the Dawning Light will be there, but it's going to be super aim zoning out Ben 14. And with this, the Megatron C3M, they are making a really impressive comeback as the game progresses here. As the side of Team Shadow Esports, though they have a really amazing draft on their hands here, but oh wait, before that, the fight is still coming up, as it's going to be Godfather Healy with the flicker. Zenny will be there with the bravest fighter going in. Wink and Moon will be surprised by the Landshaker here, and he is going in for more. Wait, Wink will be the one taking down. No, what is going to be Paji, who will be taken down instead by Super Im, and with that, Zenny is trying to go in, zoning out 2 people out there, but it's going to be Super Im who will be taken down by Paji, so it was a roamer for the EXP laner.
I think it's still in favor for the side of Megatron here because they are able to Exactly. get out the inhibitor onto the top, not the inhibitor, the turret Mm, onto the top second lane kill. side. And Yep. Ching has been consistently free farming. That's what you want to do on the carry. You want to have the Swift Trinity Exactly. and as well the Malefic Gun too, so that you'll be able to have a good lead onto the range as well. And this time around, they have a double late game heroes onto their side. All they need is spacing. And I feel like Jenny, in comparison to the last game, he's able to survive for a long time. Moon, though, that's going to be a stun coming through. Look at that. Oh wait, it's already going to be Badpaji who will be coming in. Moon with the glorious What? Padlu getting a kill onto his Chi here, and it's also going to be Huh? Godfather who will be taken down. Mid lane is in danger as SDES are charging in. Zenny with the bravest fighter though might try to defend it out, and he will be able to and make it out alive. But wait, Super Dim comes in for the fight here. Badpaji might be in trouble. Dawning Light will be coming in, taking down Super Dim here, but Super Dim will be taking down Badpaji in return, and with that Wink will be shutting down Zenny for once and after. But it is also going to be the chance for Team Shadow Esports to make up a comeback out there now. Yeah, that And is actually very good. exactly. SDES, they have the good set right now, but it's gonna be the Haptis built up for Super IM. He's trying to go in expensive. He might be getting caught onto something right now. Moon with the Ring of Punishment able to slow him down quite a lot, but the zone is definitely not gonna be there for the side of Megatron right now. But there's gonna be a side coming through as well. Moon trying to dive in. There's gonna be Oh, the turtle still right. coming through. And right, able to get onto the turtle right now. The lowest power coming through as well. There's gonna be a zone onto Ooh, Bad Fuzzy right now. Badpaji It's gonna be getting stunned upon onto the Godfather other side. It's out. gonna be Henny taking down Wing with the killing spree. He might be trying to look for more. Jenny might be in trouble taking down very low. The Brave fighter helping him survive, but the Dawning Light will not be enough to take him down. But Ching, on to the other hand, does not really have the range. He's gonna be stunned down. One more Oh, hit is what it Ching! takes, and Wing will be able to Wing! grab another My kill off his own guy! for him. He have to be careful, but that's gonna be That, another kill for the wait, Granger. He have all the stacks that he's needing right now. The Dawning Light yet again helping him with all of those last shots. exactly. Especially with the light and dawn combo that the Xavier is putting up here, he's giving him extra movement speed for Wing to go inside the turret dive and come back out alive pretty harmless. Not being harmless, but pretty much getting no harm onto his name. And that is the perfect amount of comp that we are witnessing from both these teams. Yeah, Team Shadow Esports, they have used up the combo from Xavier way too much right now, especially with the movement speed that he is providing with his combo out there, giving Wink a perfect opportunity to snap out kills here, and the Death Sonata being a perfect takedown for Ching here. That was an even perfect cherry on top that we just witnessed out there. And the side of Team Shadow Esports unable to do much right now. But with that, the fight might be charging on towards the mid lane, but not right now. Just look at this, Debbie. The way they are protecting the Yeah. middle lane as if it's the most precious gem to their life right now. It definitely is already because they did lose out onto the top and to the bottom lane, and this is opening up a lot of space for the side of SDES, and they don't want to give more space to them with losing out onto this mid here. So even Ching, he doesn't really have the spacing to try to go for the farms. He did have a lot of a lot of free farm to the bottom lane for a long time, but then one that's into the mid lane is all it takes for him to get stunned down here. But Ooh, there might be a gate coming through. There's gonna be a stun as well, the immobilization, but Patsy does not really have to pop up onto that. The Ghost Fire wait, coming through as well. There's gonna be a stun as well. The minion. Oh, that's gonna be a stun coming through ooh, onto the other side. Not much of a damage coming through. Super IM might be charging in. That's gonna be a stun. And ooh, Jenny trying to go in for more. He might Zenny. be able to get the damage at top at 14. Will be taken down by Ting right now. They're trying to go in for more. That's gonna be a free hitting carry. We are seeing right now. Double kill is all what it takes. But onto the other side, it's gonna be IM trying to start. Jumps in yet again onto Bad Puzzy. No dragon whatsoever gonna be popped. But the mid lane is taken down, Jeff. Exactly. I mean, the way that the side of Team Shadow Esports tried to engage in for the fight, that was the most reckless thing that I could have imagined out there because there was already three people visible out there and Zenny was rotating out there as well. So there was not a really valid rotation, a really valid engage that came in from the side of Team Shadow Esports here, especially with Arise already using this Mountain Shocker and Badpaji not able to go in for the fight here. But oh wait, it's only going to be Ching who will be taken down by Arise's Mountain Shocker and a 55 combo. But it is also going to be Super who will be taken down by the Death Sonata here, and with the Glorious Path already comes in for the movement speed and slowing down the side of Team Megatron C3M here. But look at that, they are going in for more here. It's also going to be expensive with the full stack. Appraisal Star taking down Arise here, but oh wait, Dawning Light will be sniping him down in the burning. Might take down Zenny here, but no, he survives with no HP remaining there. But still, he is standing firm right now. The mid lane from both these teams will be taken down, but the Lord's Favor still on the hands of Team Megatron C3M. 60 stacks under the sky, PSF for Wink, and he's still yet to be taken down. They should
focus onto this Grander Megatron. The only one that can dive in into him is gonna be Jenny, but he is unable to do so because whenever he's trying to go onto the front, he is getting chunked down quite low. He might be trying to go for the jump alone though. Look at that jump coming through as well. The Bears Fighter instant delete Ooh. coming through from Jenny right now. The Goes pathway just for the zone coming as well. The stun is there and he might be in trouble taken down. It's gonna be godlike for Wing. He's trying to go for the chase onto the other side and Ras might be going for more Ting. Might be taken down very low. Super I am trying to zone away. He's Right. gonna be able to take a Rise down into the backline. It's gonna be the Dragon coming through as well. Onto two member. I'm expensive deal. Trying to protect onto Ting as well. That's gonna be Azam coming through. The 55 will Buddy. not be utilized as well. There's gonna be another stun coming through as well. The Ring of Funny Span trying to slow him down. I'm expensive. Appraisal's Wrath will not Wait, be Appraisal's enough, but that's gonna warning be the light. starting ride coming through onto the other side. But Wink right now might be taken very low. Oh, Super Super I M. am trying to do something out here. He might be taken down, and it's gonna be He a will be. mega kill for Ben 14. But look at Ching though. What is he trying to do? Ooh, he tried to set up out there, but he won't be able to. But yeah, the fight that we actually saw out here from the side of Team Shadow Esports, there was a Wow. really prolonged fight that came in from the side of Team Megatron C3M, and they paid the price for it. They had to pay out the price for that as well because the way that they were not able to engage in the fight, especially with Ching, not visible on anywhere around the team fight there was an even backhand for the side of Team Megatron C3M right now, and for some reason, Batpaji is taking way too much damage than usual Yuzongs do right now. Yeah. I mean, whenever we see a Yuzong, he's usually a really durable fighter with a Sha essence residue, just giving him extra life for him to be fighting out all out. But Bhatpaji, for some reason, he's more of a versatile Yuzong rather than a sustained versatile hero. He can deal up a lot of damage, but he is not able to sustain out that much amount of damage. And for Moon as well, even though there is a lot of defenses on towards his side right now, he might have gotten a lot of those defenses item right now. But when Shing enters the fight, or even Super Him, Uh-huh. both these heroes with the combo, they are taking down Moon's defenses pretty easily here, shutting down. And we already know Carry with the Trinity build, making sure that nobody survives out there here. And with the Lord already out there, I am expecting this should be the last Lord fight. This could be a possible last Lord fight right now. Glorious partway for the start as well. Onto the backline is going to be Super I am trying to get out of the chase. Wing might be getting a lot of damage onto him, and it's going to be the legendary coming through. Onto the other side without the presence of the roamer here. He's going to be able to get a double kill onto this. Dawning Light coming through as well. A lot of them is already dealt out, but Bad Party might be in trouble taking you out very low. Ting able to grab that kill. It's going to be the Winter Crack coming through, but And Ting 14, will be that's taken it. down with the basic damage. This is the March for the mid lane side. It's going to be Forcing. Henny getting caught again, and the Rise will be grabbing that last kill. Exactly, and with this, the side of Team Shadow Esports march again for the championship title as they are going in for the Nexus, and it is going dropped down, chipping down really low. And with this, the side of Team Shadow Esports secures the championship throne in the Realms of Rival Season 1. That was amazingly well done. At 3-1 is the score, and we are witnessing your champions for Realms of Rivals, ladies and gentlemen. You have SDES. With a change into the lineup, they are finally able to get the championship. But Megatron, they tried their very best, but in the end, only one will be coming out on top, and their name is gonna be SDES, Shadow Esports. Congratulations. Exactly, Realms of Rivals from HNT Esports India, the first ever MOBA 5v5 tournament, if I'm not wrong, and they are the champions of this first ever tournament being hosted by them. Their names being engraved in the season 1 of HNT Esports, bringing you the MOBA 5v5 tournament. And this is not any usual thing that we see because Megatron C3M, they are not any new team as well. This is a mixture of Yep. C3 Meraki and Team Megatron Esports. So these two teams, they are a whole powerhouse of their own, and facing the other side is going to be a newly build monster Shadow Esports, who are dominating the esports series of MOBA 5v5 India. Really, really impressive because wherever we see a tournament, there is always going to be Shadow Esports. And not to mention as well, for some reason, they are either in the top 32 or somehow they are making it towards the top 8. And in a lot of tournaments as well, they have completed their mark as the champions. And they have did the same in this Realms of Rival as well. They are the champions out here as well. Congratulations to them again and again. A clean fight is all it takes for them. And this time around, I feel like the one person onto the last game that shines a lot has to be Wink. All right, Exactly. onto the Granger. He have a lot of The way he played, vision. man.
the way he played, it was like he's not getting caught anytime soon. And you could also see the protection that the team has been giving. It's like a dream come true for your marksmen if you're getting that much of a protection for the team. And you know what? This is why it's called Mobile 5v5. You cannot do the game alone, and it was all the five members playing together and able to know what their win condition was, and their win condition onto this game around, I think it was Wink, and he had a lot of stacks into the sky base. So up to the very end, he was managing 80 stacks onto that too, and that means that he was already very, very ahead of Ching as well. And I thought, Megatron could have put up a fight right there, but they did not really have the range that can become an ensure to the Granger. Exactly. Team Megatron C3M, they did their best trying to actually make up their game out there. They're trying to secure their match point, trying to get a reverse sweep, but rather or not, they still managed to secure 1 point towards their name here, which is also impressive because this is a newly built team. This is a newly combined team, and the combination would not be that impressive right now. But still, they have did their absolute best game for the runners-up champion, runners-up position as well. And if you're looking on towards the stats here, look at that. It's also going to be the use song. Yeah, it's also going to be the use song. It's going to be Batpaji. I mean, even though he was a really squishy hero, he still managed to not Yeah, die more than 8 times here because 6 deaths is yeah. still a valid KDA for the EXP laner. And following up with a wink here, just look at his KDA 10-1-8. Wow. He had died a single time. That too because of an ambush that was played out by Ching here. And after that, no matter what, he was not able to do much. His 10 Sky Piercer stacks, his 80 Sky Piercer stacks were always there, shredding down any hero that came in front of him. And Super Rim, as well as Ching, they were not able to do anything against this hero. They were not able to catch him out, as well as Zenny. Though he tried his best going for the backline, he was not able to put up that amount of pressure that usually would be happening out there, especially with the frontline protection and Yeah. Ben 14 always being there with his dawning combo here, making the members of Team Megatron C3M immobilize. That's an even bigger of a threat. This is why you don't want to give out the grandeur when you don't have a proper response to it. So I was kind of hoping if they want to band away the grandeur and the call all together in one place and try to force some different heroes into the hands of Bink again, like the Bruno, right? But they are unable to do so because this time around he's gonna be actually very, very farmed up to 14 minutes to 14 seconds is the game Mm, here. A lot of goal he's exactly. already accumulated, and like I mentioned, I think it was just one ambush done by Ching that made him dead, and that's just one kill. And other than that, it was nothing already. So I think on the other hand, also we've got the MVP Ooh, here. It's definitely gonna be the Jave, yeah, Steven 215, Ben 14, aka Peta. definitely. Yeah, where is Peta? He is here. Hmm. MVP. Oh man. Ben 14, I mean, the way he played out, right, Debbie, we'll have to give it to him. Mhm. His dawning Mhm. lights will, I mean, two Yeah. times we have witnessed his dawning lights actually secured out the kills, which were almost about to run back. Zenny was almost taken down as well, but the way he played out, I mean, I think this is the mages meta. Whenever I come, I mean, Yeah. maybe it's just for me. Whenever I come in for casting, it's always the Mhm. mages getting the MVP for some reason. Maybe you pull out the mage card, Maybe you are True, a man. mage player even though you are not. I'm not a mage player. Come on. How is Okay, Moon to you expect wanna from that? carry. Oh, man. No But worries on that. the thing is, it was like Uh-huh. it is so good for SDS that they are able to find the champion here with a cheese pick mage. Java is Exactly. one of my favorite mates to play because of the amount of Hmm. damage that it can deal into the late game, not the early game because the early game Exactly. is like meh, but the late game is like very Gozo like, because of the skin that he have. Yeah. Mm-hmm. Yeah. But yeah, just because So of that, just because of that. exactly, exactly. I mean, the way he actually plays out his role in the early game as well, it's kind of like a really big of a key role here because he can immobilize, not letting the junglers from your opponents go there. So yeah, Yeah. Xavier, from your point of view, I do agree why you have a really favorite mage on towards that Xavier. Hmm. But yeah, I'll have to Yeah. tell you, I prefer Farsa and Lunox. Oh yeah. For obvious reasons, right? For obvious reasons. Exactly. Oh, second runners up that we Ooh, have Team Team Inferno. Inferno. They look like they wanna light up the They trophy. look like Yeah. they are the menacing. They are the criminals of the realms of rivals out there. Yeah. They look like they wanna plot something against us, because they Exactly. might.
Oh man, they might run for the champion next time, you know, because second runners they up. will, they will. I have faith in them. Okay, production say. Okay, production is also complimenting their bodies. Okay, fair enough. Yeah, they do have a lot of bulkiness on their forearms. I can see that. Okay, but anyways, runners up are here, and it is going to be Megatron Esports with their impressive lineup. Oh, this is C3 Meraki, man, with Megatron onto the top. Oh, I see Exactly. how it is. Jenny, bro, onto the Lapu Lapu, man. It was. Don't get me wrong. I love to troll this guy, but hey, he's amazing on whatever he plays. That's not the Yuzhong, and I Mhm. also told PT that Jenny will not play the Yuzhong, so SDES will not. They stop banning the Yuzhong. Oh my god! But here we go. Let's see Okay, who is gonna be the we star got a for few today. information. We got a few information. Okay, I'll remember that. You're leaking information on teams. Oh man, Uh, next oh time he man, but play, yeah, don't blame me, huh? depends. Depends. What will you do? But yeah, these are the sparks. Wow. These are the spotlight of tonight's tournament. Champions of Realms of Rivals, Team Shadow Esports, or shortly known as SDES. We have all the players who played today in this best of five series, and I think I've seen a familiar faces here. Onto the Hmm. center, Mr. Bad Pazzi. Yeah, let's say the IZN. Yeah, But amazing yep, game go first. today. Yeah, amazing game throughout the tournament, throughout the series. Onto the Yu Jong, by the way. I think he's more of a Yu Jong kind of guy rather than a Fobis kind of guy because he wasn't able to find win with the Fobis, but the Yu Jong is gonna be his lucky star. But I do see Wink and uh Moon as well because these two I'm not familiar in the Indian tournaments, but more They are the into the other Bhutanian side. players. Yep. Yeah. They are the Right. Bhutanian imports. Congratulations But to yeah, them though. yep, Import? exactly. No, we call them imports. But yeah, anyways, they did their best, even though they are not from the Indian server. They might have lagged out, but they absolutely did their best. But anyways, Devi, congratulations to Shadow Esports from both our sides here. And with this, I think we should take our leave here. Yeah, I think it was a very good run that we have for the. Thank you for you guys for joining and tuning in. It was such a good finale that we have witnessed right now. You already witnessed everything here. We'll be coming back for more, but before the new thing stuff and everything happens, guys, stay tuned for more. Just put check onto our social so that you will know what's gonna be coming next because this is not gonna be the end. So goodbye for now. Bye bye, guys.
the mountain seems so hard to climb, and you feel you're running out of time. When the shadows whisper, turn around, keep your feet up on the surface ground. Gotta rise up to begin the fight. Turn the darkest dark into the light. Don't let them kill your wings to dawn. For the very moment you are born. When the world goes cold and gray, hold your breath and lead the way. Hope is loud when fear is strong. Let your heart beat, set the song. Be the savior, break all the chains. You own the power in your veins. You are the light, defeating pain. Hey, start your journey with your hand. You wanna reach up high and touch the sky. Spread your hope so you can watch it fly. Don't care about what the world may see. You're fire, you are born to be. In the silence, can you hear your name? Written deep inside a burning flame. Every loss became your winning guide. Every scar shows you have never lied. Push the limits to break the chain. Let your fire melt the pain. When it's heavy, then take it slow. Just the path you are meant to go. Be the savior, break all the chains. You own the power in your veins. You are the light.